के दूसरे शहरों की तरह ननकाना साहब में भी जो गर्मी का ज़ोर जारी है, पारा जो है 40 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है और महकमा मौसमियात की जानब से आइंदा जो चंद रोज़ है उसमें भी गर्मी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान है। गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ साथ जो हीट वेव है इसमें भी काफ़ी इजाफा हो गया है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इस गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए लोग घरों से कम निकलें। अगर निकलना मजबूरी हो तो सर ढाँप कर निकलें। 12 बजे से लेकर 4 बजे के दरमियान बच्चे और बुजुर्ग भी घरों से कम निकलें। दूसरी जानब महकमा तलीम की जानब से 28 मई से सरकारी स्कूलों में तातीलात का ऐलान भी कर दिया गया है, जबकि रेस्क्यू 1112 और महकमा सेहत के अमले को भी हाई अलर्ट रहने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। I was talking about humour in music and how we highlighted it. And just as a small demonstration, not a lot of people know, except for small boys, that if you blow into a bottle, you can get a musical note. And here I have 2 bottles, and I'm going to show you that you can indeed get a musical note out. Now you'll notice that these are 2 different notes. It is possible to tune these to the notes of the musical scale. And if you've got 8 bottles, you can get the 8 musical notes in the scale. And if you have 8 bottles tuned, you can play a tune. And one of the tunes that we played in our concerts was the Haydn Surprise Symphony with extra surprises. The point about Haydn Surprise Symphony is it was to stop people falling asleep. It had one big note which woke people up. The thing is, once they are awake, are they going to fall back asleep? What we said was, well, we will put in additional surprises, including local celebrities, VIPs, people that people recognise, playing the bottles, playing the surprise like that. Now that was one of our pieces, but we started off basically trying to visualise, to bring to life the cartoons that Gerard had drawn of musicians in his early life. So at the beginning of our concert was not the conductor walking on, as is usual, the usual start, but there would be a huge crash of cymbals and a shout of pain. Then a man with a bald head, like the cartoon, would walk on with a pair of cymbals in his hands and his nose in a bandage. This had told people, this is funny, you're allowed to laugh. And he would then go off and the conductor would then come on. He would find that there was his concert master, the leader of the orchestra, was missing. At which point there would be the sounds of a police siren, and on would walk somebody carrying a violin case, obviously slightly the worse for wear from alcohol.
that policeman was often me. I would be dressed up in a police uniform and I would come on with my violin case and I would sit in the vacant leader's spot. I would talk to the audience as I was inebriated. I was jolly. I would be disturbing the whole concert there, and I would get my violin out and I would go as if to play it. At which point there would be another police siren, and another policeman would come on, breathalyse me, and take me away. This was all simulated, except when we did the Prague concert, because at lunchtime I'd had a glass of wine, and the policeman was a real policeman, not an actor policeman, and had a real breathalyzer kit into which he got me to blow, and it turned green for the camera. So I was really living the life of being this drunken violinist. So much so that was the only occasion on which I ever wore a pair of jeans. And the reason that I wore a pair of jeans then was because my body double had been filmed previously driving a motorcycle through the streets of Prague, being chased by a police car. Never before, never again have I worn jeans. So the violinist is taken away. There is nobody to be the leader of the orchestra. And the conductor offers the job to the second violinist, and all of them refused to do the job because they were not paid enough money. So he would ask the orchestra, what do I do? And at which point there would be a tinkling of a triangle and somebody would jump up and say, I'll do it, and would walk down, beggars can't be choosers, and would take up position. In reality, of course, he was the real leader of the orchestra, and he would give the tuning note for the orchestra, and then the concert would proceed along. Another of the pieces was called Concerto d'Amore, the Concerto of Love. There's a famous cartoon within the Hoffmann repertoire of a man and a woman playing together on a single violin. And this Concerto d'Amore was written by a famous English composer called Wilfred Joseph, who also trained here in the great city of Newcastle upon Tyne. And he wrote a number of pieces for us under the pseudonym of Maynard Nelson. And Maynard and Nelson were two confectionery or sweetie manufacturers here in Newcastle, and to hide the fact that this serious musician was writing humorous music, he would use this name of Maynard Nelson. So, Concerto d'Amore. I would have done a quick change for this piece, and I would be no longer dressed as a policeman, but I'd be dressed as an impresario, the agent for a young, pretty female violinist who would have a contract to play in the concert, as also had a male violinist. And so, to avoid legal complications, they both had to play. Now, clearly, there would be a lot of tension between the two of them, and that would play out to begin with, until the female violinist would cry a little tear, and the male violinist would give her the opportunity to play on her own. At which point he noticed she's a good player, and he'd notice also she's pretty. And so he gets very interested in her, and the two of them start playing together and to each other. And this goes on throughout the whole of the piece, and at the end, she's holding the violin and he is playing his bow as they walk off together off stage with a quick kiss just as they leave. Brings the house down. That was another one of the cartoons that was envisaged by Gerard, which was made into an entire musical work. There's the cymbals, the beer bottles. There is a cartoon of a tenor singer who has a waistcoat which has the loud and the soft button. And we had an entire sequence of a man for whom we prepared a special waistcoat which would make him sing louder and softer. And he had a whole piece of musical pastiche, cartoonish, on which he would sing the aria, which is called Aria.
Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a rapid charge facial then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London Lash patch test on her. She was absolutely fine with London Lash. So I used the London Lash. Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, "Oh, great idea. Oh, vadya." The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal or where it's contract, take your time. My name is Terence South. I formerly served in the British Army. We had to go down as the muscle squad and go on, you come with us. She said, "No, let us go, we're fighting." No. I could communicate, I had all the skills for the wirelesses, the radios. I could do that, that was no problem. I could do that blindfold. Second World War, understood where you were and what you were doing, where your head was.
There was a range of musical instruments on which we played surprises, including one of them which was a euphonium based on a cartoon which had a beer tap on it. We had this specially made, and inside the euphonium was a reservoir into which beer was poured, and during the piece the euphonium player would turn the tap, he would draw some beer from his euphonium and he would drink it. We would pick on local celebrities who had a party piece. We had a famous British minister who once played the guitar. We always get a ballerina who would dance around. Sometimes we would have a harpsichord player with whom the conductor would make great eyes, and we would get anything which we thought would be a surprise. In fact, in the earliest days, the very first concert, the surprise was 3 vacuum cleaners and a floor polisher, which almost literally brought the house down because of the vibrations that came from it. The final piece in the whole concert was our piano concerto. We had 2 of those for 2 different repertoires. We had the Concerto Popolare by Franz Reisenstein, again a very famous English composer, and we had the Disconcerto written by Maynard Nelson. And we would use whichever one was appropriate. On a second visit to a city, we would use the Disconcerto, and the first one we used Popolare. And this again was to illustrate the tension between the piano player and the conductor. Indeed, on one of our concerts, which was filmed over 2 days at the Royal Festival Hall and was later released as a disc of the entire programme, which is still available second-hand on websites. If you're interested, they're still obtainable for very little money. When there was a dispute between the soloist pianist and the conductor about how the beginning of the concerto should be played, this argument culminated in the conductor going to show how it to be done, the piano player picking up the conductor's baton and then conducted the whole of the concert. The surprise, the gag there was that both of these were talented pianists and talented conductors, and that would bring the house down and would be the end of the concert. Except we had special encores prepared. One of them was where the whole orchestra would take part, not playing their instruments but chanting the names of composers, and we would also have another one based on Smetana's, one of Smetana's works, where the tenor would come on trying to sing "O Solo Mio" as his encore, and would be chased away and would run round the auditorium being chased, and would end up on a balcony far above where he would sing his very final "O Sole Mio." After the concert, which Princess Diana attended, she was the guest of honour, it was in aid of the British Lung Foundation, another one of her charities. There was a reception. I was at that reception. I talked to Princess Diana and I told her that I was the policeman that she had seen on stage. She was delighted to hear this, and she told me the story of how she and Fergie, the Duchess of York, had dressed up as policewomen and gone out night clubbing in London, which is one of the light-hearted episodes within her life, which is one of the reasons that people loved her so much.
आप कमाते हैं तो अपनी ज़ात पे अगर खर्च ना करें तो फिर कहाँ किया? इस मामले में मैं अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में बड़ा फजूल खर्च मशहूर हूँ। देखिए 91 में हमने ये मैगजीन स्टार्ट किया था और ये दुनिया का टॉप, पाकिस्तान के टॉप जर्नल्स में था, जो रिसर्च ओरिएंटेड इलस्ट्रेटेड जर्नल था। हम कम से कम अब जो है 77 साल बाद हम एक कौम इकट्ठे हो जाए। हमारे दौर के अंदर 34 अरब डॉलर रेमिटेंस जो था ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे थे। कादिर रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए हैं कि काम का टाइम बढ़ाएं, काम करें। आप यकीन करें कि नॉर्दर्न एरिया के पैकेजेस इतने ज़्यादा है, अभी पाकिस्तानियों ने नॉर्दर्न एरिया को भी नहीं अभी इतना एक्सप्लोर किया। आप लोगों ने पहले भी आवाज़ उठाई, इस्लामाबाद में गए बिजली के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, तो आप लोगों की आवाज़ सुनी नहीं गई। देखिए, जमात इस्लामी ने महंगाई के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर बिजली के बिलों में होश रुबा इजाफे के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ बुलंद की थी। 300 यूनिट तक का उन्होंने कहा था कि हम सोलर सिस्टम देंगे। हाँ जी। कराची में, सिंध में देना शुरू किया, वहाँ वो हमारी हुकूमत है, पूरे पाकिस्तान में हमारी हुकूमत नहीं है। टैक्स देना हर शख्स की जिम्मेदारी है, हर ताजिर की जिम्मेदारी है। सूरज के बदलते हुए तेवर के साथ मुल्क भर की तरह हवेली लखा और गिरदो नवा में भी गर्मी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो गया। गर्मी की शिद्दत की वजह से शहरियों ने हवेली लखा रोड, अड्डा हेड सुलेमान की, जिसे मुल्तान दिल्ली रोड भी कहा जाता है, सड़क किनारे लगे घने दरख्तों की छाँव के नीचे कैम मशरूबात पॉइंट का रुख कर लिया, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की मशरूबात के पॉइंट कैम हैं। यहाँ पर गन्ने का रस, सिकंजबी, सरदियाई, सत्तू और इमली के शरबत समेत मुतद्दद मशरूबात के ठेले लगे हुए हैं। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए यहाँ मशरूब पीने लोग जौक दर जौक आते हैं और ठंडे मशरूबात पीकर राहत महसूस करते हैं। हैड सुलेमान की इलाका की सरदियाई बहुत मशहूर है, जिसमें बादाम, खशखाश, सौंफ, ज़ीरा, छोटी इलाची, चार मगज़ और दीगर अशिया मिलाकर तैयार की जाती है, जो पीने वालों के लिए खुश ज़ैक़ा होने के साथ गर्मी की शिद्दत कम करके दिल को सुकून, ठंडक और राहत बख्शती है। रिपोर्ट शाद सईद वट्टू, नुमाइंदा साउथ एशिया, ग्लोबल टीवी, हैड सुलेमान की हवेली लखा। ट्रस्ट है लोगों का, मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है? किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफी ज्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आ गए हैं। हाँ, एक टाइम आया था जब काफी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं। It's me, Jia. This is my street vibes. But I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun.
I'm Alan Curry. I'm bringing you a show badge of honour on my successful life in the police service to the rank of Chief Superintendent. Talking about me, and hopefully I'm saying some nice things about myself. There's a couple of bad ones, I'm sure, as well. And I don't like criminal activity, as opposed to the other way around when you arrest somebody and have to find the evidence. And the feeling of doing something for somebody else, I don't know how you can get that from anybody else. मई की धूप में जब हर तरफ गर्मी का राज होता है, ऐसे में कुदरत का ये जर्द तोहफा अमलतास न सिर्फ साया फराहम करता है बल्कि माहौल में रंगों की बहार भी ले आता है। अमलतास, जिसे सोने की झाड़ी भी कहा जाता है, न सिर्फ एक खूबसूरत दरख्त है बल्कि इसका तिबी इस्तेमाल भी अहमियत रखता है। इसके फल, जिसे मुकामी तौर पर सना कहा जाता है, कई यूनानी नुस्खों में बतौर दवा इस्तेमाल होते हैं। शहरियों का बात करते हुए कहना था कि जर्द रंग के फूल बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। हम रोजाना कॉलेज जाते हैं तो इन्हें देखते हैं तो दिल बाग बाग हो जाता है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे दरख्त ज्यादा से ज्यादा लगाए। ये जर्द रंग के फूल बहुत खूबसूरत हैं और सुबह के टाइम जब हम आते हैं तो कॉलेज में बहुत खूबसूरत लगते हैं और दोपहर के टाइम भी छाँव का इंतज़ाम करते हैं हमारे लिए। और मसला ये है कि बहुत कम है तादाद में, हमें चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि इसको और ज़्यादा बढ़ाएं और इनकी तादाद में इजाफा करें और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे पौधे लगाएं। शहरियों का कहना है कि ये दरख्त सिर्फ जीनत नहीं बल्कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का जरिया भी है। ये गर्दो गुबारे को जज़ब करते हैं और ऑक्सीजन फ्राहम करते हैं और शदीद गर्मी के मौसम में ठंडी छाँव बांटते हैं। जब सूरज तप रहा हो और हवा भी थम जाए, ऐसे में अमलतास के जर्द फूल कसूर वालों के दिलों पर ठंडक का फाहा रखते हैं। Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. When you talk on Facebook with someone with your family far away, genuine communication takes place. Just look after yourself and grow in power and grow in finance and grow in status. If you stay in your comfort zone, you'll never find out who you are.
Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a Repicharge facial then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client who's allergic to fat lash, so I did a London Lash patch test on her. She was absolutely fine with London Lash. So I used the London Lash. Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, "Oh, great idea. Oh, bahut vadiya." The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal or where it's contract, take your time. इस वक्त फूलनगर शहर की सब्ज़ मंडी में खड़ा हूँ और इस वक्त गर्मी के फलों में बहुत ज़्यादा फल हैं, लेकिन तरबूज एक ऐसा फल है कि जो अपने जायके और खुशबूदार और मिठास की वजह से सबसे ज़्यादा मशहूर है। वैसे तो इस वक्त सेब, आड़ू, अमरूद, खुरमानी, लुगाट भी हैं, लेकिन वो महंगे फल हैं जो कि गरीब आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बहुत ज़्यादा है। गरीब आवाम उन फलों को नहीं खरीद सकी, लेकिन तरबूज एक ऐसा फल है कि जो कम कीमत में 40 रुपये किलो के हिसाब से आवाम इसे ख़रीद रहे हैं और बड़े ज़ौक़ व शौक़ से इसे खाते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तरबूज फल बहुत अच्छा है, मौसम के लिहाज से जायका भी अच्छा होता है, मीठा भी अच्छा है और ये बाकी फलों की निस्बत जायके में अच्छा है और ये हमेशा जो है ना मौसम के लिहाज से इसको खाना चाहिए। बेहतरीन फल है। और हम ये गाड़ियों के हिसाब से आते हैं, हर रोज़ एक गाड़ी 2 गाड़ी सेल करते हैं जिसमें 80 मन 50 मन ऐसे वज़न होता है। तो ये तरबूज आपसे लोग शौक़ से ख़रीदते हैं? माशाल्लाह शौक़ से ख़रीदते हैं। ये देखिए आपने कि इस गर्मी के मौसम में लोग सेहत अफ़ज़ा और खुश जायका तरबूज बड़े शौक़ से ख़रीद रहे हैं और खा रहे हैं। मेरा भी आवाम को ये मशवरा है कि इस गर्मी के मौसम में सबसे सस्ता फल तरबूज है, ये इस्तेमाल करें और सेहतमंद रखें। कैमरा टीम गफ़ार अहमद के हमरा डॉक्टर लियाकत अली, साउथ एशिया ग्लोबल न्यूज़, फूलनगर। My name is Terence South. I formerly served in the British Army. We had to go down as the muscle squad and go on, you come with us. You should not let us go, we're fighting. Oh. I could communicate, I had all the skills for the wirelesses, the radios. I could do that, that was no problem. I could do that blindfold. Second World War, understood where you were and what you were doing, where your head was.
अगर आप कमाते हैं तो अपनी ज़ात पे अगर खर्च ना करें तो फिर कहाँ किया? इस मामले में मैं अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में बड़ा फजूल खर्च मशहूर हूँ। देखिए 91 में हमने ये मैगजीन स्टार्ट किया था और ये दुनिया का टॉप, पाकिस्तान के टॉप जर्नल्स में था, जो रिसर्च ओरिएंटेड इलस्ट्रेटेड जर्नल था। हम कम से कम अब जो है 77 साल बाद हम एक कौम इकट्ठे हो जाए। हमारे दौर के अंदर 34 अरब डॉलर रेमिटेंस जो था ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे थे। कादिर रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए हैं कि काम का टाइम बढ़ाएं, काम करें। आप यकीन करें कि नॉर्दर्न एरिया के पैकेजेस इतने ज़्यादा है, अभी पाकिस्तानियों ने नॉर्दर्न एरिया को भी नहीं अभी इतना एक्सप्लोर किया। आप लोगों ने पहले भी आवाज़ उठाई इस्लामाबाद में गैर, बिजली के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, तो आप लोगों की आवाज़ सुनी नहीं गई। देखिए, जमात इस्लामी ने महंगाई के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर बिजली के बिलों में होश रुपा इजाफे के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ बुलंद की थी। 300 यूनिट तक का उन्होंने कहा था कि हम सोलर सिस्टम देंगे। हाँ जी। कराची में, सिंध में देना शुरू किया हुआ, वहाँ वो हमारी हुकूमत है, पूरे पाकिस्तान में हमारी हुकूमत नहीं है। टैक्स देना हर शख्स की जिम्मेदारी है, हर ताजिर की जिम्मेदारी है। ट्रस्ट है लोगों का। मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है? किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफ़ी ज़्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आ गए हैं। हाँ, एक टाइम आया था जब काफ़ी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं। Well, hello again. The program's Badge of Honour, and just to reintroduce myself, my name is Alan Curry, and we're busy discussing my life
and how we progressed through from childhood to the police service. I left you just on the last episode explaining I just joined the police. And I suppose one of the questions is why? Because we weren't well paid. I remember my first wage was £96 a month, which was nothing compared to what people were making in the shipyards or the mining. But I just felt that I had something to offer the community. I had something to offer people who are, dare I say, even less fortunate than myself. And I didn't like, and I don't like, criminal activity. So it was a way of making sure that you could help people be safe. So over that period of time, I got the opportunity to do that. I helped a lot of people. I always remember there's a locality around here called Cowgate, where one or two people were from the criminal background. And one of the houses had been broken into, and this lady was over 65, 70 years of age. And they'd stolen from under her bed the money she'd saved to bury herself. And of course, she said about some of the people living here, some of these people here are from the cradle to the grave, criminals. And I have unfortunately met some people like that, but that lady stuck in my mind. And I worked really hard to arrest the person, to trace and arrest the person who actually committed that crime. Sadly, we never got our money back, but I got a lot of satisfaction of helping her, and she was very grateful for the work we put in to help her. So it all goes back to the community, the work we can do with the community, the work we can do for individuals, people who are less fortunate than I was, people who are physically less fortunate than I was, people who were picked upon. It was a bit like being bullied at school, I suspect. You always want to make sure the bullies can't survive. So that's why I ended up being a police officer. I mentioned maybe some of my influences might have been television programs as well, but when you were in the police service and working shifts, and then we did, you know, some of the shifts we worked then you wouldn't be allowed to do now. We used to work 2 till 10, finish at 10 o'clock and go back at 6 o'clock in the morning, and we'd be working 16 hours out of 24 out there. And of course, we still got a lot of calls for people committing crime, but we also got a lot of calls, where do you go to when you need help? I know it's a bit of a joke, it's an emergency service, but even in today, where do you go when you don't know what to do or who to call to? You ring the police. And not only were we particularly good at locking criminals up and dealing with criminals, we're also pretty good at being a social crutch, and that sounds a bad word, but we were there when nobody else was there, and we were there whenever you rang, and we were there within reason, not too long. And some of the traumas of the world, what happened when you lost your child? I've done that sort of thing, missing persons, didn't come home from school. What happens when your house got broken into? What happened when you fell in the street and nobody was there to pick you up, or you couldn't get an ambulance? How many times, and even then, would you believe how many times we took in stray dogs or returned them to their owners? How grateful was a person that you returned a dog? And you know, I'm a dog owner, I understand the issues, you know, it's very hard for people who may not be dog owners, but on the same token, they're part of the family. All those things were done in the name of policing. And in that context, yes, we learned lots of different skills. We learned how to interview, we learned how to deal with people, we learned how to develop your own interpersonal skills and how to be interested in people. And actually, there was no greater satisfaction than finishing a shift and knowing that you'd done 2 or 3 things right. And at the end, generally, the people you dealt with always had a better perspective of the police officers than when they first met them, or even if they had a less than positive view of the police, they would come back with the sort of thoughts. And we didn't get, you know, you don't do anything for thanks, but every now and then somebody would write a letter or say nice things about you. And that satisfaction of being part of the community, because we're slower there, but also assisting the community, assisting people less fortunate. And where else could you go but to the police? We were there, we were always there, and we're still there.
It's me, Jia. This is my street vibes. But I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. When you talk on Facebook with someone with your family far away, genuine communication takes place. Just look after yourself and grow in power and grow in finance and grow in status. If you stay in your comfort zone, you'll never find out who you are. मुल्क के दूसरे शहरों की तरह ननकाना साहब में भी जो गर्मी का ज़ोर जारी है, पारा जो है 40 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है और महकमा मौसमियात की जानब से आइंदा जो चंद रोज़ है उसमें भी गर्मी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान है। गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ साथ जो हीट वेव है इसमें भी काफ़ी इजाफा हो गया है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इस गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए लोग घरों से कम निकलें, अगर निकलना मजबूरी हो तो सर ढाँप कर निकलें। 12 बजे से लेकर 4 बजे के दरमियान बच्चे और बुजुर्ग भी घरों से कम निकलें। दूसरी जानब महकमा तलीम की जानब से 28 मई से सरकारी स्कूलों में तातीलात का ऐलान भी कर दिया गया है, जबकि रेस्क्यू 11, 22 और महकमा सेहत के अमले को भी हाई अलर्ट रहने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। Hello, I'm Robin Ashby. I'm a city councillor, I'm an advisor. I have done a lot of things in my life. Mix some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, Trinidadians and Bajans with some Ethiopians, Chinese, Vietnamese and Sudanese. There were 282,000 people who came here to study. We can absolutely understand that first generation come here and they're in a strange land where they have to learn new customs and it's cold as well.
So I've been talking about the satisfaction of helping the community, and sometimes people talk about who your hero was at that time. Hero is a hard word for me to say because there was a lot of people around at the time, but I was the youngest. I'm always the youngest, maybe not so much now, but I was the youngest on the shift, so one or two sort of took me under their wing or under their arm, for want of a better expression. And there's one chap who taught me an awful lot about what I would say is street craft, dealing with people, how to talk with people, how not to be aggressive initially or how to work accordingly. And this gentleman I'm still in touch with now, he's 76. He's literally just been diagnosed with dementia. I remember him as a big, powerful police officer who rose through the ranks and was an inspiration to other people. And he was an inspiration to me, actually, because you follow people. You know, to be a leader, you've got to have followers. There are some leaders who don't have followers. But this chap, police officer, inspector, he was a leader, and we followed. And we followed because of his personality, because of his knowledge, because of his attitude, and because of his desire to ensure that we were the best at what we did. And as a consequence, I've always said, good habits are taught, but good habits can be caught as well. And watching good operators and watching good police officers, it's just a bit like what I've said earlier on. Some things I could do and I think that's for me, others maybe not so much. I was taught a lot, but I absolutely caught a lot of good habits from this individual. And he was my hero, if I want to talk about heroes. Now maybe today it gets a little bit different because, you know, we've got some footballers who make a lot of money. I love my football, but I'm not sure they should be classed as role models as opposed to maybe some more upstanding citizens. But we don't really look for the upstanding citizens now. They've taken a little bit for granted. You know, we've probably had some little issues with church over the years and different things. I don't mind Formula One, but a Formula One racing driver is not my hero, and money has never been a motivation. You know, I mean, I've got three children, and 2 grandchildren, and I've told them when I'm not here, and I'm hopefully not in a hurry to go away, don't look under the floorboards because there's nothing there. Money's not a motivation for me. It's about, in the job, it was about managing to be the best I could and always wanted to improve. And after I've left the job, and we'll maybe go into that later on, I've still continued. You never stop learning, you never stop developing, and hopefully the good habits that I learned as a young police officer from my inverted commas hero held me in good stead as I progressed, and we'll talk about that later on, and how I've left the job and different things there. And that all started from that motivation, that hero, and me being taught good habits and be caught good habits. Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a Repicharge facial then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London Lash patch test on her. She was absolutely fine with London Lash. So I used the London Lash.
Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, oh, great idea, oh, vadya. The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal or where it's contract, take your time. My name is Terence South. I formerly served in the British Army. We had to go down as the muscle squad and go on, you come with us. Should not let us go, we're fighting. No. I could communicate, I had all the skills for the wirelesses, the radios. I could do that, that was no problem. I could do that blindfolded. Second World War, understood where you were and what you were doing, where your head was. And back to why be a police officer if the money wasn't that good? Well, it wasn't my motivation. I think I've already mentioned my motivation was to be as good as I could be and probably aspire throughout the roles. If I could have a hero, then maybe I could lead people, others. I don't know, you've got to learn about those different things. But if I've done an 8-hour shift and we've come home, I mean, there was one night, I can't remember, it was about 1978, 79, it started snowing at 2 o'clock in the afternoon, and my friends who were on the shift couldn't get home. So we all, the ones who lived local, because I used to walk to work, nobody had a car, I walked to work, they came and stopped at my house overnight, took the shirts, because we were back to work at 6 o'clock the next day. We were just a team. You know, you've heard me mention about football and team and motivation. You worked for each other, you knew what you were about, you looked after each other, and that esprit de corps and comradeship and ability to work together, basically live together in each other's pockets. We went out together, the wives knew each other. It actually helped us be, I want to say, better people. I'm not saying I'm a paragon of virtue, but I don't think I was too bad at those things. And all those sort of influences, bear in mind, you know, I'm talking here, I was only 21, 22. First time I'd been exposed to the big wide world. I couldn't even drive a car. At 19, very few of us had cars. Yet we had this ability to come together for a common good. And the money, yes, we had to work overtime and things like that. As a young married individual with my wife, it was really hard. I remember we had a video recorder when I first had the 2 children from Radio Rentals. But basically it was like £9 a month and I couldn't afford it, so it went back. But it didn't stop me in ever thinking I was ever going to change the role. Maybe my next thoughts were, yes, I probably needed a little bit of money from a family perspective, so I just worked overtime when we could, still did the same job. And I suppose it's a difficult thing to say now. Do people still get job satisfaction? I'm sure a lot of people do. But I used to do or get involved with some younger officers at a later stage. When I joined, I didn't know I got a pension. Police officers do get a pension.
I did a little bit recruiting, and maybe we'll talk about that later on. But when I was recruiting officers in the mid-90s, they knew everything about the wages, the pensions, the regulations. They all wanted to help the community, but at the back of their mind was a bit more of a financial remuneration and, in fairness, job security. And one of the things that the police service did offer then, and still does to a certain degree, was job security. Regulations have changed, time's moved on. But as I say, I worked for £96 a month, which I thought was a fantastic wage when I first started, but I didn't know I got a pension. It didn't bother me. I just wanted to be out there to do what I could do, and the feeling of doing something for somebody else, I don't know how you can get that from anybody else, if that makes sense. So I was going to say blessed, it's a difficult word, isn't it? But actually having the ability to go home feeling good, not because I didn't go home regularly, but knowing that you'd done a good job. I knew when I maybe hadn't done a good job, but it was always my ambition to do a good job. And that satisfaction was not about finance, it was about my ability, my friends within the police service, and our ability to make the locality where we were working as good as it can be and move against the people who are trying their best to destroy it. So the world's moved on when I use the word destroy, because it's a different world we live in now, and some of the things I've mentioned already that we were probably the place you went to. As we progressed, we learned to work hand in hand with other organisations, as opposed to just recognise we drove different coloured vehicles. And through that particular aspect, I suppose when I first pulled on a uniform, and I was really proud to do so, and dare I say, we mentioned my parents, they were proud to see their son in a uniform doing the job they were. So there was a bit reciprocal pride. You know, I've spoken earlier on about my father, who very rarely said anything good to me, but on the same token, I knew he was proud, and he made me proud. To be proud of that makes some sort of perverse sense. So on that particular aspect, pulling on the uniform, the family respect from doing the job, they knew some of the times I came in and I'd been fighting on the streets and things like that. But that, I don't know, feeling again of doing something that was worthwhile, something that benefited people. And actually, I suppose if you take me back to my childhood, how I worked with my parents and how they helped me, it was even getting their support. And I knew, even though he never said much, he was very proud of his son being in the police service. There was just something about my Alan being out there by himself, in the dark, dare I say, but not messing about, and nobody messed with me. अगर आप कमाते हैं तो अपनी ज़ात पे अगर खर्च ना करें तो फिर कहाँ किया? इस मामले में मैं अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में बड़ा फजूल खर्च मशहूर हूँ। देखिए 91 में हमने ये मैगजीन स्टार्ट किया था और ये दुनिया का टॉप, पाकिस्तान के टॉप जर्नल्स में था, जो रिसर्च ओरिएंटेड इलस्ट्रेटेड जर्नल था। हम कम से कम अब जो है 77 साल बाद हम एक कौम इकट्ठे हो जाए। हमारे दौर के अंदर 34 अरब डॉलर रेमिटेंस जो था ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे थे। कादिर रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए हैं कि काम का टाइम बढ़ाएं, काम करें। आप यकीन करें कि नॉर्दर्न एरिया के पैकेजेस इतने ज़्यादा है, अभी पाकिस्तानियों ने नॉर्दर्न एरिया को भी नहीं अभी इतना एक्सप्लोर किया।
आप लोगों ने पहले भी आवाज़ उठाई इस्लामाबाद में गैर, बिजली के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, तो आप लोगों की आवाज़ सुनी नहीं गई। देखिए, जमात इस्लामी ने महंगाई के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर बिजली के बिलों में होश रुबा इजाफे के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ बुलंद की थी। 300 यूनिट तक का उन्होंने कहा था कि हम सोलर सिस्टम देंगे। हाँ जी। कराची में, सिंध में देना शुरू किया, वहाँ वो हमारी हुकूमत है, पूरे पाकिस्तान में हमारी हुकूमत नहीं है। टैक्स देना हर शख्स की जिम्मेदारी है, हर ताजिर की जिम्मेदारी है। सूरज के बदलते हुए तेवर के साथ मुल्क भर की तरह हवेली लखा और गिरदो नवा में भी गर्मी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो गया। गर्मी की शिद्दत की वजह से शहरियों ने हवेली लखा रोड, अड्डा हेड सुलेमान की, जिसे मुल्तान दिल्ली रोड भी कहा जाता है, सड़क किनारे लगे घने दरख्तों की छाँव के नीचे कैम मशरूबात पॉइंट का रुख कर लिया, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की मशरूबात के पॉइंट कैम हैं। यहाँ पर गन्ने का रस, सिकंजबी, सरदियाई, सत्तू और इमली के शरबत समेत मुतद्दद मशरूबात के ठेले लगे हुए हैं। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए यहाँ मशरूब पीने लोग जौक दर जौक आते हैं और ठंडे मशरूबात पीकर राहत महसूस करते हैं। हैड सुलेमान की इलाका की सरदियाई बहुत मशहूर है, जिसमें बादाम, खशखाश, सौंफ, ज़ीरा, छोटी इलाची, चार मगज़ और दीगर अशिया मिलाकर तैयार की जाती है, जो पीने वालों के लिए खुश ज़ैक़ा होने के साथ गर्मी की शिद्दत कम करके दिल को सुकून, ठंडक और राहत बख्शती है। रिपोर्ट शाद सईद वट्टू, नुमाइंदा साउथ एशिया, ग्लोबल टीवी, हैड सुलेमान की हवेली लखा। ट्रस्ट है लोगों का। मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है? किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफी ज्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आ गए हैं। हाँ, एक टाइम आया था जब काफी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं। It's me, Jia. This is my Street Vibes. But I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight.
I'm Alan Curry. I'm bringing you a show badge of honour on my successful life in the police service to the rank of Chief Superintendent. Talking about me, and hopefully I'm saying some nice things about myself. There's a couple of bad ones, I'm sure, as well. And I don't like criminal activity, as opposed to the other way around when you arrest somebody and have to find the evidence. And the feeling of doing something for somebody else, I don't know how you can get that from anybody else. My name is Terence South. I formerly served in the British Army. We had to go down as the muscle squad and go on, you come with us. She not let us go, we're fighting. No. I could communicate, I had all the skills for the wirelesses, the radios. I could do that was no problem. I could do that blindfold. Second World War, understood where you were and what you were doing, where your head was. Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. When you talk on Facebook with someone with your family far away, genuine communication takes place. Just look after yourself and grow in power and grow in finance and grow in status. If you stay in your comfort zone, you'll never find out who you are. Hello, I'm Robin Ashby. I'm a city councillor, I'm an advisor. I have done a lot of things in my life. Met some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, Trinidadians and Bajans, with some Ethiopians, Chinese, Vietnamese and Sudanese. There were 282,000 people who came here to study. We can absolutely understand that first generation come here and they're in a strange land where they have to learn new customs and it's cold as well.
मई की धूप में जब हर तरफ गर्मी का राज होता है, ऐसे में कुदरत का ये जर्द तोहफा अमलतास न सिर्फ साया फराहम करता है बल्कि माहौल में रंगों की बहार भी ले आता है। अमलतास जिसे सोने की झाड़ी भी कहा जाता है, न सिर्फ एक खूबसूरत दरख्त है बल्कि इसका तिबी इस्तेमाल भी अहमियत रखता है। इसके फल जिसे मुकामी तौर पर सना कहा जाता है, कई यूनानी नुस्खों में बतौर दवा इस्तेमाल होते हैं। शहरियों का बात करते हुए कहना था कि जर्द रंग के फूल बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। हम रोजाना कॉलेज जाते हैं तो इन्हें देखते हैं तो दिल बाग बाग हो जाता है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे दरख्त ज्यादा से ज्यादा लगाए। ये जर्द रंग के फूल बहुत खूबसूरत हैं और सुबह के टाइम जब हम आते हैं तो कॉलेज में बहुत खूबसूरत लगते हैं और दोपहर के टाइम भी छाँव का इंतज़ाम करते हैं हमारे लिए। और मसला ये है कि ये बहुत कम है तादाद में, हमें चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि इसको और ज़्यादा बढ़ाएं और इनकी तादाद में इजाफा करें और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे पौधे लगाएं। शहरियों का कहना है कि ये दरख्त सिर्फ जीनत नहीं बल्कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का जरिया भी है। ये गर्दो गुबार को जज़ब करते हैं और ऑक्सीजन फराहम करते हैं और शदीद गर्मी के मौसम में ठंडी छाँव बांटते हैं। जब सूरज तप रहा हो और हवा भी थम जाए, ऐसे में अमलतास के जर्द फूल कसूर वालों के दिलों पर ठंडक का फाहा रखते हैं। The history of astrology and tarot cards is almost 2000 years old. Since the inception of mankind, man is in continuous search of heavenly bodies. Many of the astrologers chart the position of the stars in the sky to gain insight into human personality and even draw predictions about the future. देखिए, एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी जो है वो कदीम इल्म रखता है और आप देखें कि तारीख़ के दुराहों को लें तो यहूदी जो है इस इल्म को जो है वो बहुत मानते थे और मुख्तलिफ प्रिडिक्शंस आती होती थी। राहब जो है इसके ऊपर बड़ा यकीन रखते होते थे और यहूदियों में बाज़ तो देखा गया है कि ये एस्ट्रोलॉजी को जो है वो अपने मज़हब का हिस्सा भी समझते हैं, उसको लेके चलते हैं। देखिए, जिस तरह मुख्तलिफ सितारों की अगर बात करते हैं, सियारा ज़ोहल है, जुपिटर है, तो ये 12 सितारे हैं या 9 सियारे हैं। ये जो सियारा है ये अल्लाह ताला की मखलूक है और ये एक रूह है। हर सितारे की अपनी एक रूह होती है और वो जो रूह है वो हर बंदे के साथ एक डीलिंग करती है। मिसाल के तौर पे मैं अगर दाऊद हूँ तो मेरे ऊपर अगर सियारा मुश्तरी का असर है तो वो सियारा मुश्तरी जो मेरे साथ डीलिंग करता है वो अपनी रूह के मुताबिक करता है या उसका मेरे करैक्टर के साथ क्या तल्लक है उसके मुताबिक उसकी ऊंच नीच होती है। There are many astrologers around us. Some of them are experienced in their fields, while others do not demonstrate their effectiveness in controlled studies and has no scientific validity, which proves them pseudoscience.
यहीं तो एक मसला पैदा होता है कि एक एस्ट्रोलॉजर एक तरीके बदाई से बेहतरीन प्रिडिक्शन नहीं कर पाता। उसको करने के लिए मुख्तलिफ अलूमात का सहारा लेना पड़ता है। उसको किन अलूमात का सहारा लेना पड़ता है, जैसे कि मैं अगर एस्ट्रोलॉजी के ऊपर काम कर रहा हूँ तो मैं एस्ट्रोलॉजी से उसके तरीक़ बदाई से, उसकी डेट ऑफ बर्थ से उसका वक्त तो ले लूँगा, उसका सियारा तो पता कर लूँगा, मगर मुझे उसका नाम पता होना चाहिए। मैं उसके नाम से, न्यूमरोलॉजी से इल्म जफ़र एक बहुत बड़ा इल्म है, उससे मैं उसका इल्मुल अदाद से उसका नाम निकालूंगा, उसकी वालदा का नाम निकालूंगा। तो मैं इन तमाम चीज़ों के कम्बिनेशन से उसको न्यूमरोलॉजी से देखता हूँ कि इसकी जो पैदाइश है उस वक्त सितारा कौन सा था, इसके वालदा के असरात इसके ऊपर कैसे आए, इसकी अपनी शख्सियत कैसी है। A masterstroke like Alan Leo, father of astrology, godmother of future telling Baba Vanga, and Evangeline Adam have amazed the world by making many prophecies and prognostication. But there is still a blank space of deep understanding of the basic knowledge of astrology. The point to ponder is from where concept of astrology begins and on what basis do they make these prophecies. बेसिकली तो ये जो इल्म है ये बुज़ुर्गों से वदीयत होता है और बुज़ुर्ग इसका बड़ा फ़ायदा उठाते थे। इस ही इल्म को उठाकर लोगों ने इसको साइंस की तरफ लेके आए। हकीकतन ये अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत ज़्यादा ताकतों का, बहुत ज़्यादा पावर्स का मालिक बनाया। वो इंसान ही है जो अपनी ताकत के ज़ोर पर जो है वो 7 समुंदर पार के जो है मामलात को देख पाता है। मेरे सामने एक तस्वीर चल पड़ती है उस बंदे की, उसका करैक्टर चल पड़ता है। वो किस तरह का करैक्टर है, वो करैक्टर मेरे दिल पर जो है वदीयत होता है और कुछ उसके लिए मैंने तपस्या, इबादत और पढ़ाइयाँ, ज़िक्र अज़कार मुख्तलिफ किए हैं और ख़ासकर बुज़ुर्गों की अता है मेरे साथ। It is believed that all the stars in our galaxy lighten a strong knowledge, and this divine knowledge influences the life of every individual, but it is still a mystery. This point actually forces to think that how a life of an ordinary person can be affected by a star which is billions miles away from this existing life zone. देखें सितारों में ताकत किस तरह होती है। एक बंदे का सियारा मुश्तरी शरफ़े जो है शरफ़ में है और एक का मुश्तरी जो है वो ज़वाल में है। जो शरफ़ का मकाम है वहाँ पे आकर आपको मुख्तलिफ इबादतें, तपस्या और अपने वजद से और अपनी अंदर की ताकत से या बुज़ुर्गों की ताकत से ऐसे अमाल करने पड़ते हैं जिससे वो ताकत आपकी बढ़ जाती है। वो ताकत किस तरह की होती है? वो ताकत आपको दूसरों से मुनफरद करती है। वो ताकत आपको दूसरों से ऐसी शक्ति और ऐसी पावर लेके आती है जिससे आप लोगों की जो जिस तरह बवशा या उसकी जो है उसका मुकद्दर, उसकी तकदीर और उसके ऊपर वो आप उसको पढ़ सकते हो। لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام Miracle, 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 carnival, 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 Ghosts are creatures about whom everyone has listened some stories and every holy book has mentioned about it. There are many movies on ghosts in multiple languages. That mean we believe that ghosts exist.
But when it comes to how to control them or how to save humans from these creatures, we consider it a trickery. जिन्नात की बुनियादी तौर पे दो किस्में हैं, अच्छे और बुरे। अच्छों में अब हम ये कह सकते हैं मुसलमान भी शामिल हैं, नॉन मुस्लिम भी हैं जो अच्छे हैं, और बुरों में मुकम्मल तौर पर बुरे वो हैं जो अल्लाह को नहीं मानते, यानी इस जहान के बनाने वाले को नहीं मानते। वो जो हैं वो जिन्नात, उनको बुरे जिन्नात में शुमार किया जाता है। उनके बारे में कहानियाँ घड़ी जाती हैं कि वो इंसानों को नुकसान पहुँचाते हैं। अब इन जो बुरे इंसानों में जो नुकसान पहुँचाते हैं वो उनको नाम दिया जाता है शयातीन का। असल में वो शैतान नहीं है, वो जिन्नों की ही अम्मार की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन शैतान जो है वो उन्हें कंट्रोल कर लेते हैं। The presence of ghosts is mentioned in all 4 holy books. There come several queries about the existence of ghosts. How much power does a ghost have? Or how ancient is this creature? Or how do they communicate with them? Where do they live? वो इंसानी जहाँ ज़िंदगी जहाँ तक है, कितने फीट ऊपर, मसलन जब मीटर से हिसाब लगा लें तो 4 किलोमीटर ऊपर तक इंसान सांस ले सकता है, उसके बाद उसकी सांस दुश्वार हो जाती है, उससे ऊपर उनका आलम है। फिर इस ज़मीन से आउट भी कहीं तक भी जा सकते हैं, ज़मीन की हदूद से बाहर भी जा सकते हैं। उन्हें मूव करने के लिए, किसी ट्रैवल करने के लिए किसी सवारी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो शफ़ाफ़ है। शफ़ाफ़ से मुराद कोई मादी जिस्म नहीं है उनका जिसको टच करें, पकड़ सकें, मसलन उससे कोई जिस्मानी ताल्लुक़ कायम कर सकें, जैसा मशहूर है दुनिया में, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब झूठ है। In Quran, Surah Jinn, Allah Almighty clearly indicate the presence of ghosts. Also, what kind of powers do they have, and to which extent these ghosts are related to the ordinary man? सहाबी जिन ज़िंदा मौजूद हैं इस वक्त दुनिया में, बल्कि हज़रत ईसा के सहाबी भी मौजूद हैं। उनमें से एक जनाब ज़ाफ़र जिन है जो बहुत मशहूर है और मुख्तलिफ़ किताबों में उनके तज़किरे हैं। करबला के मैदान में भी जनाब ज़ाफ़र जिन मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए थे। देखा कि उनके सामने बहुत बड़ा लश्कर है और ये मुख्तसर से अफराद हैं और उनके साथ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, तो उन्होंने कहा कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं, हमारी जो कुछ एक्स्ट्रा पावर्स हैं, हम अगर अल्लाह हमें इजाज़त दे, यानी अगर आप कहें तो हम एक्स्ट्रा पावर से आपको मदद मुहैया कर देंगे। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि मैंने आपसे पहले कहा कि जिन्नात नुकसान और फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते, तो वो कैसे नुकसान पहुँचाते? In Surah Imran, verse number 185, it is stated that every soul will taste the death. This is also mentioned in all holy books. In the same way, the ghosts have age, and probably a day of resurrection will be fixed for their judgment. जिन्नात के नॉर्मल उम्र जो है इस कैटेगरी की जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो औसत उम्र उनकी 1500 साल है, 2000 तक भी जाती है, 2500 साल तक भी जाती है। जो इनसे बड़ी किस्म है उनकी लाखों साल है, जैसे जो शैतान है, जैसे इफरीत है, उनकी बहुत ज़्यादा एज है, यानी उनकी ज़िंदगियाँ लंबी है। जो जिन जिन्नात के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो इस दुनिया में इंसान के साथ अल्लाह ने उन्हें इबादत पर मामूर किया है, वो जिन्नात जो है उनकी औसत उम्र 1500 साल है। वैसे कुछ जिन्नात के बारे में मालूम हुआ है 2500 साल, यानी 2500 साल, 2600 साल भी उनकी एज रही है। यानी इस वक्त बहुत से जिन्नात मौजूद हैं जिन्होंने इस्लाम का दौरानिया देखा, बहुत से जिन्नात ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने हज़रत ईसा का दौरानिया देखा, यानी हज़रत ईसा से मिले हैं, अभी भी ज़िंदा हैं। रहते कहाँ हैं जो आपने पूछा, माजरत, इनकी रहाइश जो है वो इस ज़मीन पे नहीं है। इनकी रहाइश का हिस्सा जो है वो इंसानी ज़िंदगी जहाँ तक है, यानी इंसान जहाँ तक सांस इजीली ले सकता है, उससे ऊपर है, और ये शफ़ाफ़ मखलूक है। हम इंसान बने हैं मिट्टी से, जैसे हम कहते हैं, लेकिन मिट्टी नहीं है, हमारे पूरे वजूद में कहीं मिट्टी नहीं है।
We have heard the stories of the ghosts, that they have been roaming around for many years. It is assumed that all the ghosts not only have same nature. Some of these ghosts will be rulers and some will be subjected, which means there will be different types of ghosts. जनाब जाफ़र जिन ये लगभग 80-90 साल पहले तक तो ज़िंदा थे, उनके मुख्तलिफ़ अफराद से कांटेक्ट था। जब उनकी डेथ हुई तो बड़ा मशहूर हुआ दुनिया में, मुतअद्दिद ममालिक में उनके लिए मजालिस रखी गई। बड़े बड़े उलमा ने, हमारे शियों में चूँकि राइज है, कोई मरता है तो उसके लिए मजलिस रखी जाती है। When a man tries to communicate or contact other creatures of the world, specifically ghosts, it is necessary that an individual must exclude all the wishful thinking and purify its souls like a divine soul. Also diminishes all its attachments with the world, and this way communicate between humans and ghosts can be possible. देखें, मेरा कांटेक्ट किसी दुनियावी नीयत से नहीं है। मैं नॉलेज का आदमी हूँ, पढ़ाई का आदमी हूँ, किताबों का आदमी हूँ। तो मुझे हिस्ट्री के जो मिसिंग पार्ट होते हैं उनके ज़रिए, उनके सिलसिले में मैं उनसे कांटेक्ट करता हूँ। कोई अपनी विश के लिए, कोई और दिगर ज़रूरत के लिए नहीं। Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a rapid charge facial then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London lash patch test on her. She was absolutely fine with London lash. So I used the London lash. Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, "Oh, great idea. Oh, vadya." The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal or where it's contract, take your time.
अगर आप कमाते हैं तो अपनी ज़ात पे अगर खर्च ना करें तो फिर कहाँ किया? इस मामले में मैं अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में बड़ा फजूल खर्च मशहूर हूँ। देखिए 91 में हमने ये मैगजीन स्टार्ट किया था और ये दुनिया का टॉप, पाकिस्तान के टॉप जर्नल्स में था, जो रिसर्च ओरिएंटेड इलस्ट्रेटेड जर्नल था। हम कम से कम अब जो है 77 साल बाद हम एक कौम इकट्ठे हो जाए। हमारे दौर के अंदर 34 अरब डॉलर रेमिटेंस जो था ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे थे। कायदे रहमतुल्लाह फरमा गए हैं कि काम का टाइम बढ़ाएं, काम करें। आप यकीन करें कि नॉर्दर्न एरिया के पैकेजेस इतने ज़्यादा है, अभी पाकिस्तानियों ने नॉर्दर्न एरिया को भी नहीं अभी इतना एक्सप्लोर किया। आप लोगों ने पहले भी आवाज़ उठाई इस्लामाबाद में गैर, बिजली के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, तो आप लोगों की आवाज़ सुनी नहीं गई। देखिए, जमात इस्लामी ने महंगाई के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर बिजली के बिलों में होश रुपा इजाफे के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ बुलंद की थी। 300 यूनिट तक का उन्होंने कहा था कि हम सोलर सिस्टम देंगे। हाँ जी। कराची में, सिंध में देना शुरू किया हुआ, वहाँ वो हमारी हुकूमत है, पूरे पाकिस्तान में हमारी हुकूमत नहीं है। टैक्स देना हर शख्स की जिम्मेदारी है, हर ताजिर की जिम्मेदारी है। Hello there, Terence South back. Nice to talk to you again. The last time we had a chat, we were somewhere about leaving the Falkland Islands. So we were the last group on board the ship. So we were really under the water. We were right in the bottom half, bottom section. We had all the noise. There was a lot of worry that we were well below the waterline. But we were all very relieved as engineers that we'd been allowed to come back and enjoy the celebrations that everybody else had. But as we've been involved in not only the fighting, but the engineering side of mine warfare, providing water after the conflict, cleaning up after the conflict, all these unexploded devices and clearing houses, we deserved our place. But we managed to get back, although it wasn't the first choice of some seniors. So we had a tremendous welcome back into Southampton. Absolutely beautiful. Everybody welcomed you, everybody was nice, the streets were lined with people, and it was fantastic. You were on a real high. So we get back to camp, and some guys are pulled out. And I got pulled out, and I was like, Terry, there's a guy writing a book. He wants to have a chat with you. It's all right. So goes in, has a chat with this guy. It's all right. What do they call your book? What do you do? Never said, wouldn't give anything. We don't know yet. We don't know yet. And then so there's about 6 or 7 of us from different places. And what we later found was, because we kept pursuing, when's the book, where's my name in lights? It was like,
this guy was a shrink. This guy was a psychologist to find out how war had affected people, how it had affected you, what you'd done. So that was, at the time, it was a bit of a, but after being there and doing a good interview, so you thought, it was a bit of a downer because you weren't in a book. But at the end of the day, it was a good thing for the British Army to think about, well, maybe we should find just a group of blokes who've seen things, done things, to actually process it and see what's there. So that was good. But unfortunately, after the conflicts, and you've got this tightly group of blokes, what ends up happening is you all go away, you've experienced this, you come back, and then the army, in its wisdom, dilutes it all by moving you away, back into other regiments, other squadrons, other things, to take the experience and what you've done so it can be used by others. Whereas really, we wanted to keep together as a team because we trusted each other, etc. and all the things that comes with tight family life. And you had friends with this bloke, you'd relied on him, he knew things about you that you didn't want other people to know because you were so tight. And all of a sudden, he's gone. And it was like, my God, he's gone, he's gone. So you've got that drama. You've got the other drama that people who've had injuries start to return, and it's like, wow, that's massive. You've lost a leg, you've lost a foot. How they're going to help you, what they're going to do for you. And that, in a lot of ways, back in 82, was a great thing because we seen that those that had been injured in the conflict had been looked after. And that's a great thing at the back of your mind when you go into a conflict, in that when I get back, I'm going to get looked after. So that sort of eases your mind for what's going to come in the future. However, it's very different when you leave the military and you don't have that doctor back in who is specialist in these trauma injuries, and you go and you're in another health system like the NHS. The sort of care you need is not necessarily there. So in some ways that's just a consequence of getting old and moving on. But if we go back to getting back and this whole thing being diluted, that young guys come in and it's a case of, well, what do we do? And an awful lot of guys left. Other guys wanted out of sort of special forces or commando, para, etc. Wanted to, go into a more regular soldiering life. ट्रस्ट है लोगों का। मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है? किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली ऐसा चेंज तो आएगा ना ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफी ज्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आगे में। हाँ, एक टाइम आया था जब काफी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं। It's me, Jia. This is my Street Vibes. But I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight.
वक्त फूलनगर शहर की सब्ज़ मंडी में खड़ा हूँ और इस वक्त गर्मी के फलों में बहुत ज़्यादा फल हैं, लेकिन तरबूज एक ऐसा फल है कि जो अपने जायके और खुशबूदार और मिठास की वजह से सबसे ज़्यादा मशहूर है। वैसे तो इस वक्त सेब, आड़ू, अमरूद, खुरमानी, लुगाट भी हैं, लेकिन वो महंगे फल हैं जो कि गरीब आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बहुत ज़्यादा हैं। गरीब आवाम उन फलों को नहीं खरीद सकी, लेकिन तरबूज एक ऐसा फल है कि जो कम कीमत में 40 रुपये किलो के हिसाब से आवाम इसे ख़रीद रहे हैं और बड़े ज़ौक़ व शौक़ से इसे खाते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तरबूज फल बहुत अच्छा है, मौसम के लिहाज से जायका भी अच्छा होता है, मीठा भी अच्छा है और ये बाकी फलों की निस्बत जायके में अच्छा है और ये हमेशा जो है ना मौसम के लिहाज से इसको खाना चाहिए, बेहतरीन फल है। और हम ये गाड़ियों के हिसाब से आते हैं, हर रोज़ 1 गाड़ी 2 गाड़ी सेल करते हैं जिसमें 80 मन 50 मन ऐसे वज़न होता है। तो ये तरबूज आपसे लोग शौक़ से ख़रीदते हैं? माशाल्लाह शौक़ से ख़रीदते हैं। ये देखिए आपने कि इस गर्मी के मौसम में लोग सेहत अफ़ज़ा और खुश जायका तरबूज बड़े शौक़ से ख़रीद रहे हैं और खा रहे हैं। मेरा भी आवाम को ये मशवरा है कि इस गर्मी के मौसम में सबसे सस्ता फल तरबूज है, ये इस्तेमाल करें और सेहतमंद रखें। कैमरा टीम गफ़ार अहमद के हमरा डॉक्टर लियाकत अली, साउथ एशिया ग्लोबल न्यूज़, फूलनगर। Hello, I'm Alan Curry. I'm bringing you a show badge of honour on my successful life in the police service to the rank of Chief Superintendent. Talking about me, and hopefully I'm saying some nice things about myself. There's a couple of bad ones, I'm sure, as well. And I don't like criminal activity. As opposed to the other way around when you arrest somebody and have to find the evidence. And the feeling of doing something for somebody else, I don't know how you can get that from anybody else. Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. When you talk on Facebook with someone with your family far away, genuine communication takes place. Just look after yourself and grow in power and grow in finance and grow in status. If you stay in your comfort zone, you'll never find out who you are. So anyway, as times move on, you move on. You decide it's not for you after a few years. I did another about 3 years, 4 years, and then left. And that's a huge step. It's like leaving your family and going off on your own. I know I went back to where my parents were, where my brother was, everything else, but a huge
massive difference. And if we go back to coming back from a conflict, one of the problems with a conflict is you come back and everybody's full of, how are you? Nice to see you. You've lost weight. You're looking well. What was it like? And a lot of people want you to relive it. And that's part of I don't really want to do this. I don't want to, every time I go in a pub, every time I go in a bar, people I haven't seen for years saying, oh, I've seen you in the telly, I've seen you in the paper, and talk about it. It's like, but at the same time, you want to talk about it. But you want to talk about it with the right people. The people who understand what you've done, where you've been, and the consequences around that conflict. So we were given 6 weeks off, which was really good. And after about 10 days, 2 weeks, we were on the phone to each other saying, do you want to go on holiday? Yeah, let's get out of here. So a number of guys I've been in the conflict with, we all got together, walked into a travel agent and said, look, we want to go anywhere now. And the lady in Hayes Travel said, I've never had that happen before. Somebody walked and say, any in the airport now. Anywhere airport, let's go. So we ended up flying out of Manchester Airport, where we went, and we went to Spain. And so we goes to Spain, there's 3 or 4 of us out. We're in this bar, we're all fit, physically strong, fit lads. And believe it or not, the US Navy turned up because they were going down to a conflict which is about to start in Lebanon. And we met them in a bar. There was a bit of a punch-up. Then all of a sudden, they've just come back from the Falklands. Oh, right. We all ended up great friends, you know. And it's camaraderie then between different armies and different soldiers who understand what conflict brings about and what it does to people. But constantly during that holiday, the Falklands came back to us because Spanish-speaking, Argentinian, we were in Spain. And unbeknown to us, a lot of the women who had lost husbands had been given holidays. And they were out there as groups of girls or families. And it was one night we went to this big show and we had dinner and we were sat there. And we mentioned there was holes in the tablecloth. And there was a group of holes in the tablecloth. And somebody said, that's a good grouping. Can't let it have been done by an RG because they kind of shoot. And it was a simple thing about a comment about a tablecloth. 3 guys who knew, 4 guys who knew what we were talking about. And we thought the joke was lost. And on the opposite side of the table, there was a woman on a holiday sponsored by the British Army who'd lost her husband. And we didn't know that. We just saw her as a woman, la la la, no problem. She'd been talking, she was friendly, and she just broke down. Broke down in pieces. It was like, what's up with her? Oh, get it together, what's wrong, woman? Oh, hey, it's a show, go on. Show's about to start, what you got? And then our friends got together, the rushed her out, and then there was bags, there was coats, there was all sorts lying about. One of the other girls come around saying, do you know what you've done? I said, look, we've just come back from the Falklands. Have you? Yes. Ah, well, she lost her husband. Ruined holiday. Ruined the holiday. Somebody said something, wrong time, wrong place. We were devastated. Not with that, this had happened. And then all of a sudden at breakfast, there's the woman sat there again. It's like, my God. Went across, apologised to our friends. We didn't talk to her directly and said, look, we're just very sorry for what's happened. It wasn't intentional. It wasn't, and it was like, yeah, she's got to learn to live and get over it and the rest of it. But you'll find later on in life, and it just happens, even with myself, somebody will say something and it's like, yeah, yes. And you've just got to take stock of what's being said and just let it go. But anyway, you end up with this brotherhood group, and I think this is why now in the UK we have so many reunions and breakfast clubs where people now nowadays in the British Army have actually seen conflict. So they need that camaraderie, they need that bond, and it actually helps you get on with life outside because you've got these people around you who know what the conflict was about, you fully understand what you're talking about, and you can go away and say, I'll get it off my chest. And then you didn't realise you had a problem until you spoke to somebody. But the thing is, you then find that
you all need each other because you all talk the same language. So these reunions for some people are like, not for me, but for a lot of blokes you really should go and you should attend and you should keep contact with these guys, because if you don't need them, then they may need you. And I'll take it for instance, is about 4 years ago, we had, I'll call him the Scottish guy. He was short, probably big enough to be a jockey. And he was the bravest man I've ever met. He didn't have a chest big enough to crawl his medals on. They were in 2 or 3 rows, they were huge. And he'd worked in the army, he'd gone into mine warfare, mine clearing, bomb disposal. But for him, it had become like a drug, something he got off on, and he enjoyed it. He enjoyed that fighting the unknown. And that's a difficult thing. And it's sort of 50 plus years of age. And he'd gone to the Falklands at 18 and a half. He was still mine warfare, unexploded bombs. And when he left the army, it was a case of, what's this guy going to do with all this technology, all these safety procedures in his head? And he ended up going to work for Save the Children, of all people. Unbelievable. He'd ended up in Africa, clearing mines, making safe lanes for water holes so people can get backwards and forwards. Absolutely terrific fella. But when the day came, or there was younger guys about, he was a little older, he'd gone from instructor to sort of man in his 50s, and he wasn't necessarily required anymore. There was younger people, technology had moved on, his technology was getting old, it was time for him to get out the industry and the business. What does he do? He's got a head full of broken toys and he's on his own. So this guy was on his own in Scotland, and unfortunately, he's no longer with us. And that's just one of those things. He was a heavy drinker, and one day it was just, drink was too much. So it's a real difficult thing for some people to leave a conflict behind. And I say it's like a drug, and it is. Some people just thrive on it, and they want that drug fed. Hello, I'm Robin Ashby. I'm a city councillor, I'm an advisor. I have done a lot of things in my life. Mix some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, Trinidadians and Bajans, with some Ethiopians, Chinese, Vietnamese and Sudanese. There were 282,000 people who came here to study. We can absolutely understand that first generation come here and they're in a strange land where they have to learn new customs, and it's cold as well.
Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a Repicharge facial then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London Lash patch test on her. She was absolutely fine with London Lash. So I used the London Lash. But anyway, well, what you've got when you leave the forces, although you end up on your own, having to sort your own life out, now you haven't got this family and this bond around you, the massive thing you've got is confidence in what you can do and what you can't do. And you've learned through your processes and procedures that you plan, you set it up right, you practice, you build a model, you do everything, and then you do the real thing. You do as much as you can before you actually take the job on to find out what problems you've got. And in engineering, that helped me always. Let's build a model, let's talk it through, and talk it through in a room, and the engineer will talk differently from the electrician, will talk differently from the financial guy. So you've got guys in the room using the same language but to do different things, and their understanding of a project is different. So communication is everything. How you communicate and how you set out your system of who's going to do what when. So you go to a lot of briefings for projects and people will come in one day and give you a talk, the next day they come in and give you a talk, but there's no format. You know, if you in the army you get used to your format, ground, situation, mission, ats and debts, all these things, and I've took that into civilian life and it's been very successful, because working in Russia and working in China, what's actually happened is I've been able to get it through the language barrier really easy. And the other thing is that when people have worked with me once and then twice, they know what's coming next. So they won't ask a question because he'll talk about that in this bit. And then it's a case of, if you didn't talk about it, they know it's been missed or they want to have input. So input is a great thing in any plan. It's not like the military nowadays is not like a dictatorship. It's like you go in and you use all the knowledge in all the patrol to allow you to do it, all the experience. And that's what's really wrong in a lot of companies where, yes, it's led from the guy at the top, but these guys in their own departments could save a lot of money if they actually had the input. And the thing is about managing people, which is if you allow them to have input, even if they give input and it's changed and it's, well, yeah, but it was generated from here, and we've used only 20-30% because we took what he said and now we find we've got another problem. So allowing people to have input into your work or the end plan makes for a better end product always, because everybody can be proud or identify with part of it. When you come in and say, this is what we're going to do, this is how we're going to do, la 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 la, no, nobody has any interest, we're just doing what we're told to do.
Whereas if you think about it and you have input, you'll always make sure that bit's right. And that's one thing about project management that a lot of people just don't get at all. Yes, it's still got to be led, the guy at the front's got to control it, but it's got to be like that. So anyway, he comes out of the army and back from the Falklands, and I'm in the northeast, just basically here, and people start saying, did you kill anybody? What happened here? What happened there? And you could talk to another guy that'd done the same job and he would see it from a different point of view. And only yesterday, I was listening to the new radio in Newcastle Radio, and they had an interview on from a very famous guy who served in the Falklands. And I'm sat there driving down the A1 saying, that's wrong. That is not true. That is definitely out of order. That's not the case at all. That man did not make the decision, somebody else did, and he pushed it through. And because working as I did at a very senior level sort of bodyguard and engineering for a senior officer there, I listened to what was said. I knew what was being said. And only by listening to those meetings did I understand the assault on Stanley and how critical it was that we had to stop because there was a demarcation line. So later on in life, you get things that you could get really upset about. But one of the things you learn, and it's in maturing, is just do your Mr. Miyagi. Absorb it, put it in a box, put it there, and when the time is right, get it out. Otherwise, you'll end up with a head full of problems. You've got to be able to, in later life, when you do have a problem, see it, right, let's understand the facts, put it away, and let's get it out at the right time, because there is a time to sort problems out, and you've just got to make sure you do that, because to fund the radio station up would have ended up in a conflicting argument, reducing everybody's credibility. The radio station putting it on, the man for saying it, and that's not the way it is. You've got to do things in a very controlled manner. So we've spoke about now about leadership, and you understand now that when you're training, when you're working together, you should all be really trying to have input. And the great thing about a good leader is he asks for it, you know. And what I'm trying to do now is say that you've got to learn, and you learn by experience. In experience, you make mistakes. But as long as you put the lessons learned down after everything, and you make sure they're disseminated and people understand why it went wrong, you'll be successful in the future. Don't forget where you've been. Everybody was a start of one day. So anyway, thank you for listening. I'll see you again shortly, and this time we'll move to China. Thank you. Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, "Oh, great idea. Oh, vadya." The best businesses either fix something or they make them better.
Where it's legal or where it's contract, take your time. आप लोगों ने पहले भी आवाज़ उठाई इस्लामाबाद में गैर, बिजली के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, तो आप लोगों की आवाज़ सुनी नहीं गई। देखिए, जमात इस्लामी ने महंगाई के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर बिजली के बिलों में होश रुपा इजाफे के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ बुलंद की थी। 300 यूनिट तक का उन्होंने कहा था कि हम सोलर सिस्टम देंगे। हाँ जी। कराची में, सिंध में देना शुरू किया हुआ, वहाँ वो हमारी हुकूमत है, पूरे पाकिस्तान में हमारी हुकूमत नहीं है। टैक्स देना हर शख्स की जिम्मेदारी है, हर ताजिर की जिम्मेदारी है। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह ननकाना साहब में भी जो गर्मी का ज़ोर जारी है, पारा जो है 40 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है और महकमा मौसमियात की जानब से आइंदा जो चंद रोज़ है उसमें भी गर्मी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान है। गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ साथ जो हीट वेव है इसमें भी काफ़ी इजाफा हो गया है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इस गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए लोग घरों से कम निकलें, अगर निकलना मजबूरी हो तो सर ढाँप कर निकलें। 12 बजे से लेकर 4 बजे के दरमियान बच्चे और बुजुर्ग भी घरों से कम निकलें। दूसरी जानब महकमा तलीम की जानब से 28 मई से सरकारी स्कूलों में तातीलात का ऐलान भी कर दिया गया है, जबकि रेस्क्यू 11, 22 और महकमा सेहत के अमले को भी हाई अलर्ट रहने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। अगर आप कमाते हैं तो अपनी ज़ात पे अगर खर्च ना करें तो फिर कहाँ किया? इस मामले में मैं अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में बड़ा फजूल खर्च मशहूर हूँ। देखिए 91 में हमने ये मैगजीन स्टार्ट किया था और ये दुनिया का टॉप, पाकिस्तान के टॉप जर्नल्स में था, जो रिसर्च ओरिएंटेड इलस्ट्रेटेड जर्नल था। हम कम से कम अब जो है 77 साल बाद हम एक कौम इकट्ठे हो जाए। हमारे दौर के अंदर 34 अरब डॉलर रेमिटेंस जो था ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे थे। कादिर रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए हैं कि काम का टाइम बढ़ाएं, काम करें। आप यकीन करें कि नॉर्दर्न एरिया के पैकेजेस इतने ज़्यादा है, अभी पाकिस्तानियों ने नॉर्दर्न एरिया को भी नहीं अभी इतना एक्सप्लोर किया। It's me, Jia. This is my Street Vibes. But I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. ट्रस्ट है लोगों का। मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है?
किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफी ज्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आ गए हैं। हाँ, एक टाइम आया था जब काफी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं। Hello, I'm Alan Curry. I'm bringing you a show badge of honour on my successful life in the police service to the rank of Chief Superintendent. Talking about me, and hopefully I'm saying some nice things about myself. There's a couple of bad ones, I'm sure, as well. And I don't like criminal activity. As opposed to the other way around, when you arrest somebody and have to find the evidence. And the feeling of doing something for somebody else, I don't know how you can get that from anybody else. Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. When you talk on Facebook with someone with your family far away, genuine communication takes place. Just look after yourself and grow in power and grow in finance and grow in status. If you stay in your comfort zone, you'll never find out who you are. Hello, I'm Robin Ashby. I'm a city councillor, I'm an advisor. I have done a lot of things in my life. Mix some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, Trinidadians and Bajans, with some Ethiopians, Chinese, Vietnamese and Sudanese. There were 282,000 people who came here to study. We can absolutely understand that first generation come here and they're in a strange land where they have to learn new customs and it's cold as well.
सूरज के बदलते हुए तेवर के साथ मुल्क भर की तरह हवेली लखा और गिरदो नवा में भी गर्मी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो गया। गर्मी की शिद्दत की वजह से शहरियों ने हवेली लखा रोड, अड्डा हेड सुलेमान की, जिसे मुल्तान दिल्ली रोड भी कहा जाता है, सड़क किनारे लगे घने दरख्तों की छाँव के नीचे कायम मशरूबात पॉइंट का रुख कर लिया, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की मशरूबात के पॉइंट कायम हैं। यहाँ पर गन्ने का रस, सिकंजबी, सरदियाई, सत्तू और इमली के शरबत समेत मुतद्दद मशरूबात के ठेले लगे हुए हैं। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए यहाँ मशरूब पीने लोग जौक दर जौक आते हैं और ठंडे मशरूबात पीकर राहत महसूस करते हैं। हैड सुलेमान की इलाका की सरदियाई बहुत मशहूर है, जिसमें बादाम, खशखाश, सौंफ, ज़ीरा, छोटी इलायची, चार मगज़ और दीगर अशिया मिलाकर तैयार की जाती है, जो पीने वालों के लिए खुश ज़ायक़ा होने के साथ गर्मी की शिद्दत कम करके दिल को सुकून, ठंडक और राहत बख्शती है। रिपोर्ट शाद सईद वट्टू, नुमाइंदा साउथ एशिया, ग्लोबल टीवी, हैड सुलेमान की हवेली लखा। Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a rapid charge facial then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London lash patch test on her. She was absolutely fine with London lash. So I used the London lash. Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, oh, great idea, oh, The best businesses
either fix something or they make them better. Where it's legal and where it's contract, take your time. When I saw my father treating patients and the satisfaction that he used to get in treating patients who were disabled and suddenly making them walk, that gave me an inspiration as well. And that's where my mindset right from childhood was that I want to help people, I want to do something for the country. And that's where I became a doctor and then became an orthopedics and a trauma surgeon. And then wanted to learn more and see what the best things were happening in different centers in the world. So that's where I went out to do my AO fellowship from Canada and then fellowship in knee surgery from the United States of America, and where I got an opportunity to work with the guru of knee surgery in the world. And that was something, a patient, when somebody would come in and basically who could barely walk, making them walk again. A trauma patient coming in who was disabled and making them walk again was a great satisfaction. When I saw all these patients lying on the road, and 95% chances were that nobody is going to help them. So that was an inspiration that I got from the med school when I was there, and we had done the first study that in case of an emergency, there were 95% chances you'll not get an ambulance. We kept working as a social work to do something about it. And we went and tried to revamp the existing organizations, revitalize them. But then when it all didn't work out, so it came to a stage where they said, either you do something about it, which meant that I had to leave my career, a good practice, my own family hospital, and which was actually a very, very difficult decision. My family thought I was crazy, I was mad, that I was thinking of leaving my practice. Where am I going to earn from? The biggest challenge that we faced when we were making rescue was changing minds. The mindset was, this can't be done in Pakistan, a developing country, a rescue service, and one number and people will immediately get help. So it was like as if I was talking some very strange words, and this was impossible in a developing country. The biggest challenge was we didn't have trained human resource. For the first time, we started the training of emergency medical technicians. Then the ambulances, if we imported them, we couldn't maintain them, the repair and maintenance would have been necessary. So we had to start the fabrication of ambulances within Pakistan so that it was easy for repair and maintenance. Then we started it in October, so 2004. And everybody was, it will not work out. We started with only 14 ambulances in the city of Lahore. A change of government is always a challenge. Whatever initiatives have been taken by the previous government, the new government looks at it from an apprehension and they want to start their own project. Initially, we did face a lot of resistance, and obviously we had to clarify all of those things. So the challenge and rescue go together. And when these people, even from the new government, who went there and said, my mother has been saved because of this, you can stop everything else done by the previous government, but not this service. So I think that became our biggest help, and our performance spoke for itself. Starting from the city of Lahore in 2004, and today, after 16 years, when I see what we've been able to achieve, even it's difficult for me to believe that. Where we started from 14 ambulances and then expanded to all the 36 districts of Punjab province with 110 million population, our fleet went up to 350 ambulances. And we kept it very cost effective, developing a response time based model rather than a population based model. So with minimal resources, we were able to extensively cover the area. When we saw the challenge of the increasing traffic, the congested areas, the walled city or the old city areas where it was very difficult for the ambulance to respond, we went into a motorbike ambulance service. And today, the motorbike ambulance service has transformed everything, and we've been able to respond to over 600,000
calls up till now with an average response time 4 minutes, which I think is comparable even internationally. And everybody, even when we were starting the motorbike company, there was a lot of apprehension. This will not be successful, this is going to be a waste, and nobody could really believe that they could do it. And today they are able to reach the most difficult areas, the most difficult narrow streets, even in traffic congestion they're able to respond to emergencies, and they immediately go. They're all trained staff. In 2005 we had an earthquake in Pakistan, and we saw the helplessness of the people, and immediately 1 year after that we established our own disaster emergency response team. And then the team, we started building our teams and the capacity of that team, and we finally applied for UN certification in 2015 after we had met the basic requirements. And today we are the first team, the search and rescue team, which got the UN certification from INSARAG in South Asia. Then we established a modern fire service from Lahore in 2007, and then this service has gradually expanded to all districts of Punjab. And today this fire service has responded to over 151,000 fire incidents and saved losses worth over 450 billion rupees. So I think that's just by improving the response and professional firefighting. Then came the floods 2010, which was a major event. And so it's like, so that was, we saw the helplessness over there. So we collected all the boats available with different organizations, so organized a service. And today we manage all the floods in the city, every year which come in the province. And today we've rescued over 200,000 victims, from different flood-prone areas or inundated areas. So this was a big change. After the successful launch of an emergency rescue service in Pakistan, I still always wanted to go back and help the people of this country. So my old patients and everybody else motivated me that I needed to give more time to this clinical practice. So I had to sacrifice my evenings for this. So I had to sacrifice my private life, and I dedicate 3 evenings at least in a week to come and help these poor and needy patients. Clinical practice is very important. It keeps you humane, because once you're involved in the entire day in the administrative affairs, managing such a large service, then coming and helping people in need is a lot of satisfaction. And I think if I can provide them with those services, I think that's the biggest satisfaction that I get, which no money can bring. Today I'm very pleased that a mission impossible of saving lives has been accomplished, and millions of people have been rescued without discrimination. But I hope that we can establish safer communities to live, work and travel in Pakistan. That's our vision for the next 10 years. My name is Terence South. I formerly served in the British Army. We had to go down as the muscle squad and go on, you come with us. Should not let us go, we're fighting. No. I could communicate, I had all the skills for the wirelesses, the radios. I could do that, that was no problem. I could do that blindfolded. Second World War, understood where you were and what you were doing, where your head was. अगर आप कमाते हैं तो अपनी ज़ात पे अगर खर्च ना करें तो फिर कहाँ किया? इस मामले में मैं अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में बड़ा फजूल खर्च मशहूर हूँ। देखिए 91 में हमने ये मैगजीन स्टार्ट किया था, और ये दुनिया का टॉप, पाकिस्तान के टॉप जर्नल्स में था, जो
रिसर्च ओरिएंटेड इलस्ट्रेटेड जर्नल था। हम कम से कम अब जो है 77 साल बाद हम एक कौम इकट्ठे हो जाए। हमारे दौर के अंदर 34 अरब डॉलर रेमिटेंस जो था ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे थे। कायदे रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए हैं कि काम का टाइम बढ़ाएं, काम करें। आप यकीन करें कि नॉर्दर्न एरिया के पैकेजेस इतने ज़्यादा है, अभी पाकिस्तानियों ने नॉर्दर्न एरिया को भी नहीं अभी इतना एक्सप्लोर किया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी करंट अफेयर्स। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे महंगाई के हवाले से। जब से इलेक्शन हुआ है और मरीम नवाज और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नारा लगाया है कि महंगाई कम हो चुकी है, और इस टाइम महंगाई कितनी कम हुई है इसके ऊपर बात करेंगे आज। महंगाई की शरह कम होकर 2 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है, ये गवर्नमेंट कहती है, पंजाब हुकूमत कहती है। मगर किसी भी आप होटल में चले जाएं, खाना खाएं वहाँ पे, तो आपको महंगाई कम नज़र नहीं आती। दाल की प्लेट अगर आप लेते हैं 200 से ऊपर रेट है, दाल की कीमत है वो। आगे बढ़ते हैं, सोने की कीमत में 5000 से ज़ायद का इजाफा, फ़ी तोला कीमत आवाम की पहुँच से दूर हो गई। हुकूमत ने बस नारे ही नारे हैं, खोखले नारे हुकूमत के। इसके ऊपर बात करेंगे। सोने की कीमत आसमान के ऊपर है। अब शादियों का सीज़न है और ख़ानदान बेचारा क्या करेगा। 1 साल के दौरान कर्ज 8.34 खरब रुपए बढ़ गया। वजारत ख़जाना ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। इतना कर्ज लिया, 8.34 खरब रुपए लिया। चीनी की कीमतों को पर लग गए 1 हफ्ते में 4 रुपए फ़ी किलो मज़ीद महंगी हो गई है। इसके ऊपर भी बात करेंगे आज। और आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं मरकज़ी सदर किराना स्टोर लाहौर ताहिर भट्ट साहब। इनसे आज बात करेंगे। ताजिर हैं, मार्केट में बैठते हैं और ताजरों की आवाज़ बनते हैं। और ताजिर किस हुकूमत में खुश थे और कौन सी ऐसी गवर्नमेंट थी जिसने ताजरों को फ़ायदा पहुंचाया। तो अब जो हालात बने हुए हैं, मुल्क की मैशत आप देख लें कहाँ पे है, महंगाई कहाँ पे है, ताजिर इस टाइम किस तरह जी रहा है और मार्केट ताजरों की कैसे चल रही है लाहौर की। तो आज ताजिर से बात करते हैं, मरकज़ी सदर हैं लाहौर के। सर, क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? सबसे पहले बात करते हैं चीनी की, जो 1 हफ्ते में 4 रुपए इजाफा हुआ है और आगे भी चीनी बढ़ेगी, कीमतें बढ़ चुकी हैं। गरीब आदमी कहाँ पे जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई 2 माह पहले मैंने चीनी का ये जो सिग्नल था दे दिया था। मैंने कहा कि ये चंद सट्टेबाज लोग हैं जो चीनी की मूवमेंट बनाएंगे। 2 माह पहले मैंने एक प्रोग्राम किया तो उसमें मैंने कह दिया था। चीनी जब इन्होंने एक्सपोर्ट करनी थी ना, ये मिल वालों ने और दूसरे एक्सपोर्टरों ने, उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से वादा किया था हम चीनी का रेट नहीं बढ़ाएंगे। यानी कि शहबाज शरीफ ने वादा किया था कि चीनी का रेट नहीं बढ़ाएंगे। हाँ जी, इन्होंने ये एक्सपोर्टर ने वादा किया था कि 1.5 लाख टन चीनी आप एक्सपोर्ट कर दें। यानी कि ताजरों ने यानी कि वादा किया था शहबाज शरीफ से? नहीं, ताजरों ने किया, हाँ, एक्सपोर्टर ने किया था। एक्सपोर्टर ने किया जी, और मिल वालों ने कि चीनी हमारे पास सरप्लस है, हम अगर 1.5 लाख टन चीनी बेच देंगे तो इसमें इशू कोई नहीं आएगा, रेट वही रहेगा। हाँ, ये वादा किया था उन्होंने। ठीक है, हमारी समझ के बाहर है। ये 5वीं एक्सरसाइज हुई है पाकिस्तान में चीनी की एक्सपोर्ट करने के बाद जो बढ़ती है चीनी। हम कहते हैं कि अगर चीनी सरप्लस है तो उसे कम किया जाए ताकि गरीब आदमी जो चीनी जिसका दारोमदार चीनी आटा घी पे है उसको फायदा हो। बिल्कुल। चीनी ये 2 माह में इन्होंने
जो है ना ब्रोकरों ने और मिल वालों ने सट्टा खेला, जिसकी ठीक है। वजह से चीनी तेज हो गई। हम बारहा पॉइंट आउट किया, जनाब ये देखें चीनी बढ़ रही है, इन्हें रोकें। प्रॉब्लम ये आती है जब चीनी का रेट बढ़ता ना, तो इंतजामिया जो लोकल होती है ना जिलों की, वो नीचे जो छोटा दुकानदार होता है जो एक बैग का खरीदार होता है या 2 बैग लेता है, उसके ऊपर क्रैकडाउन शुरू हो जाता है। अभी तो आपने चीनी क्यों बढ़ा रहे हो? ठीक है, मकसद सिर्फ यही है कहने का, अगर आपने ये जो वायलेशन होती है तो जब 30-40 रुपए किलो बढ़ जाती है उसी वक्त इंतजामिया हरकत में आती है। ये मेरी समझ से बाहर है। आप जब हम डडोरा पीट रहे थे पूरे पंजाब में कि चीनी बढ़ रही है रोको, चीनी बढ़ रही है रोको, अब तकरीबन 25 रुपए किलो बढ़ गई हुई है। 25 रुपए किलो चीनी बढ़ गई। चीनी का पहले जो रेट था पुराना, क्या रेट था उस टाइम भट्ट साहब? हमने जो चीनी का लगाया ना अपने बड़े स्टोरों पे 128 रुपए किलो। अभी भी LOS रोड पे चले जाए, मालदीन स्टोर है हमारा, हाँ। जो उधर अब भी 128 वो लगा हुआ यानी है। कि आप पुराने रेट के ऊपर आप दे रहे हैं आप? मैं निशानी बता रहा हूँ, अब तो रेट बढ़ गया ना। हमने जब 136 रुपए DC साहब ने रेट दिया था ना लाहौर में, हमने 128 रुपए लगाया था बड़े स्टोरों पे ताकि लोगों को फायदा हो सके। ठीक है, बिल्कुल। तो अब ये 2 माह हो गया चीनी का। अब मुझे जो अलार्मिंग क्या कहते हैं, मुझे जो फीलिंग हो रही है ना, वो ये हो रही है कि रोजों में चीनी इन्होंने 170 रुपए ले जानी है। ठीक है, 170 रुपए मुझे डारा ले जानी है इन्होंने। अभी खामोशी चाहिए थोड़ी सी। अभी का जो रेट है वो क्या चल रहा है? आपने जैसे बताया कि 25 रुपए जो इजाफा हुआ है और पुराना रेट 128 था, अब 25 हुआ तो कितने हो गए? अब देखे ना 150 रेट, अब होलसेल का बता, होलसेल ठीक है। रिटेल में 155 बिकेगी, जाहिर बात है। तो देख लेना 128 तो 155, वो तकरीबन 27 रुपए किलो बढ़ गया। तकरीबन इतना ही आता है, ये 27 रुपए किलो बढ़ गया। तो मैं यही कह रहा हूँ कि वजीर आज़म साहब से जो इन्होंने वादा किया था, वजीर आज़म साहब एक्शन ले कि भी ये क्यों बढ़ा चीनी, आपने को तो कह रहे हम रेट नहीं बढ़ाएंगे, तो अब आपने क्यों बढ़ा दी है? हमारी यही गुजारिश है गवर्नमेंट से कि कम से कम जो सबसे नीचे तो दुकानदार छोटा होता ना, उस पर क्रैकडाउन शुरू हो जाता। अच्छा सर देखें, दुकानदार भी कसूरवार है अगर एक तरफ से देखा जाए। कहते हैं ना कि ताली जो बजती है ना वो दोनों हाथों से बजती है, सिंगल से नहीं बजती। ऐसा ही है, ठीक कह रहा हूँ? अगर मैं कभी गलत हो तो आप मेरी दुरुस्ती कीजिएगा। ठीक है। ताजिर को पता होता है कि जी चीनी का रेट आगे बढ़ना है, ताजिर अपनी जो सारा कुछ होता है स्टॉक कर लेता है, जब चीनी का मरला आगे आता है तो शुरू कर देता है सेल करना, वो रेट बढ़ जाते हैं। फिर राइट है। जो ताजिर जो चीनी खरीदी होती है, ठीक है, वो कम रेट पे खरीदी होती है, जब वो फ्रॉक कर रहा होता है तो ज्यादा रेट के ऊपर कर रहा होता है। ताजिर भी इसमें एक लविस है मेरे ख्याल। हाँ 10-20% हम लोग भी इन्वॉल्व हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पर मकसद ये है कि कारोबार जो है ना सिस्टम है पाकिस्तान में, हमने तो 136 वाली 128 मार्केट में सेल करवाई अपने दुकानदारों से। वो क्योंकि वो इफ्तिताह भी किया था, सलमा भट्ट साहब हैं हमारी प्राइस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इफ्तिताह किया था, हमने 128 उनके हाथों से वो करवाया था सब कुछ। हम कहते हैं कि ताजर जो है ना, जो हमारी यूनियन है, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि भाई मेरे ऊपर पकड़ो। देखें जब आप ऊपर से एक बंदे को पकड़ेंगे ना, भारी बंदे को, तो नीचे जो छोटी छोटी हमारी जैसी छोटी छोटी मछलियां होगी वो खुद ही अपना रास्ता ढूंढ लेंगी कि बचो यार ऊपर इन्होंने तो सर ऊपर किसको पकड़े हैं भट्ट साहब? कौन है जो हाथ डालेगा ऊपर? बहुत बड़ा माफिया ये तो। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डाले। तो आप समझते हैं कि गवर्नमेंट पाकिस्तान हाथ डालेगी माफिया को? अगर माफिया को पहले हाथ डालती तो आज की ये सूरत हाल ना होती पाकिस्तान में। देखे बात सुने, रियासत जो है ना, रियासत से ताकतवर कोई इंसान नहीं है। अगर रियासत अपनी ताकत दिखाएगी, ये एक्सरसाइज 1.5-2 साल पहले भी हुई है। 200 रुपये चीनी जब गई है तो फिर 130-32 रुपये चीनी आई है, 28 रुपये भी आई है, 126 रुपये भी नीचे आई है चीनी। तो रियासत अपना जब किरदार दिखाती है ना, तो हर चीज को वो कंट्रोल कर लेती है। देखे ना, रियासत अपना किरदार कब दिखाएगी? जब अवाम मर जाएगी। अवाम ऑलरेडी पहले दिखाना चाहिए ना। वही मैं कह रहा हूँ ना। देखें आपने बताया कि एक हफ्ते में 4 रुपए इजाफा हुआ, फिर आगे
कट्ठा ही 25 रुपए इकट्ठा इजाफा हुआ, नहीं, ठीक है। नहीं, तो ये अब फिर तो गवर्नमेंट सोई हुई, पता ही नहीं इनको क्या हो रहा है। फिर तो नहीं जागना चाहिए ना। देखिए ये पब्लिक का मामला है, ये फिर कौन जगाएगा? ताजरों का काम है जगाना ना। फिर तो जगा तो रहे हैं हम लोग, अब कैसे करें? अब 2 माह पहले ही अपना वो ढोल बजा रहे हैं, भाई पकड़ लो इन्हें, पकड़ लो इन्हें। तो अब हम तो जितनी हमारी ताकत है हम वो तो कर रहे हैं, उसका सदेबाप तो कर रहे हैं जितनी हमारी ताकत है। अभी आपने ये व्हाट्सएप कहा कि अब रमजान आगे स्टार्ट होने वाला खैर से, और 70 रुपए तक ये चीनी फी किलो बिल्कुल जाएगी। 170 में। इसकी क्या वजह है इसकी? हाँ, ये तो कम होनी चाहिए थी, रमजान है, पैकेज देना चाहिए था फिर तो। नहीं, अभी तो आपने खुद ही कहा है कि कौन पकड़ेगा। हाँ, तो हम जो आगे जो खतरा है ना वो मैं बता रहा हूँ 170 पे है। तो आप क्योंकि लोगों की वजह से हम लोग की आवाज़ ऊपर जाती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है। तो पहले प्रिंट मीडिया था, अब डिजिटल मीडिया हो गया, तो इसलिए हमारा जो आवाज़ आप लोगों ने आगे करनी है ना, तो वो तो अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। हमारा फर्ज ये है हम बताना कि देखें ये चीज़ का रेट बढ़ रहा है, इन्हें पकड़े। अब घी है वो भी यही पोजीशन है, वो नीचे नहीं कर रहे। क्यों नहीं नीचे कर रहे? ये गवर्नमेंट को चाहिए ना। जब घी वाले जब रेट बढ़ता था मार्केट में, आलमी मंडी में, तो इधर 10 रुपए किलो पड़ जाता था। अब रेट नीचे आ रहा है, ये कम से कम अब तो नीचे करे ना। तो इनका जो पूल है वो तोड़ना चाहिए गवर्नमेंट को, इन्हें बुला के इन्हें कहा भी ये रमजान वाला रेट ये होना चाहिए। अगर चीनी की जगह बट साहब गुड़ इस्तेमाल किया जाए तो मेरे ख्याल में एक बचत हो ही जाएगी आवाम। नहीं, हमारी इतनी एजुकेशन नहीं है हमारी पब्लिक की। 80% लोग अनपढ़ हैं, वो कैसे समझाएंगे? वो कहते हैं हमने खानी चीनी है भाई। ये तो होता है कि वो आप ये छोटे छोटे इदारे होने चाहिए जहाँ वो क्या कहते हैं एजुकेट करना चाहिए लोगों को। जैसे आप हैं, टीवी चैनल वाले हैं, ये बताएं यार गुड़ इस्तेमाल करो, ये करो। एक तो वो सस्ता है, तो 100 में 80, 90, 200 रुपए किलो है, तो वो इस्तेमाल भी थोड़ा होता है। तो हाँ, थोड़ा सा डालें, सारी चाय नमकीन सॉरी मीठी हो जाती है, सारा कुछ हो जाता है। चीनी के तब 5 चम्मच डालेंगे तब जाके मीठा असल होता है। चीनी शुगर उसकी ना, शुगर केन की नहीं ना, ये तो मुख्तलिफ चीज़ों की बनती है ना। चीनी चुकंदर की बना लेते हैं, और ये जो क्या कहते हैं ये शलजम है उसकी बना लेते हैं चीनी, मुख्तलिफ चीज़ों की बनाते हैं ये। आपका भी गवर्नमेंट से ताल्लुक है, आप बता रहे थे कि चेयरमैन भी हैं अपने इलाके के, इसके ऊपर भी बात करेंगे कि आप आगे आवाज़ क्यों नहीं पहुंचाते। ब्रेक का टाइम है, बट साहब नाज़रीन शामिल करते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ट्रस्ट है लोगों का, मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है? किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफी ज्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आ गए हैं। हाँ, एक टाइम आया था जब काफी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं। It's me, Jia. This is my street vibes. But I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight.
की धूप में जब हर तरफ गर्मी का राज होता है, ऐसे में कुदरत का ये जर्द तोहफा अमलतास न सिर्फ साया फराहम करता है बल्कि माहौल में रंगों की बहार भी ले आता है। अमलतास जिसे सोने की झाड़ी भी कहा जाता है, न सिर्फ एक खूबसूरत दरख्त है बल्कि इसका तिबी इस्तेमाल भी अहमियत रखता है। इसके फल जिसे मुकामी तौर पर सना कहा जाता है, कई यूनानी नुस्खों में बतौर दवा इस्तेमाल होते हैं। शहरियों का बात करते हुए कहना था कि जर्द रंग के फूल बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। हम रोजाना कॉलेज जाते हैं तो इन्हें देखते हैं तो दिल बाग बाग हो जाता है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे दरख्त ज्यादा से ज्यादा लगाए। ये जर्द रंग के फूल बहुत खूबसूरत हैं और सुबह के टाइम जब हम आते हैं तो कॉलेज में बहुत खूबसूरत लगते हैं और दोपहर के टाइम भी छाँव का इंतज़ाम करते हैं हमारे लिए। और मसला ये है कि बहुत कम है तादाद में, हमें चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि इसको और ज़्यादा बढ़ाएं और इनकी तादाद में इजाफा करें और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे पौधे लगाएं। शहरियों का कहना है कि ये दरख्त सिर्फ जीनत नहीं बल्कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का जरिया भी है। ये गर्दो गुबार को जज़ब करते हैं और ऑक्सीजन फराहम करते हैं और शदीद गर्मी के मौसम में ठंडी छाँव बांटते हैं। जब सूरज तप रहा हो और हवा भी थम जाए, ऐसे में अमलतास के जर्द फूल कसूर वालों के दिलों पर ठंडक का फाहा रखते हैं। Hello, I'm Alan Curry. I'm bringing you a show badge of honour on my successful life in the police service to the rank of Chief Superintendent. Talking about me, and hopefully I'm saying some nice things about myself. There's a couple of bad ones, I'm sure, as well. And I don't like criminal activity. As opposed to the other way around when you arrest somebody and have to find the evidence. And the feeling of doing something for somebody else, I don't know how you can get that from anybody else. Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. When you talk on Facebook with someone with your family far away, genuine communication takes place. Just look after yourself and grow in power and grow in finance and grow in status. If you stay in your comfort zone, you'll never find out who you are. वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे चीनी और गुड़ की। अगर आवाम गुड़ इस्तेमाल करे तो बचत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बट साहब, आप भी चेयरमैन हैं अपने इलाके के और आपका ताल्लुक भी जो है वो नून लीग से ही है और आप बड़ी बड़ी मीटिंग्स में बैठते रहते हैं सबके साथ, तो आप आगे बात क्यों नहीं बढ़ाते इनके साथ? क्यों नहीं कहते कि यार इतनी महंगाई है, आवाम मर रही है, तो थोड़ा सा रहम करें आवाम के ऊपर? देखो, मैं थोड़ा सा वजाहत कर दूँ। जो सीएम हमारी मरियम नवाज है ना, इन्होंने देखे पार्टी से हट के बंदे, मैं बात कर रहा हूँ आपसे, वो सीएम पंजाब है, उन्हें 2-4 जो फैसले किए ना हमारे लिए बहुत अच्छे किए हैं, ताजरों के लिए। मसलन कौन से? हाँ, मसलन मैं बताता हूँ। पहले जो इंतजामिया थी ना, डीसी वगैरह, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट वगैरह, इन्होंने समझे कि
बहुत ही इन्होंने ज्यादतियाँ करते थे हमारे दुकानदारों से। हमने जो सलमा भट्ट साहब हैं उनको कहा, जो प्राइम मिनिस्टर हैं प्राइस की, उनको हमने रिटर्न में लिख के दिया कि ये देखें ये बहुत बुरा। उन्होंने आगे हमारी आवाज़ पहुँचाई है। उसमें कमिश्नर लाहौर है, उसमें डीसी साहब हैं, डीसी साहब थे उन्होंने, तो इन लोगों ने हमारी ऊपर आवाज़ पहुँचाई। अब क्योंकि उन्होंने बना दिया कि पीसीएम जो है ना, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है ना, वो अपना डाल के आएगा कार्ड, ठीक है, शॉपों पे आएगा। और नई ऐप जो इन्होंने बनाई है वो अब आ रही है कि वो उधर से वो क्लिक करेगा दुकान का नाम, तो पीछे उसका रिकॉर्ड आ जाएगा कि ये आगे दुकान के इधर खड़ा है। बस ये इन्होंने ऊपर से मरियम साहिबा ने जो ये किया ना अपना, कि कोई मजिस्ट्रेट फेक बंदा आए उसके खिलाफ आप FIR दे। सर ठीक है आपकी बात, मैं आपकी बात से मैं उधर ही आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, बोले आप बोले। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, जो इंक्रोचमेंट का उन्होंने फैसला किया है ना, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा फैसला नहीं हुआ था। ना हमारे वो जो काम किया मजिस्ट्रेट साहिबान का, तो दूसरा इंक्रोचमेंट का। तीसरा मैं आपकी बात पे आऊँगा, क्योंकि पहले मैंने वो ग्राउंड बनाई है ना, अब मैं आ गया। मेरी जो CM पंजाब है ना, मरियम साहब ऐसे ये ले सकती हैं एक्शन महंगाई के खिलाफ। ठीक है, वो इस तरह क्यों इनके आगे नहीं बोलता। माशाल्लाह ये दबंग है। इंक्रोचमेंट देखे पूरे पंजाब में हो रही है, किसी की जरूरत नहीं है रोकने। सर वो ठीक है, जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन है? एक तरफ से नारा लगाया जाता है बहुत अच्छा, दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं, उठाया जाए। इस बात से माजरत, इस बात से मैं आपसे जो है क्रॉस करूंगा। बात ये है कि हम लोग ठीक नहीं है पब्लिक। सबसे पहले मेरी एक राय है छोटी सी, कि अगर CM साहिबा इन्हें पकड़े कि भाई आपको ये किसने लगवा के दिया, ये स्टॉल आ गए, वो कहेगा जी ये LDA के बंदे ने या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उन अफसरों को उठाया जाए, उन अफसरों को उठाया जाए, उन्हें पनिश दी जाए कि भाई तुमने किस हिसाब से 10 साल से इसका लगाया हुआ है। अब देखें वो 10 साल से काम कर रहा है। एक उसने सब्जी का स्टॉल लगाया या गोश्त का लगाया हुआ है, 10-20 साल से काम कर रहा है। उससे या तो मुतबादल दे दिया जाए, तब या तो वो जो महकमे का अफसर है जो उससे रिश्वत खाता था हर माह, उसकी जगह उसे लगा दें। फिर ऐसे कर लेना, फिर वो बेचारा कहाँ जाएगा? उसके बच्चे हैं, उसने कमेटी डाली हो, बच्ची की शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है, उसने घर लेना है या किराए पे रह रहा, उसका पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। मेरी सिर्फ CM साहिबा से यही रिक्वेस्ट है कि आपने माशाल्लाह इतने बड़े फैसले किए हैं, ये छोटा सा एक फैसला और क्या, जैसे आप ये रेडियाँ दे रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं, रोजगार खत्म तो नहीं किया। वो 3 महकमों से जान छूट गई है रेडी वालों के, LDA से, कॉरपोरेशन से, और वो दूसरा जो होते हैं एजेंसियां फिरती हैं छोटी मोटी नहीं होती, पुलिस वालों से। वो तो सारे पैसे ही लेते हैं ना। नहीं, अब नहीं देंगे, क्योंकि यही तो मैं बता रहा हूँ सर। लेकिन अगर उनसे वहां से उठाया जा रहा है, मैं खुद देख रहा हूँ, हर मार्केट से उठाते हैं, जब वो सारे चले जाते हैं फिर वो दुकानदार वही होते हैं, फिर वही रेडी होती है, आके लगा देते हैं रोड के ऊपर आके। तो फिर मेरा ख्याल है फिर वो जो है ना, अब देखें मरियम साहिबा को कोई कसूर तो है ही नहीं है। उन्होंने कसूर सिर्फ ये है कि जब आप एक मार्केट से चीजें उठाते हैं, उनको दूसरी जगह दी जाए। यहाँ पे आप बैठे, ठीक है, ये आपकी जगह है, रेडी, ये रेडी है, ठीक है, ये दुकान है, अलग अलग जगह, ठीक है। अब छोटे शहरों में मैंने देखा है रेडी वालों को अलग जगह दी गई है, जो छोटे शहर हैं। लाहौर में भी ऐसा हो सकता है, अलग जगह दे दें आप उनको, इतनी जगह पड़ी हुई है। आप चुबुर्जी देख ले, हाँ, गुलशरा भी देख ले, शादमान देख ले, और इधर ठोकर में देख ले, रेडियां दी है उन्होंने। मैं वही तो कह रहा हूँ कि इसमें 3 महकमे खत्म हो जाएंगे, उनकी रिश्वत मुक जाएगी। ये CM साहिबा ने जो काम कर रही है ना, अब देखे ना, CM साहब ने टोन तो नहीं देखना ना, वो जो अफसर हैं जो उन्होंने बिठाए हुए हैं, जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं या DC साहब हैं या वो टाउन के वो जो हैं हेड, उन्हें चाहिए ना आगे इम्प्लीमेंट कराना चाहिए। अब मरियम साहब ने तो ऑर्डर दे दिया कि भाई इनको रेडियाँ दे दे, वो मिल गई, काम तो हो रहा है, पर मकसद ये है कि आगे इम्प्लीमेंट उन्होंने नहीं करवाना, उन्होंने करवाना अफसरों ने। ठीक है भट्ट साहब, आपने जिक्र किया महंगाई का कि बड़ी काम कर रही है मरियम नवाज साहिबा, ये कर रही है, वो कर रही है। महंगाई की शरह कम होने का 2 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है, और आप समझते हैं कि महंगाई कम हुई है? कभी होटल पे खाना खाया? वैसे
घर से तो खा के आती होंगी, कभी होटल पे बैठने का इत्तेफाक हुआ है आपका? हाँ, और बिल्कुल। दाल का रेट क्या है? देखें, ये मैं पॉइंट आउट कर दूं आपको, ये जो हमारे चुबुर्जी में है एक खान बाबा है, उनकी दाल का रेट 1000 रुपये है। 1000 रुपए की प्लेट देसी घी की? देसी घी की। आप समझते हो वो देसी घी होगा? हाँ जी, वो एक क्लास है, ब्रांडेड है बंदा। तो जो साइडों पे है, आप दाल की प्लेट को चने ले लें आप, वो 350 रुपए की प्लेट है। तो फिर आपकी तो मरीम नवाज साहब झूठी है फिर तो? नहीं 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 नहीं, ये देखें मेरी बात सुने, ये तो इंतजामिया को चाहिए ना, रेट लिस्ट से होटल वालों को, यार इस रेट पे आप बेचें। अब देखें ना, बोतल एक पानी की है बाजार से मिल रही है 50 रुपए की या 70 रुपए की बड़ी बोतल, तो होटल में हमें मिल रही है 150 रुपए की। तो वो इंतजामिया को चाहिए ना, उन्हें लिस्ट दे, रेट लिस्ट दे ना उनको। तो ताजिर को किन मुश्किलात का सामना? फिर जब मार्केट में बैठते हैं, कस्टमर आता है, जाहिर सी बात है फिर बहस भी होती है, वो कहते हैं इतने की चीज़ नहीं थी, आज इतने की चीज़ है, तो आप लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? अब मैं बताता हूँ आपको, ये कोई 1-2 माह से जो इन्होंने गोडाउन चेक किए ना होलसेलरों के, उसकी वजह से जो इजनास है ना, जैसे दाल चना है, हाँ, ये नीचे आई है, माश तुली वो नीचे आई है, मसूर की दाल वो नीचे आई है। मेरा सिर्फ यही है कि आप जो रमज़ान आ रहा है ना, इसमें एक आप सर्कल लगा दें, भाई इसके ऊपर रेट नहीं किसी ने बेचना, होलसेलर को पाबंद कर दें। अगर होलसेल इस रेट पे नहीं देगा, होलसेल मार्केट को पकड़े और उनका रिकॉर्ड ले कि भाई तेरे पास कितना माल पड़ा हुआ है, 200 तोड़ा है, 2 लाख तोड़ा है, 3 लाख तोड़ा, हमें इस रेट पे माल चाहिए। अगर ये मरियम साहब करवा देना कि मसलन बड़े बड़े जो होलसेलर हैं, इम्पोर्टर हैं, उनका गोदाम चेक कर लें बस। तो समझते हैं कि करेंगे चेक ये? हाँ, करवाएंगे, ये मरियम करवाएंगी, हमें उम्मीद है इस पे बहुत ज्यादा। इन्होंने एक ये हमारे मुल्क में एक ये भी अलमिया है ना कि जब टीम जा रही होती पहले फोन हो जाता है कि सर आप साइड पे हो जाएं, बंद करके साइड पे हो जाएं, आप अगले बंदा पहले होशियार हो जाता है। नहीं, जब घंटी आप पहले ही कर देंगे तो अगले बंदे का क्या फायदा होगा? नहीं, ये हमारी 3, 4, 5 एजेंसी हैं जो काम करती हैं इस पे, तो वो उन्हें पता होता है कि वो जो मर्जी कर लें। अगर इन्होंने रोजों में रेट को जो ना वो सर्कल लगा दे, भाई ब्रेकर है इस पे ऊपर नहीं जाना चाहिए, होलसेल का रिकॉर्ड होना चाहिए। जैसे मार्केट अकबरी मंडी है, फैसलाबाद है, सरगोदा है, तो कराची है, वो तो बाहर है, हमारा पाकिस्तान वो सूबे से बाहर है ना। पंजाब में ये जब बहुत होलसेल बड़े बड़े बैठे हैं, उनके रिकॉर्ड आ जाएंगे कि इसके पास 2000 बोरी है सफ़ेद चने की, उसके बाद 10 लाख बोरी है चने की, काले की, क्योंकि काले चने से आगे बनता है दाल चना और बेसन। ये अगर रिकॉर्ड ले लें, रिकॉर्ड के मुताबिक हर हफ्ते दुकानदार अपना रिकॉर्ड देगा तो महंगाई पकड़ी जाएगी। अदरवाइज ये देखें ना, अब दाल है 10,200 पे रेट आई है, अब 800 रुपये हो गया। ये चीजें मैं कहना पकड़नी चाहिए। अब दाल जो है आपने बताया कि 800 रुपए किलो क्या रेट है इसका? अब दाल का रेट है तकरीबन होलसेल में 265 रुपये। 265 रुपये। और आप अब होटल पे जाएं, आपने बताया कि 1000 रुपए की प्लेट बिक रही है इस टाइम। बिल्कुल, 265 रुपए ये होलसेल रेट है। वो दाल चना मटन की बता रहा हूँ मैं। मटन की बता रहे हैं? हाँ, उसमें वो उसने बनाई होती है मटन। तो वैसे क्या दाल का रेट है नॉर्मल? वैसे तो 200 रुपए की मिल जाती है आम जो अपना दरून शहरों में। हाँ, 200 रुपए की जब मिलती है, 200 रुपए के पीछे से किलो आ रही है, तो उसमें क्या बननेगा फिर? नहीं तो आप ये चिकन देख ले, चिकन 550 रेट है, तो होटलों में 2200-2300 रुपए किलो खाते हैं कि नहीं खाते? वो तो हमजा शहबाज की रेट है सारा। तो नहीं, हमजा शहबाज नहीं, अब कई आ गए हैं लोग इस काम में, वो अकेला वो तो नहीं है, कई आ गए हैं बंदे। ज्यादा सप्लाई तो इनकी होती है ना? नहीं, ये तो ऐसे वो आप और मैं जो मर्जी कह दूं, आप जो मर्जी कह दे, ये नहीं होता। हकीकत जो है ना, वो लोगों ने बहुत बड़े इसके ना लगा लिए हैं अपना चिकन के ना, बहुत बड़े। ठीक है, अच्छा भट्ट साहब, बात आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। महंगाई का जमाना है, जो ताजिर है, आप लोग हैं, आप लोग कितना मुतासर हो रहे हैं इस टाइम महंगाई की वजह से? ठीक है, इसके ऊपर बात करेंगे। और सोने की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, 5000 रुपए। शादियों का सीजन है, ठीक है, तो कैसे लोग जी रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक का टाइम है, नाज़रीन शामिल करते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
I'm Robin Ashby. I'm a city councillor. I'm an advisor. I have done a lot of things in my life. Mix some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, Trinidadians and Bajans, with some Ethiopians, Chinese, Vietnamese and Sudanese. There were 282,000 people who came here to study. We can absolutely understand that first generation come here and they're in a strange land where they have to learn new customs and it's cold as well. Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a Repicharge facial and then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London Lash patch test on her. She was absolutely fine with London Lash. So I used the London Lash.
वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे महंगाई के हवाले से, और इतना जो दौर चल रहा है इस टाइम महंगाई का, ताजिर कितना मुतासिर हुआ है। बट साहब, ये इस दौर में, महंगाई के दौर में ताजिर जो है वो कितना मुतासिर हुआ है? आप लोग कितने मुतासिर हुए? बड़ी मार्केटों में आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों को कितना बोझ पड़ा इसके ऊपर आ गया? हाँ, ये बड़ी अच्छी बात की है जी आपने। ये कोई 5-6 साल से हम ताजिर हम पिस रहे हैं। पहले अगर कोई चीज़ हम लेते थे ना, एक मिसाल है रूह अफ़ज़ा की ले लें, हाँ। पेटी, वो हम बेचते थे 1200-1300 की। अब उसका रेट हो गया 5,000 रुपये। इतना बड़ा। तो वो जो हमारी कैपेसिटी थी ना, हम जब 50 पेटी ले लेते, अब आ गए हैं 10 पेटी के ऊपर। पैसे नहीं है, क्या करें, कहाँ से लाएं पैसे? प्रॉफिट हमारा वही है। वो 25-30 रुपये लेस करते हैं लोगों को, एक बोतल वाले को, 2 बोतलों वाले को। मुतासर ताजिर इतना मुतासर हो गया है, खासकर रिटेलर होर से, उनकी जो है ना रास वो खाती, वो खुद ही खा रहे हैं। प्रॉफिट है नहीं। वो जब लेते 2 पेटियाँ वो लेते थे, अब आ गए दर्जनों पे आ गए, 1 दर्जन 2 दर्जन साबुन वगैरह वो दुकानें लोग छोड़ रहे हैं। सर, ताजिर जब दुकानें छोड़ेंगे तो आप कहते हैं ना कि पंजाबी कहते हैं कि ना ताजिर रीढ़ दी हड्डी होती है, ठीक है? बिल्कुल सही। तो जब आप लोग पीछे हट जाएंगे तो फिर कैसे ये निज़ाम चलेगा पाकिस्तान का? पाकिस्तान का निज़ाम अल्लाह की मेहरबानी चल ही रहा है। बहरहाल जो ग्रॉस रूट पे छोटा ताजिर है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो बहुत मुतासर हो गया, बहुत ही मुतासर। देखे ना, पहले 1 लाख से दुकान वो बढ़ लेता था अपनी, आज उसका पोजीशन ये है वो 5-6 लाख भी हो ना, नहीं बढ़ सकता। ये क्योंकि ये 5-6 साल से महंगाई तेज हुई है, ये आज नहीं हुई। ये 5-6 साल से जब 120 से डॉलर गया 180-85 रुपये, अब 285 या 82-83 रेट चल रहा है डॉलर का। महंगाई तभी नीचे आएगी, तभी लोग खुश होंगे जब डॉलर 200 तोड़ेगा बस। यानी कि डॉलर तो अभी भी आसमान के ऊपर है, क्योंकि उस देखें हमारी बहुत सी चीज़ें बाहर से आती हैं, खाने पीने की, ऑयल आता है, इजनास आती हैं, बहुत सी ये वो चीज़ें हैं जो बेसिक सहूलत है हमारे लोगों की, आम बंदे की। दाल है, चावल है, चीनी चावल हमारा पाकिस्तान का है, पर वो भी महंगा है। सिर्फ ये है कि ये सब महंगाई का ये जो है ना, ये बातें ही हैं। जब डॉलर नीचे टूटेगा ना 200 रुपया, तो फिर इंशाअल्लाह ताला तेल भी नीचे आएगा, खुर्दनी तेल, आपकी ये इजनास भी नीचे आएंगी। तो ये तो जब माल ज़्यादा आ जाते हैं या फसल हमारी इधर अच्छी क्रॉप होती है तो फिर रेट कम होते हैं। यही बात है, बड़ी क्रॉप होगी चावल की या दाल की, तो काले चने या सफ़ेद चने। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब प्रोग्राम में आने के लिए। नाज़रीन, आपने भट्ट साहब की बातें सुनी और एक ही मुतालबा कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब से, मरीम नवाज से, कि महंगाई के ऊपर थोड़ा सा तवज्जो दें, महंगाई को कम करें, जो गरीब आवाम है उनको सहूलत दें। और शहबाज शरीफ साहब से भी मुतालबा कर रहे हैं कि आप भी महंगाई के ऊपर तवज्जो दें, आवाम को सोलहात दें, क्योंकि इलेक्शन से पहले आप लोगों ने कहा था कि आवाम को सोलहात देंगे, और अभी तक आवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रही है। तो नाज़रीन, ये मुतालबा कर रहे हैं भट्ट साहब। और चीनी के रेट आपको पता है, भट्ट साहब ने दोबारा बता दी है कि चीनी का जो रेट है अब और बढ़ेगा और 70 रुपये तक आगे चीनी बढ़ेगी। तो नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, oh, great idea.
बहुत बहुत वधिया। The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal or where it's contract, take your time. My name is Terence South. I formerly served in the British Army. We had to go down as the muscle squad and go on, you come with us. She said, "No, let us go, we're fighting." No. I could communicate, I had all the skills for the wirelesses, the radios. I could do that, that was no problem. I could do that blindfold. Second World War, understood where you were and what you were doing, where your head was. इस वक्त फूलनगर शहर की सब्ज़ मंडी में खड़ा हूँ और इस वक्त गर्मी के फलों में बहुत ज़्यादा फल हैं, लेकिन तरबूज एक ऐसा फल है कि जो अपने जायके और खुशबूदार और मिठास की वजह से सबसे ज़्यादा मशहूर है। वैसे तो इस वक्त सेब, आड़ू, अमरूद, खुरमानी, लुगाट भी हैं, लेकिन वो महंगे फल हैं जो कि गरीब आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बहुत ज़्यादा है। गरीब आवाम उन फलों को नहीं खरीद सकी, लेकिन तरबूज एक ऐसा फल है कि जो कम कीमत में 40 रुपये किलो के हिसाब से आवाम इसे ख़रीद रहे हैं और बड़े ज़ौक़ व शौक़ से इसे खाते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तरबूज फल बहुत अच्छा है, मौसम के लिहाज से जायका भी अच्छा होता है, मीठा भी अच्छा है और ये बाकी फलों की निस्बत जायके में अच्छा है और ये हमेशा जो है ना मौसम के लिहाज से इसको खाना चाहिए, बेहतरीन फल है। और हम ये गाड़ियों के हिसाब से आते हैं, हर रोज़ एक गाड़ी 2 गाड़ी सेल करते हैं जिसमें 80 मन 50 मन ऐसे वज़न होता है। तो ये तरबूज आपसे लोग शौक़ से ख़रीदते हैं? माशाल्लाह शौक़ से ख़रीदते हैं। ये देखिए आपने कि इस गर्मी के मौसम में लोग सेहत अफ़ज़ा और खुश जायका तरबूज बड़े शौक़ से ख़रीद रहे हैं और खा रहे हैं। मेरा भी आवाम को ये मशवरा है कि इस गर्मी के मौसम में सबसे सस्ता फल तरबूज है, ये इस्तेमाल करें और सेहतमंद रखें। कैमरा टीम गफ़ार अहमद के हमरा डॉक्टर लियाकत अली, साउथ एशिया ग्लोबल न्यूज़, फूलनगर। अगर आप कमाते हैं तो अपनी ज़ात पे अगर खर्च ना करें तो फिर कहाँ किया? इस मामले में मैं अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में बड़ा फजूल खर्च मशहूर हूँ। देखिए 91 में हमने ये मैगजीन स्टार्ट किया था और ये दुनिया का टॉप, पाकिस्तान के टॉप जर्नल्स में था, जो रिसर्च ओरिएंटेड इलस्ट्रेटेड जर्नल था। हम कम से कम अब जो है 77 साल बाद हम एक कौम इकट्ठे हो जाए। हमारे दौर के अंदर 34 अरब डॉलर रेमिटेंस जो था ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे थे। कायदे रहमतुल्लाह फरमा गए हैं कि काम का टाइम बढ़ाएं, काम करें। आप यकीन करें कि नॉर्दर्न एरिया के पैकेजेस इतने ज़्यादा है, अभी पाकिस्तानियों ने नॉर्दर्न एरिया को भी नहीं अभी इतना एक्सप्लोर किया। ट्रस्ट है लोगों का। मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है?
किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफी ज्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आ गए हैं। हाँ, एक टाइम आया था जब काफी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं। It's me, Jia. This is my street vibes. But I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Hello, I'm Alan Curry. I'm bringing you a show badge of honour on my successful life in the police service to the rank of Chief Superintendent. Talking about me, and hopefully I'm saying some nice things about myself. There's a couple of bad ones, I'm sure, as well. And I don't like criminal activity. As opposed to the other way around, when you arrest somebody and have to find the evidence. And the feeling of doing something for somebody else, I don't know how you can get that from anybody else. मुल्क के दूसरे शहरों की तरह ननकाना साहब में भी जो गर्मी का ज़ोर जारी है, पारा जो है 40 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है और महकमा मौसमियात की जानब से आइंदा जो चंद रोज़ है उसमें भी गर्मी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान है। गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ साथ जो हीट वेव है इसमें भी काफ़ी इजाफा हो गया है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इस गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए लोग घरों से कम निकलें, अगर निकलना मजबूरी हो तो सर ढाँप कर निकलें। 12 बजे से लेकर 4 बजे के दरमियान बच्चे और बुजुर्ग भी घरों से कम निकलें। दूसरी जानब महकमा तलीम की जानब से 28 मई से सरकारी स्कूलों में तातीलात का ऐलान भी कर दिया गया है, जबकि रेस्क्यू 11, 22 और महकमा सेहत के अमले को भी हाई अलर्ट रहने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. When you talk on Facebook with someone with your family far away, genuine communication takes place. Just look after yourself and grow in power and grow in finance and grow in status. If
you stay in your comfort zone, you'll never find out who you are. Hello, I'm Robin Ashby. I'm a city councillor, I'm an advisor. I have done a lot of things in my life. Mix some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, Trinidadians and Bajans, with some Ethiopians, Chinese, Vietnamese and Sudanese. There were 282,000 people who came here to study. We can absolutely understand that first generation come here and they're in a strange land where they have to learn new customs and it's cold as well.
Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a rapid charge facial and then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London lash patch test on her. She was absolutely fine with London lash. So I used the London lash. सूरज के बदलते हुए तेवर के साथ मुल्क भर की तरह हवेली लखा और गिरदो नवा में भी गर्मी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो गया। गर्मी की शिद्दत की वजह से शहरियों ने हवेली लखा रोड अड्डा हेड सुलेमान की, जिसे मुल्तान दिल्ली रोड भी कहा जाता है, सड़क किनारे लगे घने दरख्तों की छाँव के नीचे कैम मशरूबात पॉइंट का रुख कर लिया, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की मशरूबात के पॉइंट कैम हैं। यहाँ पर गन्ने का रस, सिकंजबी, सरदियाई, सत्तू और इमली के शरबत समेत मुतद्दद मशरूबात के ठेले लगे हुए हैं। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए यहाँ मशरूब पीने लोग जौक दर जौक आते हैं और ठंडे मशरूबात पीकर राहत महसूस करते हैं। हैड सुलेमान की इलाका की सरदियाई बहुत मशहूर है, जिसमें बादाम, खशखाश, सौंफ, ज़ीरा, छोटी इलाची, चार मगज़ और दीगर अशिया मिलाकर तैयार की जाती है, जो पीने वालों के लिए खुश ज़ैक़ा होने के साथ गर्मी की शिद्दत कम करके दिल को सुकून, ठंडक और राहत बख्शती है। रिपोर्ट शाद सईद वट्टू, नुमाइंदा साउथ एशिया, ग्लोबल टीवी, हैड सुलेमान की हवेली लखा। अगर आप कमाते हैं तो अपनी ज़ात पे अगर खर्च ना करें तो फिर कहाँ किया? इस मामले में मैं अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में बड़ा फजूल खर्च मशहूर हूँ। देखिए 91 में हमने ये मैगजीन स्टार्ट किया था और ये दुनिया का टॉप, पाकिस्तान के टॉप जर्नल्स में था, जो रिसर्च ओरिएंटेड इलस्ट्रेटेड जर्नल था। हम कम से कम अब जो है 77 साल बाद हम एक कौम इकट्ठे हो जाए। हमारे दौर के अंदर 34 अरब डॉलर रेमिटेंस जो था ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे थे। कादिर रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए हैं कि काम का टाइम बढ़ाएं, काम करें। आप यकीन करें कि नॉर्दर्न एरिया के पैकेजेस इतने ज़्यादा है, अभी पाकिस्तानियों ने नॉर्दर्न एरिया को भी नहीं अभी इतना एक्सप्लोर किया। Hello, Doc here with an interesting topic. The topic is negativity. So what is negativity? What are emotions? Let's talk about emotions. Emotions are called energy in motion. It's a feeling. You know, when you feel something, it's not just in your head. It makes chemicals in the body. The heart starts pumping. The nose dilates when you want to run. So in the old days, people used to get these feelings because a tiger was chasing them, or
they were chasing a deer for food. But nowadays, a brown envelope comes through your door, you open it, somebody has charged you 10 pounds extra, you get angry and you don't express it, and that harms you. That is negative emotion in a very simple way. So jealousy, frustration, anger, any of these emotions that make you feel down. You get a phone call from a friend, and when you leave it, you should feel happy because he's your friend. But if you get these phone calls and you say, oh my God, that means he's not your friend, he's not doing you any good. So emotions, as I was saying, are chemicals that are happening in the body, but they are under your control. You don't have to be a victim of these. So emotions affect your body long term, and positive emotions, neutral emotions, and negative emotions all affect your life. It's better to have a positive than a negative emotion, but it's best to be neutral. That's what relaxation or any of these methods, whether it's meditation or prayer or ibadat, they're all there to calm you down so that you can be in the best frame of mind to create, to be pleasant, to be attractive to other people. Because if you're in any emotion, positive or negative, you're away from your soul. To be with yourself, you have to be unconnected. So let's talk now about negative emotions. You know what emotions are? Negative. Negative emotions cause chemicals that harm you. So when you're angry, your heart is racing, your nose is dilated, there's blood going to your legs, your brain has switched off. Yes, if you're crossing the road and a bus comes, you don't have to calculate the distance and the weight of the bus and the weight of you. You'll be the victim. So in that you just act without your brain coming into action. But most of the time, we use the brain, and the brain only works if it's in a neutral phase. So the most important part of the human brain is this part. It's called the cerebral cortex. And right in the front is where the chief executive of your brain is sitting. That's front of the brain, the frontal brain. And that only works when you're calm. And negative emotions goes to the amygdala, fires and kills your brain off. So it's a ship running without a rudder. There's no captain on the ship. It'll go here, it'll go there. And the mind, as you know, is a very powerful beast. The Buddhists call it the monkey mind. You're sitting in your home saying, oh, he's not phone. Oh, she said this to me. Oh, in the office that's happening. It just wanders through a desert, through a maze without any connection. And the beauty of a calm mind is it stays focused on the topic that you need to be focused on. And as I was saying, it's best to have no emotion, to be switched off and relaxed as you are in your sleep. But even in your sleep, if you have had a bad day, your brain is working overtime and giving you bad dreams. So let's learn that negativity produces harm. Negative emotions really hurt us in very, very many ways. You become unpopular. Nobody wants to talk to you. Nobody wants to do business with you because you've been angry, you've been frustrated, you've been shouting, you've been banging the table. The most important thing is when you're calm and you're listening. And I believe that listening to people is the biggest spiritual gift you can give anyone. In today's world, everyone's in a rush. You sit in a train. I remember as a child in the train, you would chat with everybody. But now, if you are in London particularly, in the tube, you try to talk to someone, they'll give you an answer and go back in the newspaper. I don't get angry anymore. I just feel, man, if you were talking to me, you could exchange some good life lessons. Because every human being has something to teach me, every single. The worst human being has some good quality. And if you exchange things, you feel better, your health is better. You might think I'm just talking about the feeling of being happy. No, negative emotions harm you at the deepest level. You know that DNA is like twisted spiral. On the top of them, there are things called telomere, T-E-L-E-M-E-R-E, telomeres. They are like caps on top. And the longer the cap, the longer you live. So when you watch anything negative, you feel frustrated, you feel angry, and the telomere means your life is getting shorter. And I've seen so many experiments. And as you know, if you read something, you're affected. If you watch a picture, you're affected. 1,000 words is a picture. If you watch a movie, you come out with tears in your eyes. You know in your mind that they're just acting a story out, but you really become immersive.
So television medium is very, very, very powerful. It's bad enough reading bad news, right? It's worse hearing bad news, but it's worst of all if you are immersed in a television show. So I'll tell you later on how it affects you and how you should stay away from it. In the next part, I'll tell you the deep effects of negative emotion. ट्रस्ट है लोगों का। मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है? किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफी ज्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आ गए हैं। हाँ, एक टाइम आया था जब काफी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं। It's me, Jia. This is my Street Vibes. But I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Hello, I'm Alan Curry. I'm bringing you a show badge of honour on my successful life in the police service to the rank of Chief Superintendent. Talking about me, and hopefully I'm saying some nice things about myself. There's a couple of bad ones, I'm sure, as well. And I don't like criminal activity, as opposed to the other way around when you arrest somebody and have to find the evidence. And the feeling of doing something for somebody else, I don't know how you can get that from anybody else. आप लोगों ने पहले भी आवाज़ उठाई इस्लामाबाद में गैर, बिजली के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, तो आप लोगों की आवाज़ सुनी नहीं गई। देखिए, जमात इस्लामी ने महंगाई के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर बिजली के बिलों में होश रुबा इजाफे के ख़िलाफ़
हमने आवाज़ बुलंद की थी। 300 यूनिट तक का उन्होंने कहा था कि हम सोलर सिस्टम देंगे। हाँ जी। कराची में, सिंध में देना शुरू किया, वहाँ वो हमारी हुकूमत है, पूरे पाकिस्तान में हमारी हुकूमत नहीं है। टैक्स देना हर शख्स की जिम्मेदारी है, हर ताजिर की जिम्मेदारी है। You may be wondering why I've got an iPad in my hand. It is because I want to quote a very famous man who affected me in the knowledge that he has shared on the internet. It's called Grow Therapy. The gentleman is called Dr. Alan Diebel, D-I-E-B-E-L. If you look in there, he's got a whole series on how negativity affects our mind, particularly watching television or reading newspapers. He has the effect of news on mental health, and he says it gives us 75% of the people he reviewed told him that it affects their mind if they watch criminality on television or newspaper. 75% also saw mass shootings and it affected their minds. I mean, you're not a human being if you're not affected. Of course you are a human being. So it affects us negatively. 75% of the people who see war and killing and a bad future and think about price rise. I mean, the world is as it is. You cannot change the price rise. You cannot change the wars. Why do you watch it, is what he's saying. He then talks about symptoms and signs that news could be negatively affecting you. So he talks about excessive worrying. I mean, the least you worry. What do we worry about? What's going to happen, isn't it? Nobody worries about the past. It's done. How about staying here, like in this room with me, just listening to only what I'm saying, not be affected by the birds outside, your children playing upstairs, or your wife cooking next door. No, just be here and you'll get more out of it. He also says nervousness, people who are anxious, moving all the time, breathlessness, mental tension, headaches, rapid heart rate. We all now have watches that measure heart rate. Measure your heart rate while you're watching something painful on television. Difficulty in swallowing, difficulty in speaking, stuttering, stammering as a new thing, low mood, sadness, feeling empty, anger, and slowly from just anxiety, people are dipping into depression. He also says difficulty in focusing on one issue. If someone is sitting in front of you and you're constantly looking here and there, you're not with him. What's the point? Then he talks about the effects of reading newspaper versus watching television. And there's very clear proof that watching is much more immersive. As I've said before, a picture is worth 1,000 words. But what you're watching is 25 or 32 frames per second and a sound as well. The only thing missing is a smell. So a television medium is much more immersive and therefore affects you much more. Be careful what you watch, is what I'm telling you. And then he talks about how to deal with it. So let's go into this. What Mr. Diebel is saying, D-I-E-B-E-L, look him up on the internet, is that be careful what you watch. Because what you watch, as I was telling you, not only affects how you think, how you feel, how you relate to people, it affects your life expectancy. There's a doctor in India, age 35, and he had a heart attack. And for a year he didn't work. So he researched into telomeres and he found that human beings are very compassionate. They've got fibers in the front of the head
which are called Gandhi fibers or compassionate fibers. In Urdu, we call it hamdardi. Compassionate. Passion is pain, com means together. So if the man filming me is in pain, I feel the pain if I'm a human being. Now, some people have more, some people have less, but humans are compassionate. Even animals are compassionate. Animals get upset. A cow gets upset when the calf it dies, and so on. Every single human worries about their child. Every single animal worries. We are compassionate. He says, but these compassionate vibes should not be used to harm you. If I can't help you, I just feel bad and depressed. What's the point? In Urdu, there's a saying, "Hum to doobe hain sanam, tum bhi mere saath doobo." If someone is drowning and you can't save them, jump. And if you can't save them, pray. What's the point of jumping in? So 2 lives are lost, not 1. So he talks a lot about immersive experience. And now we have surround sound. Also, let me tell you about filmmaking. Somebody took a shot of black children in New York playing basketball and put in 2 different sounds. One was a beautiful surround sound of music of Tchaikovsky with the same shot. Another was poor quality telephone kind of sound, and the music was very rough. And he asked filmmakers to judge not the sound but the video. And do you know what happened? The bad sound looked bad to professionals, and the good sound made the same film look good. So sound affects the back of our brain. You know, when I'm sitting here and I hear the sound of a koel, the cuckoo bird, I think I'm in my hometown eating mangoes. It's deeply ingrained. Sound affects us subtly, subliminal sound. So if there's sound, movement, and you're only staring at the box, and let me tell you, when these Apple things are coming, it will be even worse, because you'll be in another world which doesn't exist. So I would now want to talk about, be careful of what you watch. And be careful on this, because now people watch many things on this box. And I have restricted my watching to 2-3 hours, which is a hell of a lot. There are people who children watch for hours and hours and hours and hours, and they forget that they are watching a game. They think it's real. Recently in America, the judge asked a 16-year-old boy, "Why did you shoot? Why did you kill this man? You don't know him. I know you had a pistol, which you shouldn't have, but you shot him right here." And the boy said, "Sir, I forgot that I'm in the real world and not on my Xbox." So the same thing about games. Be careful what your children are watching. I know this is a bit different from the topic, but watching is very powerful. You become part of the scene. So when you're watching a movie and the hero is doing romance, you think you're Shah Rukh Khan. That's what you pay for. You pretend to be them. They are doing the acting. You can't act, but you become them. You see a beautiful lady on film, you think you're doing the romance. I had experience once in York where a newsreader, Angela, came up, and I was going with my wife, and I said hello to her, and she just smiled and walked off. I thought I know her, but then I realized I know the television woman doesn't know me. So television, as I say, makes you think that you know the Prime Minister, that you know all these great characters. You don't, but it makes you think you do. So apart from watching television for too long, I know I'm on a satellite channel, but if you keep watching negativity for very long, it completely harms you. Hello, I'm Robin Ashby. I'm a city councillor, I'm an advisor. I have done a lot of things in my life. Mix some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, Trinidadians and Bajans with some Ethiopians, Chinese, Vietnamese and Sudanese. There were 282,000 people who came here to study. We can absolutely understand that first generation come here
and they're in a strange land where they have to learn new customs, and it's cold as well. मई की धूप में जब हर तरफ गर्मी का राज होता है, ऐसे में कुदरत का ये जर्द तोहफा अमलतास न सिर्फ साया फराहम करता है बल्कि माहौल में रंगों की बहार भी ले आता है। अमलतास जिसे सोने की झाड़ी भी कहा जाता है, न सिर्फ एक खूबसूरत दरख्त है बल्कि इसका तिबी इस्तेमाल भी अहमियत रखता है। इसके फल जिसे मुकामी तौर पर सना कहा जाता है, कई यूनानी नुस्खों में बतौर दवा इस्तेमाल होते हैं। शहरियों का बात करते हुए कहना था कि जर्द रंग के फूल बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। हम रोजाना कॉलेज जाते हैं तो इन्हें देखते हैं तो दिल बाग बाग हो जाता है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे दरख्त ज्यादा से ज्यादा लगाए। ये जर्द रंग के फूल बहुत खूबसूरत हैं और सुबह के टाइम जब हम आते हैं तो कॉलेज में बहुत खूबसूरत लगते हैं और दोपहर के टाइम भी छाँव का इंतज़ाम करते हैं हमारे लिए। और मसला ये है कि बहुत कम है तादाद में, हमें चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि इसको और ज़्यादा बढ़ाएं और इनकी तादाद में इजाफा करें और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे पौधे लगाएं। शहरियों का कहना है कि ये दरख्त सिर्फ जीनत नहीं बल्कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का जरिया भी है। ये गर्दो गुबार को जज़ब करते हैं और ऑक्सीजन फ्राहम करते हैं और शदीद गर्मी के मौसम में ठंडी छाँव बांटते हैं। जब सूरज तप रहा हो और हवा भी थम जाए, ऐसे में अमलतास के जर्द फूल कसूर वालों के दिलों पर ठंडक का फाहा रखते हैं। Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a Repicharge facial then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London Lash patch test on her. She was absolutely fine with London Lash. So I used the London Lash.
I'm not looking at the time, you know. I'm looking at my Apple Watch and filling in how I'm feeling just now. I'm feeling very pleasant and it's asking me to describe. So what I'm feeling is happiness, a little bit of excitement, and more than that, I'm serving you. The same holds in life generally. If you're connected with people and serving them, you forget your troubles, aches and pains, and they'll go away. The one thing I forgot to tell you is why negative emotions are affecting us strongly and for longer, and why positive emotions are very short-lived. It is because negative emotions are about survival. So when we all go into a survival mode, we are going into the poverty mode, like as if we are in the jungle hungry, or if the lion behind me is hungry, and that you remember. So in psychology, it is said you remember negative emotions for 13 years. 13 years. Can you imagine that? So that's my friend, the cameraman filming me. He might say 99 nice things, but once he criticizes, why do you get your hair cut so short? I'll remember that for 13 years. Can you imagine how silly human beings are, how silly I am? And that is all of us. So often you'll hear the woman saying, oh, you didn't come to the birth of your first child. For God's sake, that happened 50 years ago. But I'm not talking about women in particular, we all do that. So learn how to let go of negative emotions. Be positive. If someone hurts you, be nice to them. Not because they need it, you need it. We give because it makes us feel good. So be charitable. So let's look at the ways this gentleman was talking about how then to improve your life. So one thing I mentioned, you limit your time duration of how long you watch television. Get the headlines and let it be. You're not the Prime Minister of this country. You don't need to know every detail. I mean, there are people who know everything on general knowledge. Well, Google has it all. Every spelling I can do, well, spell check will do that for you. So let's, as human beings, evolve. Human beings are curious animals. Why does man go on the moon? Why did Tenzing and Hillary climb Mount Everest in 1956? And do you know the answer what Hillary gave? Because it's there. Because we are curious. If you're content with life, life becomes boring and unhappy. Go out and explore. Go for a walk instead of watching that box constantly. That's one thing. And watch, if you want to watch news, don't eat only news. Watch a little bit. If you're still tied to the country of birth, watch it for 2 minutes. But if you're constantly living in the subcontinent, who's going to live here? I know so many of our immigrants who know nothing about politics in this country, who know nothing about the beauty of where we are. I live in Newcastle. It's a beautiful place. We've got 7 lovely bridges behind me, a lovely river called Tyne, Kielder Forest there, there's castles. This is the place where Harry Potter was shot in Alnwick. And many of us haven't gone there, particularly the immigrants. They need it. And it's called integration. It's called plurality. I have my faith, I have my beliefs, but you also have something, and maybe I can imbibe something from you. The world used to be very isolated. People lived in the mountains of Afghanistan, of South India, of Iran, of Sweden, and so on. But we are all coming together through medium. And to live together makes it a very interesting place. So one of the things to do is try to watch positive things. There's so much on YouTube, on your smart television you can watch. South Asia Global being one of them. And definitely we aspire to have a very positive take on life. Life is hard enough without pushing more stress down your throat. Because as I told you, stress causes steroids, which makes you grow old quicker, which weakens your bones, which gives you glaucoma in the eyes, which gives you dementia. But if you stay happy by proper breathing or prayer or watching positive things or gardening or being nice to your neighbor, it really makes you a health conscious person. I am myself 77 years old, you know, but I'm not 77 years old. I'm busy doing things for people. For instance, I'm on this channel. It gives me great joy. People know me. I'm not doing it because people don't know me. I've got some good ideas I want to share with you. Knowledge is for sharing. It's not like money, that if you give you some money, your pocket will become loose. The more you give knowledge, the more you give skills, the more you'll learn. And the only good thing about human beings is 1.5 kilograms of brain. The human brain has the biggest forebrain.
A cow's brain is the same weight as mine, except the forebrain is very small. The computer in the cow's brain is very small. The rest of it is just for bodily functions. The cheetah can run faster than me. The alligator can bite more than me. The bear has got more hair. Birds can fly. Butterflies can look pretty. What they can't do is rational thinking, future planning. But also this brain can be very damaging because it creates the scene. And you'll know that the fact is whether you imagine something or dream something or it happens in the real, R-E-A-L, in the real world, it doesn't matter. It is exactly the same to the subconscious. So whether you're imagining in a dream that you climb Mount Everest, your muscles will start acting. I've met Olympic athletes in this country who every morning meditate to say I'm standing on tier 1 of the third position, second position and gold position. That is where they want to stand. So start visualizing good things. Don't think badly of your enemy. There is no one an enemy except your own mind. There is no enemy, even there is no friend. It's just you. What are you without your money, without your qualifications? When you leave, how many people will come to your funeral? That is the question. So let's leave the world a better place, better informed, more connected, more happy. Because most of the media is about selling things. We are here to make you feel good, to make you be more accepting and more accepted by society. So that's all for today. But you'll see me again next week with another topic. See you soon. Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, "Oh, great idea. Oh, vadya." The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal or where it's contract, take your time. My name is Terence South. I formerly served in the British Army. We had to go down as the muscle squad and go on, you come with us. She not let us go, we're fighting. No. I could communicate, I had all the skills for the wirelesses, the radios. I could do that, that was no problem. I could do that blindfolded. Second World War, understood where you were and what you were doing, where your head was.
अगर आप कमाते हैं तो अपनी ज़ात पे अगर खर्च ना करें तो फिर कहाँ किया? इस मामले में मैं अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में बड़ा फजूल खर्च मशहूर हूँ। देखिए 91 में हमने ये मैगजीन स्टार्ट किया था और ये दुनिया का टॉप, पाकिस्तान के टॉप जर्नल्स में था, जो रिसर्च ओरिएंटेड इलस्ट्रेटेड जर्नल था। हम कम से कम अब जो है 77 साल बाद हम एक कौम इकट्ठे हो जाए। हमारे दौर के अंदर 34 अरब डॉलर रेमिटेंस जो था ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे थे। कादिर रहमतुल्लाह फरमा गए हैं कि काम का टाइम बढ़ाएं, काम करें। आप यकीन करें कि नॉर्दर्न एरिया के पैकेजेस इतने ज़्यादा है, अभी पाकिस्तानियों ने नॉर्दर्न एरिया को भी नहीं अभी इतना एक्सप्लोर किया। आप लोगों ने पहले भी आवाज़ उठाई, इस्लामाबाद में गए बिजली के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, तो आप लोगों की आवाज़ सुनी नहीं गई। देखिए, जमात इस्लामी ने महंगाई के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर बिजली के बिलों में होश रुबा इजाफे के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ बुलंद की थी। 300 यूनिट तक का उन्होंने कहा था कि हम सोलर सिस्टम देंगे। हाँ जी। कराची में, सिंध में देना शुरू किया हुआ, वहाँ वो हमारी हुकूमत है। पूरे पाकिस्तान में हमारी हुकूमत नहीं है। टैक्स देना हर शख्स की जिम्मेदारी है, हर ताजिर की जिम्मेदारी है। इस वक्त फूलनगर शहर की सब्ज़ मंडी में खड़ा हूँ और इस वक्त गर्मी के फलों में बहुत ज़्यादा फल हैं, लेकिन तरबूज एक ऐसा फल है कि जो अपने जायके और खुशबूदार और मिठास की वजह से सबसे ज़्यादा मशहूर है। वैसे तो इस वक्त सेब, आड़ू, अमरूद, खुरमानी, लुगाट भी हैं, लेकिन वो महंगे फल हैं जो कि गरीब आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बहुत ज़्यादा हैं। गरीब आवाम उन फलों को नहीं खरीद सकी, लेकिन तरबूज एक ऐसा फल है कि जो कम कीमत में 40 रुपये किलो के हिसाब से आवाम इसे ख़रीद रहे हैं और बड़े ज़ौक़ व शौक़ से इसे खाते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तरबूज फल बहुत अच्छा है, मौसम के लिहाज से जायका भी अच्छा होता है, मीठा भी अच्छा है और ये बाकी फलों की निस्बत जायके में अच्छा है और ये हमेशा जो है ना मौसम के लिहाज से इसको खाना चाहिए, बेहतरीन फल है। और हम ये गाड़ियों के हिसाब से आते हैं, हर रोज़ 1 गाड़ी 2 गाड़ी सेल करते हैं, जिसमें 80 मन 50 मन ऐसे वज़न होता है। तो ये तरबूज आपसे लोग शौक़ से ख़रीदते हैं? माशाल्लाह शौक़ से ख़रीदते हैं। ये देखिए आपने कि इस गर्मी के मौसम में लोग सेहत अफ़ज़ा और खुश जायका तरबूज बड़े शौक़ से ख़रीद रहे हैं और खा रहे हैं। मेरा भी आवाम को ये मशवरा है कि इस गर्मी के मौसम में सबसे सस्ता फल तरबूज है, ये इस्तेमाल करें और सेहतमंद रखें। कैमरा टीम गफ़ार अहमद के हमरा डॉक्टर लियाकत अली, साउथ एशिया ग्लोबल न्यूज़, फूलनगर। ट्रस्ट है लोगों का, मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है? किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफी ज्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आ गए हैं। हाँ, एक टाइम आया था जब काफी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं।
It's me, Jia. This is my street vibes. But I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Hello, I'm Alan Curry. I'm bringing you a show badge of honour on my successful life in the police service to the rank of Chief Superintendent. Talking about me, and hopefully I'm saying some nice things about myself. There's a couple of bad ones, I'm sure, as well. And I don't like criminal activity. As opposed to the other way around, when you arrest somebody and have to find the evidence. And the feeling of doing something for somebody else, I don't know how you can get that from anybody else. Hello, I'm Robin Ashby. I'm a city councillor, I'm an advisor. I have done a lot of things in my life. Mixed some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, Trinidadians and Bajans, with some Ethiopians, Chinese, Vietnamese and Sudanese. There were 282,000 people who came here to study. We can absolutely understand that first generation come here and they're in a strange land where they have to learn new customs, and it's cold as well.
मुल्क के दूसरे शहरों की तरह ननकाना साहब में भी जो गर्मी का ज़ोर जारी है, पारा जो है 40 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है और महकमा मौसमियात की जानब से आइंदा जो चंद रोज़ है उसमें भी गर्मी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान है। गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ साथ जो हीट वेव है इसमें भी काफ़ी इजाफा हो गया है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इस गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए लोग घरों से कम निकलें। अगर निकलना मजबूरी हो तो सर ढाँप कर निकलें। 12 बजे से लेकर 4 बजे के दरमियान बच्चे और बुजुर्ग भी घरों से कम निकलें। दूसरी जानब महकमा तलीम की जानब से 28 मई से सरकारी स्कूलों में तातीलात का ऐलान भी कर दिया गया है, जबकि रेस्क्यू 11, 22 और महकमा सेहत के अमले को भी हाई अलर्ट रहने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a Repicharge facial then an O3 facial? We do the research for you, so we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London lash patch test on her. She was absolutely fine with London lash, so I used the London lash. Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, "Oh, great idea. Oh, vadya." The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal or where it's contract, take your time. My name is Terence South. I formerly served in the British Army. We had to go down as the muscle squad and come on, you come with us. She not let us go, we're fighting. No. I could communicate, I had all the skills for the wirelesses, the radios. I could do that, that was no problem. I could do that blindfolded. Second World War, understood where you were and what you were doing, where your head was.
अगर आप कमाते हैं तो अपनी ज़ात पे अगर खर्च ना करें तो फिर कहाँ किया? इस मामले में मैं अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में बड़ा फजूल खर्च मशहूर हूँ। देखिए 91 में हमने ये मैगजीन स्टार्ट किया था और ये दुनिया का टॉप, पाकिस्तान के टॉप जर्नल्स में था, जो रिसर्च ओरिएंटेड इलस्ट्रेटेड जर्नल था। हम कम से कम अब जो है 77 साल बाद हम एक कौम इकट्ठे हो जाए। हमारे दौर के अंदर 34 अरब डॉलर रेमिटेंस जो था ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे थे। कादिर रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए हैं कि काम का टाइम बढ़ाएं, काम करें। आप यकीन करें कि नॉर्दर्न एरिया के पैकेजेस इतने ज़्यादा है, अभी पाकिस्तानियों ने नॉर्दर्न एरिया को भी नहीं अभी इतना एक्सप्लोर किया। आप लोगों ने पहले भी आवाज़ उठाई, इस्लामाबाद में गए बिजली के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, तो आप लोगों की आवाज़ सुनी नहीं गई। देखिए, जमात इस्लामी ने महंगाई के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर बिजली के बिलों में होश रुबा इजाफे के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ बुलंद की थी। 300 यूनिट तक का उन्होंने कहा था कि हम सोलर सिस्टम देंगे। हाँ जी। कराची में, सिंध में देना शुरू किया हुआ, वहाँ वो हमारी हुकूमत है, पूरे पाकिस्तान में हमारी हुकूमत नहीं है। टैक्स देना हर शख्स की जिम्मेदारी है, हर ताजिर की जिम्मेदारी है। सूरज के बदलते हुए तेवर के साथ मुल्क भर की तरह हवेली लखा और गिरदो नवा में भी गर्मी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो गया। गर्मी की शिद्दत की वजह से शहरियों ने हवेली लखा रोड, अड्डा हेड सुलेमान की, जिसे मुल्तान दिल्ली रोड भी कहा जाता है, सड़क किनारे लगे घने दरख्तों की छाँव के नीचे कैम मशरूबात पॉइंट का रुख कर लिया, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की मशरूबात के पॉइंट कैम हैं। यहाँ पर गन्ने का रस, सिकंजबी, सरदियाई, सत्तू और इमली के शरबत समेत मुतद्दद मशरूबात के ठेले लगे हुए हैं। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए यहाँ मशरूब पीने लोग जौक दर जौक आते हैं और ठंडे मशरूबात पीकर राहत महसूस करते हैं। हेड सुलेमान की इलाका की सरदियाई बहुत मशहूर है, जिसमें बादाम, खशखाश, सौंफ, ज़ीरा, छोटी इलायची, चार मगज़ और दीगर अशिया मिलाकर तैयार की जाती है, जो पीने वालों के लिए खुश ज़ैक़ा होने के साथ गर्मी की शिद्दत कम करके दिल को सुकून, ठंडक और राहत बख्शती है। रिपोर्ट शाद सईद वट्टू, नुमाइंदा साउथ एशिया, ग्लोबल टीवी, हेड सुलेमान की हवेली लखा। ट्रस्ट है लोगों का, मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है? किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफी ज्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आ गए हैं। हाँ, एक टाइम आया था जब काफी काम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं। Hello, I'm Alan Curry. I'm bringing you a show badge of honour on my successful life in the police service to the rank of Chief Superintendent. Talking about me, and hopefully I'm saying some nice things about myself. There's a couple of bad ones, I'm sure, as well. And I don't like criminal activity.
as opposed to the other way around when you arrest somebody and have to find the evidence. And the feeling of doing something for somebody else, I don't know how you can get that from anybody else. मैं हूं आपकी होस्ट वजीहा खालिद। वेलकम टू माय शो स्ट्रीट बाइट्स, एक नई और मज़ेदार एपिसोड के साथ आज हम मौजूद हैं क्रीम ब्लॉक, जहां हम लोगों से करेंगे मज़े मज़े की बातें और जानेंगे वो किस तरह से और किसके साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुक्र अल्लाह पाक। आपका नाम? अल्लाह रखा। अल्लाह रखा। क्या करते हैं? यहाँ पे गार्ड की जॉब करते हैं बाजार में, जूनियर गार्ड है। अच्छा, तो कैसी जा रही है आपकी जॉब? शुक्र अल्लाह पाक का शुक्र है। तो कितनी देर से कर रहे हैं अभी काम? यहाँ से 4-5 साल हो गए। 4-5 साल। तो इधर से स्टार्ट किया था जो भी काम है? नहीं, और भी काफ़ी काम किए हैं, जो भी मजदूर बंदे हैं जो भी काम मिल जाए कर लेते हैं। अरे वाह, ज़बरदस्त। तो वैसे इधर खाने में क्या पसंद है मार्केट में? इधर खाने में ना ये पार्क है ना अगल की साइड पे, फ्रूट स्ट्रीट भी है और जहाँ पे ना क्रीम ब्लॉक की सब्जी बड़ी मशहूर है, वो पसंद है। खाने पीने में जो भी मिल जाए शुक्र अल्लाह पाक की नेमत है, खानी चाहिए पीनी चाहिए, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। वैसे फास्ट फूड पसंद करते हैं देसी? पे जो भी मिल जाए अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए, फास्ट फूड मिल जाए, देसी फूड मिल जाए। वैसे आप हैं किधर से? लाहौर के रहने वाले हैं। अच्छा, लाहौर के रहने वाले हैं। बेगम के हाथ का बना क्या ज़्यादा पसंद है? हाँ जी, बेगम के हाथ का बना क्या ज़्यादा पसंद? वो सब्जी पका ले, चिकन पका ले, जो भी पका ले खा लेते हैं, हर चीज़ की पसंद आ जाती है। नहीं, कोई एक डिमांड होती है ना कि ये मुझे पसंद है, ये आज बना लो बेगम, ये वो गोश्त अच्छा बनाती है, चिकन वगैरह। अच्छा, बस गोश्त ही अच्छा बनाती है। हाँ। अच्छा, वैसे आपने कभी अपनी बेगम की हेल्प की है किचन में जाके? हाँ, कर लेते हैं, सामान वगैरह पकड़ा देते हैं, फ्रिज में पानी शानी पकड़ा दिया, हेल्प वगैरह कर लेते हैं जब घर में होते हैं। अच्छा, ज़्यादातर मामलों में आप दिल की सुनते हैं या दिमाग की? दोनों की सुनते हैं, दिल से भी सोचते हैं, दिमाग से भी सोचते हैं। तो आपको क्या लगता है किसकी ज़्यादा सुननी चाहिए, दिल की या दिमाग की? ये भी अपने हिसाब सुननी चाहिए। दिल जो है जे, दिमाग जो है जे दिमाग से ज़्यादा इसे हैवी है, क्यों पूरी जो जिस्म की बॉडी का निज़ाम है ना वो दिमाग से चल रहा है। हाँ जी, दिल जो है ये एक पंप है, तो ये पूरे जिस्म को खून सप्लाई कर रहा है। जो दिमाग है ये पूरा कंप्यूटर है जिस्म का, बॉडी का, तो ये इसके साथ पूरा जिस्म चलता है। दिमाग का कोई एक हिस्सा डैमेज हो जाए तो जिस्म का कोई ना कोई हिस्सा डैमेज हो जाता है। तो ज़्यादातर फिर आप दिमाग के सुनते हैं? वैसे दिमाग के साथ चलते हैं, दिमाग जो भी कहता है, दिल की जो कोई ऐसी बात हो दिल में आए तो वो कर लेते हैं। दिल कर रहा है मेरा ये करने का, तो फिर वो दिल की सुननी पड़ती है। हाँ जी, वो कर लेते हैं। अच्छा, वैसे बच्चों को कहाँ ज़्यादा घुमाने लेके जाते हैं? कौन सा पॉइंट आपको ज़्यादा पसंद है? अभी तो जो हालात हैं बच्चों को घुमाने तो नहीं लेके जा सकते। जब छोटे थे, जब हालात सही थे तो उस टाइम बच्चों को ले जाते, कभी पार्क में ले जाते, कभी वैसे सैर कराने चले गए, यादगार ले गए, गुलशन पार्क में ले गए बस। अच्छा, तो आप खुद कुछ बना लेते हैं खाने पीने में? खाने में चाय बना लेता हूँ, अंडा बना लेता हूँ, हलवा बना लेता हूँ, बस जी। अपना कर लेते? हाँ, अपना हल्का फुल्का कर लेते हैं। और मेरा बेटा है ना, वो माशाल्लाह 15-16 साल का है, वो रोटी बना लेता है, अंडा बना लेता है, वो भी चाय बना लेता है।
उसकी मामा ने उसे रोटी बनाने का ना तरीका सिखाया हुआ है। अपना तो कर ले। हाँ जी, कम से कम अपना, बेटी नहीं है, अकेला बेटा है, वो कहते चलो अपना थोड़ा बहुत खा ले, केले हो अपना कर ले। तो मैंने ना चाय बनानी अपनी मामा से सीखी, अंडा बनाना और हलवा बनाना अपनी बेगम से सीखा। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता सब सीख लिया। हाँ। अच्छा, कोई मैसेज वगैरह देना चाहेंगे? मैसेज ये देना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानियों अखलाक के साथ लो, किसी के साथ बुरा भला किसी से बदतमीजी ना करो। और ये कूड़ा फेंकते लोग, ये हमारा प्यारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान को सवारो, पाकिस्तान को बनाओ। कूड़ा किसी बास्टर में फेंको, किसी ऐसी जगह में फेंको। मैं यहाँ से ना, ये पुराने शापर मिलते हैं, मेरी जो आदत है, यहाँ से पुराने शापर मिलते हैं, मैं घर ले जाता हूँ, उसे धो के साइड पर डालता हूँ, जमा कर लेता हूँ। घर के कूड़ा एक बास्टर रखी, उसमें फेंकता हूँ, 2 दिन में 3 दिन में बढ़ता है। और जाके जहाँ पे कूड़ा टप वगैरह है वहाँ पर फेंक देता हूँ। गली में नहीं फेंकता, लोगों को देखा गली में फेंक दिया, ऐसे फेंक दिया। आज मैं हॉस्पिटल में देखा, वहाँ पर ना एक आपा थी, वो झाड़ू मार रही थी, वो साथ बातें करके लोग छिलर फेंक देते हैं, ऐसे खाना खाना तमीज़ नहीं है। हमारी बेइज्जती होती है। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, मुसलमान का ईमान है सफाई है, तो सफाई है। तो पाकिस्तानी है, हम आप पाकिस्तान को साफ़ करें गंदगी से भी और इमालों से भी। हाँ, सफाई है। देखें कितना खाना, जो झाड़ू मारते हैं वो हमारे भाई हैं, मेहनत करते हैं, हम उनको ये अज़ियत करते हैं कि पूरा करके जा भी ना। तो ये कहूँगा, पाकिस्तान को मिसाल दूँगा कि पाकिस्तान को साफ़ सुथरा करें आप। तो पाकिस्तान को साफ सुथरा करें। बाय द वे, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का एहसान करम वाले की जात का। आपका नाम? जी चार्ली इस्लामाबाद। आपको नहीं मैम? नहीं, मैं नहीं। इस्लामाबाद 6-7 से ज्यादा इंटरव्यू, टीवी, थिएटर, फिल्म और रिपोर्टिंग। चार्ली चैपलिन। यस यस यस। अच्छा, तो चार्ली चैपलिन आप कब क्या कर रहे हैं इधर? असल में मैं यहाँ पे लाहौर में जो है ना, टीवी, थिएटर और स्टेज का घर है, लाहौर और कराची। और इस्लामाबाद के बाद मैंने सोचा क्यों ना चार्ली तो लाहौर निकल रहे, बड़े प्लेटफॉर्म की तलाश में यहाँ पे लाहौर में स्ट्रगल कर रहा हूँ। अरे वाह, जबरदस्त। तो इधर कुछ खाया भी है आपने? हाँ, लाहौर, यकीन माने कि लाहौर, अब मुझे लगता है, चार्ली तो बिल्कुल श्लिंग है ना, लेकिन अब मुझे लगता है कि लाहौर के टेस्ट जो है ना, वो मुझे थोड़ा सा जो है ना, इतने मजेदार खाने हैं, अब लगता है कि मैं चार्ली थोड़ा सा मोटा हो जाऊंगा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप कभी भी मोटे हो। क्यों जी, जुड़वा बहन है मेरी तू? नहीं, मतलब आपकी सेहत देख के ऐसा लगता है कुछ खाते ही नहीं है, या खाते भी होंगे तो आपको लगता है। एक्चुअली यह ना, मैं वो सोच आती कि जब दिल की मानता हूँ ना, दिल की, तो मैं जो भी हो, जो मेरा दिल करता है वो मैं कर देता हूँ। तो दिल जो है ना आपके लिए है कि दिल जल्दी यार दे छड़िया है, दिल जल्दी यार दे छड़िया है, फिर अणबण की ते अणबण की ते उणबण की, दिल जल्दी यार दे छड़िया है, फिर अणबण की ते अणबण की ते उणबण की, बुक्कल दे विच तान तमूड़ा, फिर तन तन की ते तन तन की ते तुण तुण की, जान जार यार दी छणक मरेंदी, हाय हाय कह दियो, हाय हाय टेस्टी खाने के लिए कह दियो, हाय 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 हाय, जान जार यार दी छणक मरेंदी, फिर छण छण की ते छण छण की ते छुण छुण की, वारिस शाह जद मीर अहमद दा पैंदा, फिर कण कण की ते किण किण की, तैनू की ते मैनू की। लाहौर के बहुत टेस्टी खाने हैं। वाकई लाहौर के बहुत टेस्टी खाने। आप ज्यादा क्या पसंद करते हैं, फास्ट फूड या देसी? मैं देसी। देसी वाले बंदे हैं? यस 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 यस। तो देसी में क्या ज्यादा पसंद करते? देसी में जो चीज़ मतलब अच्छी मिल जाए, जो दिल की बात है ना, तो जो दिल माने वो चीज़ मैं टेस्ट जो भी जैसा भी हो मैं खा लेता हूँ। अच्छा, वैसे खुद भी कुछ बना लेते हैं? मैं, हाँ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਜੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਈਏ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਏ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਪਾਲਸ਼ ਜੁੱਤੀ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਏ ਲਾਗੇ ਸੁੱਤੀ, ਸੁੱਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਂਦਾ, ਚਾਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਆਪ ਤਾਂ ਪੀਂਦਾ ਇੱਕ ਪਿਆਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਭਰ ਕੇ ਮੱਗਾ। ਐਵੇਂ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ मैं बूढ़ी ਦੇ ਥੱਲੇ लगा, बूढ़ी भी तो रब दा जी है, मैं मुझे ना घर के काम मैं खुद ही कर लेता हूँ। अरे वाह, जबरदस्त। अगर आप घर के काम खुद ही कर लेते। अच्छा, अगर आपको किसी सेलिब्रिटी के साथ खाना खाने का मौका मिले, तो वैसे तो आप खुद इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, तो आपको किसके साथ खाना खाना पसंद करेंगे? असल में जो मेरे पास होती है ना चीज़, मैं उसी के साथ जो है ना, जो चीज़ अच्छी लगती है ना, नहीं सच्ची कह रहा हूँ, आप भी तो सेलिब्रिटी हैं ना, आपके साथ में खाना अरे वाह, तो कुछ गाना शाना आता है आपको? जी गाना आता है। अच्छा, आता है, तो गाना सुनाए। अताउल्ला खान का वगदी ये रावी विच सुट्टा कंगना है, सुट्टा कंगना मैं तां लोकां कोलों 10-10 बिल मंगना, वे बोल बिल्ला
ना रोले सानू एवें कंडियां दे विच ना तू तोले सानू वे बोल बिल्ला। साईं ज़हूर आपने सुना है? नहीं मैंने नहीं सुना। साईं ज़हूर को सुनो। हाय 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 हाय। साईं ज़हूर भी मेरे पास आया। वो क्या कहता है? औखे पिंड लमियां ने रावा बेल दियां चार चफेर पइयां दुहाइयां बेल दियां बिलावे बिल्ला बिल्ला हाय बिल्ला। तो ऐसे सॉन्ग में परफॉर्म करता हूँ। अच्छा परफॉर्म कर। थैंक यू। बाय द वे कोई मैसेज वगैरह देना चाहिए? मैसेज वगैरह यही देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, बेशुमार टैलेंट है, लेकिन जो डायरेक्टर हजरात हैं जो पाकिस्तान में जैसे चूड़ियाँ निकी जियाँ वो सैयद नूर वो कहाँ गए? आप भी काम या तो बिल्कुल बंदा काम छोड़ दे यार, नहीं काम करते रहना चाहिए। मैं छोटा चैनल हो बड़ा चैनल हो मैं ये नहीं देखता, मैं कहता हूँ कि काम मैंने देना है सो काम करना है, मेहनत करते रहो स्ट्रगल करते रहो, कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। जी बिल्कुल ऐसा है। बाय द वे थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अच्छे हैं आप? अच्छे हैं मैं भी बहुत प्यारी हूँ माशाल्लाह। आपका नाम? मोहम्मद अरसलान। अरसलान, क्या करते हैं आप? मैं इधर ये स्वीट कॉर्न बेचता हूँ। तो कैसे जा रहा है आपका काम? बस नॉर्मल ही है, अल्लाह का शुक्र है। फिर भी तो कितनी देर से किया आपने ये काम शुरू? हमें इधर हो गए हैं तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं। 7-8 साल हो गए हैं। तो लोगों की क्या रिव्यूज होते हैं? किस टाइप की कॉर्न है आपके पास? हमारे पास ये स्वीट भी होती है और स्पाइसी भी होती है और बच्चों के लिए भी होती है, फ्लेवर्स होते हैं। ये हमारे पास ये 12 फ्लेवर्स होते हैं। इसमें बच्चों की अपनी चॉइस होती है, बड़ों की अपनी चॉइस होती है। हाँ जी। तो ज़्यादातर कौन सा फ्लेवर पसंद किया जाता है? ज़्यादातर हमारा इधर चटपटा बिकता है। चटपटा बिकता है, उसकी वजह खुद आप क्या पसंद करते हैं? खुद मैं बस नॉर्मली पसंद करता हूँ। खुद खाते भी हैं कि नहीं? खाते हैं कभी कभी, हम बना बना के खा लेते हैं। वही बना बना के बंदा अक जाता है खाने का दिन। इसी तरह ही है। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ बना लेते हैं? इसके अलावा जो कुछ चलता है वो बना लेते हैं। वाकई सब बना लेते हैं? हाँ, हम इंसान है, अल्लाह का शुक्र है, हम क्यों नहीं बना सकते? बिल्कुल ऐसा ही है, कोशिश करें तो सब बना सकते हैं। तो कभी बेगम की हेल्प की है किचन में जाके? क्या तुम्हारी हेल्प करती? जरूर करते हैं। वाकई? बेगम इंसान नहीं, उसमें भी छुट्टी चाहिए। हाँ वो भी तो इंसान है ना, उसमें भी जान है। तो क्या अच्छा बना लेते हैं सबसे ज्यादा? जो दिल चाहे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो यही पॉइंट क्यों चूज किया आपने इसके लिए? स्टॉल काम है ना ये कि कोई ऐसे ये पॉइंट क्यों चूज किया? इसकी क्या वजह थी? पब्लिक की वजह से? किस वजह से? पब्लिक की वजह से नहीं, ये काम करते हैं, अबू है मेरे ये काम करते थे, उसके बाद हम करने लग पड़े। अच्छा, बाबा के बाद आपने स्टार्ट? हाँ जी। यही से स्टार्ट? जी इसी तरह। अच्छा, वैसे इस मार्केट का सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है इसको छोड़ के? इसको छोड़ के आगे सब कुछ है, पिज़्ज़ा भी है और छिज्जी भी है, टिक्का भी है, इधर पाया वगैरह भी बहुत मशहूर हैं, सिज्जियाँ भी बहुत मशहूर हैं। अच्छा, तो आपको क्या ज़्यादा पसंद है, फास्ट फूड या देसी? जी, फास्ट फूड ज़्यादा पसंद है या देसी? हमें अपने कारोबार के लिहाज से सब्जी पसंद है। नहीं, कारोबार को थोड़ा साइड पे रखें, अब सोचें। साइड पे रखा हुआ कारोबार क्या गोश्त खा के देखने, पहले तो देखने कि किधर मैं पहुंचा हूँ, ऊपर से मैं गोश्त पसंद करूँ या बर्गर पसंद करूँ, तो ये भी सोचें ना आप। बिल्कुल यही बात है। तो कोई मैसेज वगैरह देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहते हैं कि जो हमारे हुक्मरान हैं हम पे रहम करें। Hello, I'm Robin Ashby. I'm a city councillor, I'm an advisor. I have done a lot of things in my life. Mix some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, Trinidadians and Bajans, with some Ethiopians, Chinese, Vietnamese and Sudanese. There were 282,000 people who came here to study. We can absolutely understand that first generation come here and they're in a strange land where they have to learn new customs and it's cold as well.
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैडम, आप कैसी हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? मेरा नाम मिजाज खोखर मैडम। तो क्या करते हैं आप? मेरी इंस्टॉलमेंट की शॉप है। इधर ही है? नहीं, ये एक बाल्टोन आगे मून मार्केट। अच्छा, तो आप इधर क्या करने हैं? मैं यहाँ से इंस्टॉलमेंट लेने आया था। तो इधर का खाने पीने में क्या ज़्यादा अच्छा? मैडम यहाँ की ना सब भी खाने अच्छे हैं। यहाँ पे बहुत मशहूर है सज्जी वगैरह। सज्जी होगी, ये पीछे है रखे वाले, यहाँ पे कढ़ाई बहुत इनकी अच्छी है। बहुत अच्छे खाने हैं इनके, मेयार भी अच्छा है और खाना भी अच्छा देते हैं। तो वैसे आप देसी पसंद करते हैं फास्ट फूड? नहीं जी, देसी देसी वाले बंदे हैं आप? हाँ जी। देसी में क्या ज़्यादा अच्छा लगता है? कढ़ाई। कढ़ाई क्यों? बस मीट ज़्यादा शौकीन करते हैं हम। खुद भी कुछ बना लेते हैं आप? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या बना लेते हैं फिर बताएं मुझे। बस रोटी के अलावा सब कुछ। रोटी के अलावा सब कुछ, मतलब क्या है बस रोटी बना? रोटी नहीं बनानी आती, सालन वगैरह सारे बना लेते हैं। बाकी सब बना लेते हैं, रोटी बाकी सब बनाए। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। तो फैमिली में क्या ज़्यादा आपका पसंद किया जाता है? मीठा ज़्यादा खाते हैं। मीठा ज़्यादा खाते हैं, उसकी वजह? मीठे में क्या वैसे? गाँव में ज़्यादा लोग रहते हैं, खीर कस्टर्ड वगैरह हो गया, ज़्यादा शौक से खाई जाती है। अच्छा, वैसे आप हैं किधर से? मैं जी बेसिकली मैंने तलीम तो यहाँ से हासिल की है, लेकिन मैं हूँ पीछे गाँव का, पाक पतन शरीफ का। अच्छा, तो उधर की कौन सी ऐसी डिश है जो आपको लगता है कि सबको लाजमी ट्राई करनी चाहिए? वहाँ की जी अहमद कार्नर की फ्रूट चाट बड़ी मशहूर है। मिठाई? हाँ जी, फ्रूट चाट मुझे लगता है वो है ही मीठा और बंदा ही मीठा। अच्छा, वैसे कौन सी ऐसी डिश थी जो मैं बचपन में ज़बरदस्ती खिलाया करती? याद नहीं है। याद नहीं है? हाँ जी। ज़बरदस्ती वाली तो चीज़ हर एक को याद होती। नहीं, हम खा लेते थे। कभी खानदान में किसी की झूठी तारीफ की है? नहीं जी, बात सीधी मुंह पे मारते हैं। सीधी? हाँ जी, चाहे गुस्सा लगे चाहे जो भी। तो जो नहीं पसंद वो बस नहीं पसंद? हाँ जी, जरा नहीं पसंद तो नहीं पसंद। अच्छा, गाना शाना आता है? नहीं जी। नहीं आता? अच्छा, वैसे आपकी स्कूल लाइफ ज़्यादा अच्छी थी या कॉलेज लाइफ? कॉलेज लाइफ। कॉलेज लाइफ, उसमें क्या ऐसा था जो ज़्यादा अच्छी? वो जरा बंदा थोड़ा सा समझदार हो जाता है ना, पता चल जाता है। यहाँ पे पंजाब कॉलेज में अपने नीमत। तो तब दोस्तों के साथ कोई ऐसी मेमोरेबल जो अभी तक आपको याद हो? अभी शादी हो गई है। तब की बात है। तब की बात है, तब ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ट्रैवलिंग वगैरह हर चीज़ की है दोस्तों के साथ। तो कोई एक ऐसी फनी जो मेरे साथ शेयर करे? क्या आपके साथ शेयर करूं? एक दफ़ा जी हम चले गए थे मरी, हमें कमरा नहीं मिला था, रश बहुत था और बस फिर रोडों पे दलील होने पड़ा। रोडों पे ही हो के वापस आ गए? नहीं, फिर सुबह तक मिल गया था, लेकिन वो नहीं भूलते हम। सारी गाड़ी में गुजर? हाँ जी। ज़बरदस्त हो गया। तो क्या शेर शायरी आती है? हाँ जी, करते हैं पंजाबी में। चले, कोई बात नहीं, सुनाए आप मुझे शेर। साडी गली चों एक नवाब लंघदा है ते मूंह ते करके नकाब लंघदा है, या ते सानू जानदा ही नहीं या पी के शराब लंघदा है। उहदे जान तो बाद गली चों इंज खुशबू आंदी है जिवें गली चों गुलाब लंघदा है। सानू तो सोहना पढ़ने पा गया जिहड़ा सीने नाल ला के किताब लंघदा है। अरे वाह, जबरदस्त जबरदस्त हो गया। बाय द वे, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, ठीक। आपका नाम? फैज़ान। क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पे स्टॉल है मेरा जीन्स पैंट का, लेडीज़। ओ ज़बरदस्त। तो कैसा जा रहा है आपका काम? जी शुक्र अल्लाह पाक का। तो कितनी देर से कर रहे हैं आप ये काम? मुझे 10 साल हो गए। 10 साल? यहीं से स्टार्ट किया? जी। इससे पहले कोई और कर रहा था या आपने ही 10 साल किए? नहीं, मैं पहले किसी के साथ करता था, अब अपना कर रहा हूँ। अच्छा, पहले कहाँ करते थे? पहले मार्केट में करता। इधर ही? इधर से स्टार्ट किया? जी, इधर से। अच्छा, इधर का बेहतरीन खाना कौन सा है? इधर का बेहतरीन खाना ये कॉटेज बर्गर है, क्रीम लो गोल चक्कर पे, फास्ट फूड के नाम से। मैंने तो जब भी उधर से खाया है बर्गर, बहुत अच्छा बर्गर है। अच्छा, यानी आप फास्ट फूड लाइक? हाँ जी, फास्ट फूड। अच्छा, खुद क्या क्या बना लेते हैं आप, मुझे ये बताएं। खुद मैं अंडा ब्रेड ही बना लेता हूँ और चाय बना लेता हूँ। इतना ही बड़ा है अपने लिए? हाँ जी, इतना ही। इतना सीखना बड़ा है। हाँ जी। अच्छा, मम्मा के हाथ का क्या बना हुआ ज़्यादा पसंद? मम्मा के हाथ का, मम्मा कुछ भी बना ले, सब कुछ अच्छा बनता है। सब कुछ अच्छा बनता है? वाह जी। कौन सी ऐसी डिश है जो अम्मा ज़बरदस्ती खिलाती हैं? अम्मा नहीं, अब जबरदस्ती। अम्मा पहले खिलाती थी। हाँ, वही जो पहले। शादी हो गई है, अब आपकी भाभी खिलाती हैं जबरदस्ती। अच्छा, वो कौन सी डिश जो जबरदस्ती खिलाती है? वो सब कुछ जबरदस्ती खिलाती है। वो कहती है बस खाया पिया करो। अच्छा, इनके हाथ का कुछ भी अच्छा नहीं लगता? इनके
आपकी वाइफ क्या क्यों, उनके हाथ का अच्छा लगता है, वही वो जबरदस्ती क्यों खिलाती हैं? बस वो कहती हैं सेहत बनाओ अपनी, खाओ पियो, खाओ पियो ऐश करो। ऐश करो। तो ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, अगर आपको मौका मिले कि मुख्तसर वक्त के लिए आप जिन बन सकते हो तो कौन सी ऐसी शख्सियत होगी जिससे आप डराने जाएंगे? नहीं, अल्लाह माफ करे, जिन क्यों बनना है। नहीं 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 नहीं, सोचें अगर आप बन जाएं तो किसको आप डराना चाहते हैं? आपको ही डराऊंगा सबसे पहले। अब मुझे क्यों डराएंगे, इसकी कोई खास वजह? कि आप नहीं सवाल किया। क्या मतलब, जो सवाल करेगा सवाल का जवाब उसी पे? जो जिन मुझे बनाना चाह रहा है मैं उसी को ही डराऊंगा ना। जो बनाएगा ना वो डरेगा नहीं। अच्छा जी, चले अम्मी को डरा लूंगा अपनी। ठीक है, अम्मी को डराएंगे। तो गाना वाना आता है आपको? गाना गाना जी आता है। चले, जबरदस्त हो गया, तो गाना सुनाए। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया, दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे, मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या करूं ऐ दिलरुबा, बुरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया, मैंने सदा चाहा यही, दामन चुरा लूं हसीनों से मैं, तेरी कसम खा दिल में जो, बचता फिरूं नाज़हीनों से मैं, तेरी कसम मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या करूं ऐ दिलरुबा। ठीक है, ठीक है, जबरदस्त। बाय द वे, थैंक यू सो मच। गाने का मजा ही नहीं आया, नहीं तो मैं आपको अच्छा आया, मजा आया। बाय द वे, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? उमर भट्ट। उमर भट्ट, क्या करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर हाउस में काम करता हूँ। अच्छा, तो कैसे जा रहा है आपका काम? अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी फाइन। अच्छा, तो कब से कर रहे हैं आप ये काम? मुझे तकरीबन 6 साल हो गए करते हुए। 6 साल हो गए हैं। तो इधर क्या कर रहे हैं? इधर वैसे शॉपिंग के लिए आए हैं। अच्छा, वैसे इधर का फेमस फूड क्या है, क्या ज़्यादा पसंद करते हैं इधर? इधर तो पिज़्ज़ा वगैरह ही है, फास्ट फूड ही है ज़्यादातर, शवारमा, बर्गर वगैरह, पिज़्ज़ा वगैरह। वैसे आप फास्ट फूड ज़्यादा पसंद करते हैं देसी? मैं देसी फूड ज़्यादा पसंद करता हूँ। अच्छा, इसीलिए आपने फास्ट फूड में थोड़ा इस तरह जी जी, ऐसा ही है। अच्छा, वैसे आप खुद भी कुछ बना लेते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कुकिंग भी सीखी हुई है। माशाल्लाह। तो क्या क्या ज़्यादा अच्छा बना लेते हैं? मैं कढ़ाई गोश्त अच्छा बना लेता हूँ, उसके बाद आम जो सब्जियाँ सभी बना लेता हूँ। बना लेते हैं। तो फैमिली में सबसे ज़्यादा क्या माना जाता है कि इसके हाथ का बहुत अच्छा है? वाइट चने। वाइट चने, वो आपके हाथ के बहुत अच्छे हैं। किस टाइप के बनाते हैं जो बहुत अच्छे हैं? मैं जिस तरह कह ले कि चिकन चने वगैरह होते हैं उस टाइप के बनाता हूँ। उस टाइप के बना लेते हैं। वैसे मम्मा आपकी सबसे ज़्यादा अच्छा क्या बना लेते हैं? वो कड़ी वगैरह बड़ी अच्छी बनाती हैं, उसके बाद साग वगैरह, गोश्त वगैरह बड़ा अच्छा बना लेती हैं। यही चीज़ें जो आप। अच्छा, छोटे होते कौन सी डिश थी जो मैं ज़बरदस्ती खिलाया करती? कह सकते हैं कि कद्दू शरीफ जो है वो ज़रा, जी जी ऐसा ही है। सबको कद्दू शरीफ ही लड़ते हैं? जी जी ऐसा ही है। इसकी कोई वजह, इसकी क्या वजह है जो कद्दू शरीफ सबको ही लड़ते हैं? वजह तो कोई भी नहीं है, बस ये है कि ज़्यादा नहीं बच्चे पसंद करते हैं इन चीज़ों को, बच्चे फास्ट फूड पसंद करते हैं, नूडल्स वगैरह इन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं इस वक्त। अच्छा, किसी एक सेलिब्रिटी के साथ खाना खाने का मौका मिले तो वो कौन से सेलिब्रिटी हो? मैं माया अली के साथ। माया अली के साथ, वो फेवरेट है, उनकी कोई वजह जो इस वजह से वो आपको ज़्यादा पसंद? एक्टिंग बड़ी अच्छी है उनकी, एक्टिंग की वजह से। वो तो माहिरा खान की भी बहुत अच्छी। नहीं, वो उनकी ज़्यादा, उनकी स्किलिंग ज़्यादा है। वही सही है, लेकिन मुझे तो नहीं अच्छी लगती है। अपनी अपनी पसंद की बात, अपनी पसंद की बात होती है। तो वैसे आप हर मामले में, मतलब ज़्यादातर मामलों में दिल के सुनते हैं दिमाग? मैं दिल की सुनता हूँ। अच्छा, दिल के सुनते हैं, दिमाग को साइड पे रखा हुआ है? ऐसा ही है। क्यों दिमाग को किस साइड पे रखा हुआ? शायर बंदे जो होते हैं वो दिमाग ही नहीं सुनते, वो दिल की सुनते हैं। दिल के सुनते हैं, दिमाग को साइड पे रख। जी जी ऐसा ही। अच्छा, तो आप शायर बनते? जी कह सकते हैं शायरी। ये तो ज़बरदस्त है। चलें फिर मुझे कोई शेर सुना दो। तुम हकीकत नहीं हो, हसरत हो, जो मिले ख्वाब में वो दौलत हो,
तुम हो खुशबू के ख्वाब की खुशबू और इतने ही बेमुरवत हो। तुम हो पहलू में पर करार नहीं, यानी ऐसा है जैसे फुरकत हो। किस तरह भुला दूं तुम्हें जाना, तुम मेरी जिंदगी की आदत हो। किस लिए देखते हो आईना, तुम तो खुद से भी खूबसूरत हो। दास्तान खत्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। अरे वाह, जबरदस्त हो गया, शेर अच्छा था। बाय द वे, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम जी, बहुत शुक्रिया। Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a Repicharge facial then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London lash patch test on her. She was absolutely fine with London lash. So I used the London lash. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। मैं भी ठीक, अलहमदुलिल्लाह। आपका नाम? शहरियार। शहरियार, क्या करते हो? मैं ऑनलाइन का बिजनेस करता हूँ। ऑनलाइन बिजनेस? तो कैसा बिजनेस ऑनलाइन? ठीक है, अपनी वेबसाइट है। अपनी वेबसाइट है, तो कब से कर रहे हैं आप ये काम? ये मुझे 4-5 साल हो गए हैं। 4-5 साल ऑनलाइन में ही स्टार्ट किया था आपने? जी, ऑनलाइन में किया था। वैसे मैं गाड़ी भी चलाता हूँ उबर क्रीम पे ना, पार्ट टाइम उबर क्रीम पे। ये कब स्टार्ट? ये 2 साल पहले। 2 साल पहले। अच्छा, वैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ कि स्कूल का टाइम ज़्यादा अच्छा था या कॉलेज का? मेरा बचपन में स्कूल का ही था। अच्छा, स्कूल का ही था। तो स्कूल की कोई ऐसी मेमोरी जो अभी तक याद हो? मेमोरी ऐसी है कि एक दफ़ा ना स्कूल में बहुत अच्छी यादें। अब मैं कौन सी बताऊँ आपको? कोई एक बता दें, बहुत सारी होंगी ना, तो एक बता दें। ऐसा था कि स्कूल मैं गया था सुबह, एक बहुत देर पहले की बात है। मैं स्कूल से फुटा मार लिया था मैंने। फुटा मार लिया था। फुटा वो क्या था? वो मतलब बैंक हूँ मैं। तो मैं स्कूल, घर वाले की नज़र में ये था मैं स्कूल गया हूँ, लेकिन मैं स्कूल पहुँचा नहीं था। जी, मैं इसके साथ पार्क पहुँचा हुआ था। पता नहीं चला आपके घर वालों? पता चला है। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे बहुत मारा पीटा है, बहुत ज़्यादा खून भी निकला है मेरा। उसकी वजह से फिर मैंने आज तक फुटा नहीं मरा। वो सबसे ज़्यादा यादगिरी है मेरे लिए। वो आप डिजर्व करते थे बाद में मार जो थी ना, इस टाइप की मार डिजर्व। जी जी। अच्छा, वैसे खाने में इधर का सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मुझे जो फ्री में मिल जाए।
प्रीमियम की बात नहीं हो रही। वैसे इधर का फेमस क्या है? इधर का फेमस कुछ भी नहीं है, इतना ख़ास नहीं है, लेकिन करीम मार्केट थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, रखा है, उनके पाए बहुत अच्छे हैं। पाए बहुत अच्छे हैं, वो फेमस हैं। तो आपने उधर के ज़्यादा अच्छे लगते हैं आपको? जी, उधर के ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा, वैसे फास्ट फूड या देसी ज़्यादा क्या पसंद है? देसी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। देसी? आप किधर से हैं वैसे? मैं लाहौर से हूँ। अच्छा, लाहौर से हैं। तो देसी में क्या ज़्यादा पसंद करते हैं? देसी में तंदूरी चिकन, खुद जो घर बना होता है, किसी पॉइंट का नहीं? नहीं, क्योंकि वो मेरे घर वाले भी देसी हैं ना। तो आप खुद भी कुछ बना लेते हैं? जी, मैं अंडा फ्राई कर लेता हूँ। बस अंडा फ्राई? चाय बना लेता हूँ और बिरयानी यूट्यूब से देख के बना लेता हूँ। टूर पे जाए ना तो हम खुद ही खाना बनाते हैं। खुद ही खाना फ्रेंड्स वैसे सबसे ज़्यादा घूमना किसके ज़्यादा पसंद है, फ्रेंड्स या फैमिली? वो सामने खड़ा है, उधर कैमरा मार के देखें, वो उसके साथ बचपन का यार है मेरा, एक ही बस। अरे यार, तो उसी के साथ घूमना पसंद? उसी के साथ घूमना पसंद है। तो आप बस दो ही दोस्त हैं? जी, सिर्फ 2 दोस्त हैं। अरे वाह, तीसरा कोई आना भी नहीं? आना भी नहीं। अच्छा, किसी अगर सेलिब्रिटी के साथ खाना खाने का मौका मिले तो वो कौन सी सेलिब्रिटी? मरियम नवाज। मरियम नवाज के साथ? वजह उनके साथ खाना खाने? वो मेरी अच्छी लीडर है, हम सारी फैमिली उनको सपोर्ट करती है। मरियम नवाज नून लीग के सपोर्ट? जी जी, हम। अरे वाह, तो गाना शाना आता है आपको? गाना शाना आता है, लेकिन ये सही सुनाएगा। वो आपके साथ क्या गाना सुनाने के लिए खड़ा है? वैसे पोइट्री शोइट्री आती है आपको? पोइट्री शोइट्री नहीं आती, लेकिन इस मामले में ज़ीरो, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहा हूँ। अच्छा, चले कोई बात नहीं, आप कोई मैसेज ही दे दें फिर। मैसेज यही देना चाहूँगा, क्योंकि आजकल हालात बहुत डाउन हुए हैं हर किसी के, तो यही कहना चाहूँगा कि हालात, हमारे जो लीडर है मरियम नवाज़, उससे गुजारिश है कि हालात ठीक हो, वो हमारे लिए कोई बेहतरी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें वो। और जो ये मुल्की हालात चल रहे हैं, जॉबें नहीं हैं लोगों के लिए, मैं भी फ्री फिर रहा हूँ, अपना बिज़नेस कर रहा हूँ। ये ना करता तो मैं डेड था, क्योंकि मैंने ICS किया हुआ है, तो मैंने गवर्नमेंट जॉब भी अप्लाई किए हैं, रिश्वत वगैरह काम नहीं हो रहा। ये निज़ाम ठीक हो जाएगा ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही आपका मैसेज? चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। हाँ, ज़बरदस्त जवाब दे दिया, वरना मैं भी यही बोलने वाली थी कि सलाम बोले, मैंने जवाब दिया। अच्छा, आपका नाम? गुलफाम खान। गुलफाम, क्या करते हैं आप? बेरोजगार। हैं? बेरोजगार। बेरोजगार, कुछ नहीं करते? वेले। वेले। तो ये ग्लासेस की क्या लॉजिक है, ये क्यों लगाई? सन ग्लासेस हैं, उसके सन की वजह से? ग्लासेस ही हैं, सन ग्लासेस हैं। सन ग्लासेस हैं, तो ये लगाने की अभी वजह, अभी तो सनसेट है ही नहीं। सनसेट है क्यों नहीं है, सन अभी निकला तो वह सनराइज हुआ हुआ नहीं है। ओ मैडम, आपको पता ही नहीं है। नहीं है, तो फिर ये लगाने की वजह। और ये आपके बाल कहाँ गए? ये फैशन है। ये फैशन, हाँ हमारे कैमरामैन ने भी ये फैशन किया। मैं यूके से आया हूँ, इसलिए इस तरह का स्टाइल रखा हुआ है। जबरदस्त। तो इधर की कौन सी डिश जो अच्छी है? यहाँ की सिर्फ एक ही देसी डिश है जी, देसी मुर्ग, बस मुझे वो अच्छा लगता है। अच्छा, यानी आप देसी वाले बंदे? हाँ, देसी वाला। और वैसे मुझे इटालियन फूड बहुत अच्छा लगता है, और अगर आप उसमें जाएं, दुम्बा कढ़ाई बहुत अच्छी लगती है मुझे। मैं देसी पठान हूँ ना, तो वो दुम्बा बड़े शौक से खाता हूँ। अच्छा, तो आप किधर से हैं फिर? मैं पेशावर से। पेशावर, यानी उधर का दुम्बा ही जो है वो ज़्यादा अच्छा है? नहीं, वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। मैं खाने पीने के हवाले से बात कर रही हूँ। नहीं, दुम्बा बहुत अच्छा वहाँ का। आप खुद को क्या क्या बना लेते हैं? खुद भी कुछ बनाना आता है? मैं एक तो बेवकूफ़ बना लेता हूँ जल्दी से, और दूसरा मुझे चाय बहुत अच्छी बनाना आती है, और मैं स्टेक बहुत अच्छा बनाता हूँ। ये भी मुझे बेवकूफ़ ही बना रहे हैं? नहीं, आप स्टेक और चाय बना लेते हैं? स्टेक मुझे बनाना आता है, बहुत अच्छा बनाना आता है। बेवकूफ़ नहीं बना रहे? नहीं, बेवकूफ़ नहीं बना रहा मैं, जो हमारी फील्ड के होते हैं उनको बेवकूफ़ नहीं बनाता। आपकी भी फील्ड यही है? हाँ, मीडिया ही है मेरी फील्ड में। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, अगर आपको किसी सेलिब्रिटी के साथ खाना खाने का मौका मिले तो वो कौन से सेलिब्रिटी होंगे? अब वो तो मैं खुद सेलिब्रिटी हूँ, और दूसरा मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है मेरी जान इमरान खान। माशाल्लाह, तो यानी आप उनके साथ खाना खाने चाहेंगे? नहीं, मैं उनके साथ मिल भी लूँ तो काफ़ी है। मिल भी लें तो काफ़ी है। अच्छा, वैसे आपको ये खुशफहमी कहाँ से हुई कि आप सेलिब्रिटी हैं? मैं बचपन से गुलफाम खान हूँ, और गुलफाम खान सेलिब्रिटी है। अच्छा, गुलफाम खान से? नाम शहजादा गुलफाम खान है। चलो, मैं तो नहीं जानती आप जैसी सेलिब्रिटी को। बिल्कुल ऐसे ही। तो गाना शाना आता है आपको? उन्हीं गाने कहाँ आते हैं पठानों को? पठानों लड़ाइयाँ आती हैं, या भाई इस तरह की चीज़ें आती हैं पठानों को, लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ आती हैं, गाने शाने कोई नहीं आते। अच्छा, और शेर शायरी भी नहीं आती? और नहीं जी, हम लोग लव कब करते हैं, हम लोग सिर्फ दुश्मनदारियाँ करते हैं। दुश्मनों के लिए भी कुछ नहीं? दुश्मनों को भी हम लोग नस्ल देख कर दुश्मन बनाते हैं, देखते हैं अगला बंदा कितनी पावर वाला है, उस हिसाब से उसको देखते हैं। अच्छा तो कोई मैसेज वगैरह?
पाकिस्तान से मोहब्बत करनी चाहिए, लेकिन ये हमारे हुक्मरानों ने, हमारे अदारों ने, हमारे अशराफिया ने हमें इस काबिल छोड़ा नहीं है कि हम लोग पाकिस्तान में रहना पसंद करें। हमारा दिल करता है हम पाकिस्तान में रहें, क्योंकि हमारा जीना मरना पाकिस्तान है, लेकिन इन अशराफियों की वजह से 97% पाकिस्तानी इस मुल्क को छोड़ कर जाना चाहते हैं, जो कि एज अ पाकिस्तानी शर्म का काम है। और ये मेरा एक तो सबको जश्न आज़ादी मुबारक, दूसरा हमें पाकिस्तान से लव करना चाहिए। खास तौर पर मैं शाफिया को कहना चाहूँगा कि खुदा का वास्ता है, अपनी हटधर्मियाँ, अपना रामखोरियाँ ये सब बंद करें। ये मुल्क आपके बाप का नहीं है, ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क अवाम का है। और ये आप लोगों ने तो लंदन भाग जाना है, आप लोगों ने स्विट्ज़रलैंड भाग जाना है, सरे महल है, फिर लंदन में एवन फील्ड्स हैं, और पता नहीं क्या क्या आप लोगों ने बनाया हुआ है। लेकिन ये पाकिस्तान पाकिस्तानियों का है। आप लोग पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं कि असर ही नहीं होता आप लोगों को। अवाम रुल गई है, खुद खुशियों पे मजबूर हो गई है। मेरा ये मैसेज है शाफिया को। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और क्या करते हैं आप? इधर हम सोडा बेचते, नींबू पानी बेचते और इमली शरबत बेचते। तो क्या ज़्यादा पसंद करती है पब्लिक? पब्लिक ज़्यादा इमली पसंद करती है। इमली पसंद करती है, उसकी वजह? उसकी वजह ये मैदे के लिए भी ठंडक देते हैं और बुखार के लिए भी और यरकान के लिए भी अच्छा होता है। अच्छा, मौसम के हिसाब से तो फिर चेंज होगा ना, सर्दियाँ आएंगी तो चेंज होगा, तो सर्दी में आप क्या करेंगे? सर्दी में इंशाल्लाह हमने इरादा किया भी मौसमी का और मीठे का, इसके बाद मीठा शुरू होगा। अरे वाह, ज़बरदस्त। बुखार के लिए भी अच्छा होता है और वैसे गाहक भी ज़्यादा पसंद करते हैं। ज़बरदस्त। तो आपका नाम क्या है? मैंने पूछा नहीं है। शाह फैसल। आप किधर से हैं वैसे? हम बाजोड़ के। अच्छा, उधर की कौन सी ऐसी डिश है जो आपको लगता है लाजमी ट्राई करनी चाहिए? फेमस डिश कौन सी है उधर? उधर की फेमस डिश होते हैं, मिठाई होते हैं, रजड़ का जो मशहूर मिठाई है, जलेबी होते हैं, और उधर का फल फ्रूट ज़्यादा होते हैं। अच्छा, आलू बुखारा, अंगूर, ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। अच्छा, वैसे आप खुद क्या ज़्यादा पसंद करते हैं, फास्ट फूड या देसी? हम ज़्यादा आम पसंद करते हैं। आम, फ्रूट ज़्यादा पसंद करते हैं। उसकी वजह? उसकी वजह क्योंकि वो हड्डी के लिए भी ताकत होती है और इसका मिठास ज़्यादा होती है। वो फलों का बादशाह है, तो करते हैं क्योंकि आम ज़्यादा होते हैं तो और फ्रूट ज़्यादा नहीं बिकते। हर लोग, हर बंदे आम पसंद करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये मार्केट का सबसे अच्छा क्या है खाने में? मार्केट में सबसे अच्छा तो दाल चावल इधर का ज़्यादा अच्छा है। बाकी तो गारमेंट का मार्केट है, इधर तो लोग ज़्यादातर ख़रीदारी के लिए गारमेंट के लिए आते हैं। तो हमने इसके इधर सोडा लगाई है साथ, अभी तो इसका सीज़न जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह भी मौसमी का बंदोबस्त कर रहे हैं, मौसमी लगाएगा क्योंकि लोग ज़्यादा शौक से पीते हैं। अच्छा, वैसे आप खुद भी कुछ बना लेते हैं? खुद भी कुछ बना लेते हैं? हमने पिछले सर्दी में लगाया था सीख की टिक्का कबाब लगाया था, और इंशाल्लाह फिर भी इरादे है साथ मौसमी के साथ वो टिक्का कबाब लगाएंगे। तो आप ज़्यादा अच्छा क्या बना लेते हैं? हम ज़्यादा अच्छा टिक्का ज़्यादा अच्छे बनाते हैं, और ये शेक का हमारा ज़्यादा शौक है, फलों का ज़्यादा हम शेक बनाते हैं क्योंकि हमारा पिछले भी दुकान था वो ख़त्म हुई। अभी इंशाल्लाह इरादा है फिर जूस का दोबारा बना लेंगे। अच्छा, वैसे आप ज़्यादातर मामलों में दिल की सुनते हैं या दिमाग की? दिल के सुनते हैं। दिल के सुनते हैं, क्यों? दिमाग की क्यों नहीं? न, दिमाग की सोचते हैं फिर दिल का सुनते हैं, क्योंकि दिल भी बादशाह है बदन का। वो मशवरा देगा तभी बात मानने जाते हैं। जब दिल मशवरा नहीं देते तो दिमाग जितने भी सोचेगा तो नहीं मानेगा, तो कोई फायदा नहीं। तो कोई मैसेज वगैरह दे दें? मैसेज वगैरह हम ये देते हैं जो हमारा खान साहब बाहर आ जाए, ये पूरी मुल्क के लिए और हम सब आवाम के लिए इंशाल्लाह ऊपर पूरी उम्मीद है, और पूरी आवाम के लिए, पूरे मुल्क के लिए वो बड़ा खैर ख्वाह है। हमारा मैसेज है जो बाहर आ जाए, अब इंशाल्लाह वो वज़ीर आज़म बन जाए तो इंशाल्लाह पूरी आवाम खुश होगी और सेहतमंद होगी, कारोबार भी अच्छे होगी, मुल्क भी तरक्की पे चलेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। बाय द वे, थैंक यू सो मच। Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, oh, great idea, oh, bahut vadiya.
The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal and where it's contract, take your time. My name is Terence South. I formerly served in the British Army. We had to go down as the muscle squad and come on, you come with us. She not let us go, we're fighting. No. I could communicate, I had all the skills for the wirelesses, the radios. I could do that, that was no problem. I could do that blindfolded. Second World War, understood where you were and what you were doing, where your head was. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आपका नाम? शबाज। क्या करते हैं आप? ये लेमन सोडे का काम। कितनी देर हो गई आपको ये काम करते? तकरीबन 2 ईयर। अच्छा, 2 साल हो गए। तो कैसे जा रहा है आपका काम? शुक्र अल्लाह पाक। शुक्र अल्लाह पाक। यहीं से स्टार्ट किया? नहीं, मैं वैसे दूसरा काम करता हूँ एडवर्टाइज का। अरे ज़बरदस्त हो गया। तो वैसे इधर का मार्केट का कौन सा खाना ज़्यादा अच्छा लगता है आपको? मार्केट में सभी खाने अच्छे हैं, जैसे जेब इजाज़त दे वैसे ही अच्छे हैं। नहीं, वैसे फास्ट फूड या देसी? नहीं, मैं पेंडू हूँ, मुझे तो देसी चाहिए ना। नहीं नहीं, वो भी डिपेंड नहीं करता, मूड पे डिपेंड करता है कि ज़्यादा अच्छा करता है। मैं ज़्यादातर देसी खाता हूँ, रोटी। देसी पसंद करते हैं? देसी में क्या ज़्यादा पसंद करते हैं? देसी में यही रोटी, दाल चना ये वो वगैरह। अच्छा, ज़्यादा खुद भी कुछ बना लेते हैं या फिर बस घर का बना लेता हूँ। अच्छा, बना लेते हैं। क्या क्या बना लेते हैं? मैं बिरयानी बना लेता हूँ, उसके बाद साग बना लेता हूँ, चिकन बना लेता हूँ, चिकन कौरमा बना लेता हूँ, बीफ मटन सभी बना लेता हूँ। सभी बना लेते हैं। फैमिली में क्या ज़्यादा अच्छा जो आपका पसंद किया जाता है? फैमिली में मुझे मटर कीमा। मटर कीमा। तो कभी फैमिली में किसी के खाने की झूठी तारीफ की है? नहीं। नहीं, जो होता है सब बोल देते हैं। अगर पसंद नहीं आया तो बोल देंगे नहीं पसंद आया? मैं झाड़ कर देता हूँ उनकी। अल्लाह, तो ये तो इंसल्ट हो जाती है। कोई बात नहीं, अगर नहीं अच्छा बना तो कोई बात नहीं। अच्छा, नहीं वो नेक्स्ट टाइम जो है अच्छा बनाएंगे। हाँ जी, बताएंगे तो अच्छा। नहीं, वो बता देता हूँ ना कि ये एक चीज़ की कमी है इसमें। अच्छा, वैसे अगर किसी सेलिब्रिटी के साथ खाना खाने का मौका मिले तो वो कौन से सेलिब्रिटी होंगे? मेरी वाइफ। अच्छा, वाइफ के साथ ही खाना खाना। अच्छा, वाइफ आपकी सबसे अच्छा क्या बना लेती हैं? वो बिरयानी। बिरयानी ज़्यादा अच्छी बनाती है। बाकी सब एवं? हाँ जी, एवं ही है सब। बाकी सब एवं ही है। और फिर वो ये खाने बनाती है कि शैतान भी पनाह मांग लेंगे। ये अगर आपकी वाइफ ने देखा तो नेक्स्ट टाइम से घर नहीं घुसने देंगी, इधर ही सोना पड़ेगा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, वो ऐसी नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं ऐसे खाने बनाती हैं कि शैतान भी पनाह मांगता है। क्यों ऐसे क्यों खाने बनाती है? बस वो पढ़ी लिखी ज़्यादा थी, इसी वजह से वो घर के काम काज में इतनी इंटरेस्ट नहीं रखती थी। और वैसे आपको ज़्यादा अच्छा क्या लगता है इस मार्केट का खाने में? ये चने। चने, इसकी वजह? बस वो अपना जायका है उनका। अच्छा, वैसे आप ज़्यादातर मामलों में दिल की सुनते हैं दिमाग की? दोनों की। दोनों की मैनेज करके चलते हैं? जी। क्यों ऐसा क्यों है, एक की सुना करें? नहीं, एक की क्यों सुनूं,
जो दिल कहता है कभी वो नहीं होता, जो दिमाग कहता है कभी वो हो जाता है। ज़्यादातर दिमाग सही रहता है। ज़्यादातर दिमाग, क्योंकि दिल इंसान का होता है, वो कभी इंसान को गलत राह पे भी ले जाता है, जैसे इश्क वगैरह हो गया, ऐसे गलत राह में ले, हाँ गलत राहों में ले जाता है। दिमाग में अगर सोच कर चले तो फिर इंसान गुनाह में नहीं मुबतला होता। अच्छा, पिछले साल की बड़ी कामयाबी क्या थी? पिछले साल की बड़ी कामयाबी यही थी कि पिछले साल की बड़ी कामयाबी यही थी कि मैंने जॉब ट्राई की थी। अच्छा, तो फिर वो हो गई थी, पक्की हो गई थी। ये आपकी बड़ी कामयाबी थी पिछले साल। और इस साल क्या कारनामा करने का आपका इरादा है? इस दफ़ा मैं ये काम शुरू किया है एडवर्टाइज का, ये जो दुकानों की मशहूरी वगैरह नहीं देते, इसका काम शुरू किया है मैंने। वैसे आप हैं किधर? जी मैं बुरे वाला था। तो उधर की कौन सी ऐसी डिश है जो आपको लगता है लाजमी ट्राई करनी चाहिए? उधर की सबसे ज़्यादा बेस्ट है साग। साग, उधर का साग अच्छा है जी। अच्छा, गाना शाना आता है? गाना तो आता है लेकिन मैं ज़्यादातर इस्लामिक बेस पे होता हूँ। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आप कोई मैसेज दे दें। मैसेज क्या दूँगा आवाम को? आवाम पहले ही इतनी दुखी हुई है कि उन्हें हौसला दे दें। हौसला यही है कि सब्र करें, घबराना नहीं। घबराना नहीं है, सबसे पहले घबराना नहीं है। बाय द वे, थैंक यू सो मच। ओके, नाइस टू मीट यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? वकार। वकास? वकार। अच्छा वकार, क्या करते हैं आप? मैं पाकिस्तान नेवी से हूँ। अच्छा, तो कैसे जा रहा है फिलहाल आपका काम या कुछ जो भी करें? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। तो इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले मैं स्टडी करता था। स्टडी करते थे, तो कौन सी लाइफ ज़्यादा अच्छी थी, कॉलेज लाइफ या फिर यूनी या फिर स्कूल? ऑफ कोर्स के कॉलेज लाइफ। कॉलेज लाइफ क्यों? क्योंकि वहाँ पे टेंशन कोई नहीं होती, बस स्टडी की और घर के बस काम शाम एंजॉय किया। अच्छा, दोस्तों के साथ एंजॉय? बिल्कुल। तो कोई ऐसी मेमोरेबल स्टोरी जो अभी तक आपको याद हो अपने फ्रेंड्स के साथ? बस यही, जो हम कज़न वगैरह इकट्ठे होते हैं तो वो जो शुगल मेला होता है, वही सब कुछ है। अच्छा, वैसे इधर किसके साथ हैं? इधर मैं कज़न के पास आया हूँ, मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, फैसलाबाद से हैं आप? 14 अगस्त के लिए कज़न के पास आया हूँ। तो फैसलाबाद की कौन सी ऐसी डिश है जो आपको लगता है लाजमी ट्राई करनी चाहिए? फैसलाबाद में फोकन नाइव है, वो बहुत टेस्ट है उसका पिज़्ज़े का, और ये स्टोन ओव है, उसका भी बहुत ज़्यादा टेस्ट है। तो इधर इस मार्केट का क्या अच्छा है ज़बरदस्त? इस मार्केट में मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि अभी तक कुछ खाया भी नहीं है। यहाँ से जूस भी है, लेकिन माशाल्लाह काफ़ी टेस्टी था। काफ़ी टेस्टी था। और कुछ खाने का इरादा भी नहीं है? अभी तक तो नहीं है, भूख लगी तो इंशाल्लाह खाएंगे। अच्छा, वैसे फास्ट फूड या देसी क्या ज़्यादा पसंद है? तकरीबन देसी। देसी वाले बंदे हैं, तो देसी में क्या ज़्यादा पसंद करते हैं? ऑफ कोर्स मटन। मटन का क्या बना हुआ? कढ़ाई बनी हो। अच्छा, वैसे आप खुद भी कुछ बना लेते हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं बनाता। अगर कभी ऐसा हुआ कि अगर कोई ना हुआ और आपको बनाना पड़ गया तो आप क्या करेंगे? वो फिर फास्ट फूड जिंदाबाद। तो फिर फास्ट फूड से गुजारा कर लेंगे, बनाएंगे कुछ नहीं? बनाएंगे कुछ। जबरदस्त। हो कोई ऐसी डिश जो बचपन में अम्मा ने जबरदस्ती खिलाई हो? चूरी, देसी घी की चूरी। बच्चे तंदुरुस्त हो। वो जबरदस्ती खिलाई। और कौन सी ऐसी डिश थी तो आप जबरदस्ती मांग के खाया करते? यही चूरी, बचपन से मुझे शौक था, और रमज़ान में मैं स्पेशल बनवाता था डेली। तो ये आप जबरदस्ती बनवा के खाते? बिल्कुल। और कौन, मैं पूछी थी कौन सी थी डिश जो अम्मा जबरदस्ती खिलाया करती थी, जिसे आप जो आपको पसंद नहीं होती थी लेकिन खानी पड़ती? वो साग। साग जबरदस्ती खिला? साग। अरे वाह, ये तो जबरदस्त हो गया। तो कोई गाना शाना आता है? जी बिल्कुल आता है। अच्छा चले, गाना सुनाए। कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब मैं, आँखों से आँखें मिला के चुरा लूँ तेरे ख्वाब में, मेरे साए है साथ में यारा जिस जगह तुम हो, मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, वजह तुम हो। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा गाया आपने। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। आपका नाम? मेरा नाम जैन। जैन, क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ। अच्छा, स्टडी करते हैं। इधर किसके साथ हैं? इधर कज़न के साथ आया हूँ। तो क्या करने आए हैं? शॉपिंग करने हैं, खाने पीने हैं?
मैं एक शर्ट लेने आया हूँ बस। अच्छा, तो इसको खाया पिया है कुछ? मिंट मार्गरेटा भी है। इसके अलावा कुछ नहीं? फिलहाल फिंगर चिप्स भी खाई है। तो और क्या खाने का इरादा है? और देखते हैं, कुछ समझ में आता तो खाते हैं। अच्छा, वैसे आप हैं किधर से? मैं मानसरा से। मानसेरा। अच्छा, उधर क्यों, कौन सी ऐसी डिश है जो आपको लगता है लाजमी ट्राई करनी चाहिए? फेमस कोई फेमस? फिलहाल तो फेमस कोई नहीं है मेरे लिए। फेमस कोई नहीं? अच्छा, वैसे फास्ट फूड या देसी क्या ज़्यादा पसंद है? देसी। हैं देसी वाले? ऐसा तो सही है। देसी में क्या ज़्यादा पसंद है? देसी में हो जाए, क्या कहते हैं, कोई कढ़ाई वगैरह हो जाए, उसके बाद को पालक वगैरह हो जाए, बस देसी चीज़ें काफ़ी हैं, नाम नहीं ले सकता। अच्छा, तो आप खुद भी कुछ बना लेते हैं? बहुत कुछ। क्या क्या बना लेते हैं? बिरयानी पकाता हूँ, पुलाव पकाता हूँ, उसके बाद कढ़ाई बना लेता हूँ और छोटे मोटे सालन वगैरह बना लिए। यानी सब बना लेते हैं। तो फैमिली में क्या ज़्यादा आपके हाथ का पसंद किया जाता है? चावल। चावल? उसमें क्या ऐसी बात है? उसमें ये है कि मेरे जो पुलाव पकाता हूँ ना, उसमें ज़रा टेस्ट है। उसमें ज़रा टेस्ट है। ज़रा टेस्ट है उसमें, इसीलिए पसंद है सबको। अच्छा, फैमिली में कभी किसी के खाने की झूठी तारीफ की है? किसके खाने की और कब की? ये मैंने कज़न की थी, उसने खाना बनाया था पहली दफ़ा, मैंने उसकी झूठी तारीफ की थी। क्या बनाया था उसने? उसने बनाई थी कढ़ाई पानी वाली। और फिर आपने उसकी झूठी तारीफ की? अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा, उसे पूछा और कैसी बनी? आपने कहा सबसे अलग। सबसे अलग। अच्छा, अगर आपको मुख्तसर वक्त के लिए आप जिन बन सकते हो तो किसको डराने के लिए जाएंगे आप? मैं आप ही को डराने जाएंगे। इसकी वजह? इसकी वजह ये है कि वो डरती है। हाँ, लड़कियां डरती हैं ना, इसीलिए उन्हें डराते हो। अच्छा, ये क्या लॉजिक होती है, जो डरता है उसे डराओ? वो डरेगा ना। अच्छा, जिसे जो डरता है उसे डराने में मजा आता है। मज़ा आता है। मजा आता है। अच्छा, गाना शाना आता है आपको? नहीं, गाना नहीं आता। अच्छा, पोइट्री? पोइट्री भी नहीं आती। पोइट्री भी नहीं आती, गाना भी नहीं आता। वैसे इधर किसके पास आए हैं आप? इधर कज़न के पास आया हूँ। कज़न के पास है। वैसे फ्रेंड्स या फिर फैमिली, किसके साथ घूमना ज़्यादा पसंद है? फ्रेंड्स। फ्रेंड्स के साथ। तो फ्रेंड्स के साथ कोई फ़नी मेमोरेबल स्टोरी जो अभी तक आपके साथ हुई हो तो वो शेयर करें। फ़नी तो काफ़ी हैं, क्या शेयर करूँ आपको? कोई एक काफ़ी है तो कोई एक तो निकल ही आएगी। बस यही है कि उनके साथ निकलता था गलियों में, घरों की बेलें बजा के भागता था। बेल बजा के? ये तो सबका ही काम है, बेल बजा के भागना। पकड़े गए? नहीं, पकड़ा कभी नहीं गया। तो क्या लगता है, अगर पकड़े गए तो क्या जूते शूते पड़ेंगे या बच जाओ? नहीं, जूते शूते तो खैर कोई नहीं मार सकता, वैसे नहीं कह सकते कुछ। वैसे भी कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, कोई मैसेज दे दें? मैसेज यही दूंगा यार, आप मार्केट में आप आ रहे हो तो कुछ खाओ पियो, साथ टेस्ट करो। ये जो लगा के बैठे हुए हैं, इनका भी कोई चीज़ ट्राई करनी चाहिए। ये नहीं कि आप सारे उधर मार्केट फिर रहे हैं, उधर से आप शॉपिंग कर रहे हैं, उधर आप रेस्टोरेंट से खा रहे हैं, इनको भी थोड़ा टाइम दीजिए। सही है। बाय द वे, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं भी ठीक, अलहमदुलिल्लाह। आपका नाम? हमजा। हमजा, क्या करते हैं आप? स्टडी स्टॉल लगाया हुआ है मिंट मार्केट में। कितनी देर हो गई आपको ये काम करते? मुझे 2 साल हो गए। 2 साल हो गए हैं। तो कैसा जा रहा है आपका काम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मिंट मार्केट के अलावा कुछ और भी होगा? लेमन सोडा, दूध सोडा, लेमनेड, मटका सोडा, मिंट, सब कुछ है। फास्ट। तो लोग क्या ज़्यादा पसंद करते हैं? मिंट मार्केट। मिंट मार्केट है, इसलिए मिंट मार्केट का शुरू में। तो आपने स्टार्ट यहीं से किया था? जी। अच्छा, वैसे सही है। तो मार्केट का आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है खाने में? मार्केट का ज़्यादा तो डिफरेंट ही है, सब कुछ अपना अपना टेस्ट है। अपना अपना टेस्ट है, लेकिन आप देसी या फास्ट? फास्ट फूड। अरे वाह, फास्ट फूड वाले हैं। फास्ट फूड में क्या ज़्यादा पसंद करते हैं? फास्ट फूड में जिंगर हो जाए, पिज़्ज़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, फास्ट फूड प्रॉपर ही पसंद। खुद भी कुछ बना लेते हैं इसके अलावा? सब कुछ बना लेता, फास्ट फूड में मुकम्मल है। अरे माशाल्लाह, जो पसंद है वो बना भी लेते हैं। वेले बैठे बना के खा करके फिर ये छोड़ा है, पहले वो किया था। अच्छा, वो शाजी बर्गर। अच्छा, तो फिर वो क्यों छोड़ा? बस वो फास्ट फूड में चीज़ें इतनी महंगी हो गई थी, समझ नहीं आ रही थी। तो ये सही है, ये सही है, ये सही जा रहा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो कितने साल किया था? वो किया था 3 साल। 3 साल। अच्छा, फैमिली में आपके हाथ का क्या बना हुआ ज़्यादा पसंद किया जाता है? फैमिली में जो माँ बनाते हैं। जो माँ? नहीं, मैं आपकी बात कर रही हूँ, आपके हाथ का। शादी कहाँ हुई है, फैमिली कहाँ? नहीं, आपके घर वाले नहीं है क्या, मम्मा पापा वगैरह? तो कुछ नहीं पसंद आपके हाथ का? सब कुछ। तो क्या ज़्यादा पसंद करते हैं? बहुत ज़्यादा शेक। हाँ, शेक पसंद करते हैं। ये तो ज़बरदस्त हो गया। वैसे आपको फ्रेंड्स के साथ या कजन्स के साथ, किसके साथ घूमना पसंद है? मैं फ्रेंड।
फ्रेंड्स के साथ कोई फ़नी मेमोरेबल स्टोरी जो अभी तक याद हो? नहीं तो कुछ भी नहीं है, वैसे ही बस एंजॉय, ओपन माहौल होता है फ्रेंड के साथ। जो फैमिली के साथ बातें नहीं कर सकते वो जो फ्रेंड के साथ कर लेते हैं। ऐसा क्यों लगता है जो फैमिली के साथ नहीं कर सकते वो फ्रेंड्स के साथ? कोई ऐसी बातें होती हैं जिसमें चलो फैमिली के साथ करना भी अच्छा नहीं होता। सही है, सही है, एहतियात कर लेता है फ्रेंड, कोई करते हैं फ्रेंड, कोई सीधे राह पे लगा देता है, कोई जो पुट्ठे राह पे लगा देता है। एहतियात इलाज से बेहतर है, इससे पहले कि भाई इलाज हो एहतियात करो। जी हाँ बिल्कुल ऐसा है। ये तो कोई मैसेज वगैरह या कोई गाना शाना आता है? पोइट्री कुछ भी नहीं आता? बस मुझे जो बनाना आता है, जो मर्जी बनवा लो। तो आप मुझे क्या चेक करवाएंगे? जो मर्जी आप चेक करें, सोडा, मिंट है, लेमनेड है, 2 सोडा, जो कोई। चलिए ठीक है, जो इधर का फेमस है ना, आपने मुझे वो चेक करवा। मार्केटा चेक, मार्केटा। और मैसेज दे के जाएं पहले। मैसेज क्या है, बस मैसेज यही है कि अपना करो अपना खाओ, किसी के पास नहीं। मैंने किया ना किसी के पास, बस उधर कहते हैं तू इधर आ जा, तू इधर आ, तू नहीं सुनी जाती। इधर अब मैंने लगाया ना अपना, छोटा सा लगाया है, लेकिन भाई भाई कह के बुलाते हैं, भाई ये लगा दो, भाई ये लगा दो, वो तू नहीं समझ जाती। तमीज़ हो तो फिर बंदा बना। बाय द वे, थैंक यू सो मच। अगर आप कमाते हैं तो अपनी ज़ात पे अगर खर्च ना करें तो फिर कहाँ किया? इस मामले में मैं अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में बड़ा फजूल खर्च मशहूर हूँ। देखिए 91 में हमने ये मैगजीन स्टार्ट किया था और ये दुनिया का टॉप, पाकिस्तान के टॉप जर्नल्स में था, जो रिसर्च ओरिएंटेड इलस्ट्रेटेड जर्नल था। हम कम से कम अब जो है 77 साल बाद हम एक कौम इकट्ठे हो जाए। हमारे दौर के अंदर 34 अरब डॉलर रेमिटेंस जो था ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे थे। कादिर रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए हैं कि काम का टाइम बढ़ाएं, काम करें। आप यकीन करें कि नॉर्दर्न एरिया के पैकेजेस इतने ज़्यादा है, अभी पाकिस्तानियों ने नॉर्दर्न एरिया को भी नहीं अभी इतना एक्सप्लोर किया। आप लोगों ने पहले भी आवाज़ उठाई इस्लामाबाद में गैर, बिजली के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, तो आप लोगों की आवाज़ सुनी नहीं गई। देखिए, जमात इस्लामी ने महंगाई के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर बिजली के बिलों में होश रुबा इजाफे के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ बुलंद की थी। 300 यूनिट तक का उन्होंने कहा था कि हम सोलर सिस्टम देंगे। हाँ जी। कराची में, सिंध में देना शुरू किया, वहाँ वो हमारी हुकूमत है, पूरे पाकिस्तान में हमारी हुकूमत नहीं है। टैक्स देना हर शख्स की जिम्मेदारी है, हर ताजिर की जिम्मेदारी है। मना तू डोलिया ना कर, जिंद अपनी नू रोलिया ना कर। मन मार के मेहनत कर बस, मन मार के मेहनत कर बस, खाली चोड़ियां आप भरू। बाबा नानक भली करूं, बाबा नानक भली करूं। मना तू डोलिया ना कर, जिंद अपनी नू रोलिया ना कर। मन मार के
मन मार के मेहनत कर बस खाली चोड़ियां आप भरू बाबा नानक भली करू गुरु वाह वाह 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 गुरु गगन में थाल रव चंद दीपक बन तार का मंडल
साला
सचियार मैं डांसाई तू करता सचियार मैं डांसाई साई तू करता सचियार मैं डांसाई तू करता सचियार मैं डांसाई साई तू करता सचियार मैं डांसाई जो तू पावे सोई तीसी
राम कली माला के जानंद गुणकार सतगुरु प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु दा पाया सहज सिद्धि मन वजिया वदाया राग रतन परिवार परिया शब्द गावणिया शब्दों गाओ हरि तेरा मंजनी वसाया काहे नानक ज्ञान दो सतगुरु मैं पाया मन मेरा तू सदा रहो हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार उतारे तेरा काज सब सवारना सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे काहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नहीं करते करता तेरा सब कुछ है जिस दे भी सो पावे सदास बदसाला तेरे नाम मन वसावे नाम जिनके मन बसिया वाची शब्द कनेरे काहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रह सच्चा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भूखा सब गवाया कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब बुझाया सदा कुर्बानी किता गुर बैठो जिस दिया बड़ियाई काहे नानक सुनो संतो शब्द करो प्यारो सच्चा नाम मेरा आधारो वाचे पंच शपथ तितकार सभागे कर सभागे शब्द वाचे कल्ला जित करतारिया पंच दुर्ग बस कीते काल कंटक मां दुर्कारम पाया तू जिनको से नाम हर के लागे काहे नानक देश को आदित करियन अदवाजे अनंद सुनो बड़ पागियो सगल मनोरथ पूरे बार ब्रह्म पारा उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सोनी सच्ची वाणी संत साजन पाए सर से पूरे गुरते जाने सुनते पुनित कहते पवित्र सतगुर रहा पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाचे अनहद तुरे सलो पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महात तेग सिराज ताई दाया केले सगल जगत जंगियाया बुरियाया वाचे धर्मा दूर कर्मी आपो आपणी केने लेके दूर जिन्नी नाम दियाया गैम शक्त गाल नानक ते मकूज है कीती छुट्टी नाल जिन्नी नाम ते आया गैम शक्त गाल नानक ते मकूज है कीती छुट्टी नाल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह ਐਵੇਂ ਮਨਾ ਤੂੰ ਡੋਲਿਆ ਨਾ ਕਰ ਜਿੰਦ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਰੋਲਿਆ ਨਾ ਕਰ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਬਸ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਬਸ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਆਪ ਭਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਭਲੀ ਕਰੂ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਵਾਹ 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 ਐਵੇਂ ਮਨਾ ਤੂੰ ਡੋਲਿਆ ਨਾ ਕਰ ਜਿੰਦ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਰੋਲਿਆ ਨਾ ਕਰ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਬਸ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਬਸ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਆਪ ਭਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਭਲੀ ਕਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਭਲੀ ਕਰੂ ਐਵੇਂ ਮਨਾ ਤੂੰ ਡੋਲਿਆ ਨਾ ਕਰ ਜਿੰਦ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਰੋਲਿਆ ਨਾ ਕਰ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਬਸ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਬਸ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਆਪ ਭਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਭਲੀ ਕਰੂ Hello,
I'm Robin Ashby. I'm a city councillor. I'm an advisor. I have done a lot of things in my life. Mix some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, Trinidadians and Bajans, with some Ethiopians, Chinese, Vietnamese and Sudanese. There were 282,000 people who came here to study. We can absolutely understand that first generation come here and they're in a strange land where they have to learn new customs and it's cold as well. Hello, I'm Alan Curry. I'm bringing you a show badge of honour on my successful life in the police service to the rank of Chief Superintendent. Talking about me, and hopefully I'm saying some nice things about myself. There's a couple of bad ones, I'm sure, as well. And I don't like criminal activity. As opposed to the other way around, when you arrest somebody and have to find the evidence. And the feeling of doing something for somebody else, I don't know how you can get that from anybody else. मई की धूप में जब हर तरफ गर्मी का राज होता है, ऐसे में कुदरत का ये जर्द तोहफा अमलतास न सिर्फ साया फराहम करता है बल्कि माहौल में रंगों की बहार भी ले आता है। अमलतास जिसे सोने की झाड़ी भी कहा जाता है, न सिर्फ एक खूबसूरत दरख्त है बल्कि इसका तिबी इस्तेमाल भी अहमियत रखता है। इसके फल जिसे मुकामी तौर पर सना कहा जाता है, कई यूनानी नुस्खों में बतौर दवा इस्तेमाल होते हैं। शहरियों का बात करते हुए कहना था कि जर्द रंग के फूल बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। हम रोजाना कॉलेज जाते हैं तो इन्हें देखते हैं तो दिल बाग बाग हो जाता है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे दरख्त ज्यादा से ज्यादा लगाए। ये जर्द रंग के फूल बहुत खूबसूरत हैं और सुबह के टाइम जब हम आते हैं तो कॉलेज में बहुत खूबसूरत लगते हैं और दोपहर के टाइम भी छाँव का इंतज़ाम करते हैं हमारे लिए। और मसला ये है कि बहुत कम है तादाद में, हमें चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि इसको और ज़्यादा बढ़ाएं और इनकी तादाद में इजाफा करें और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे पौधे लगाएं। शहरियों का कहना है कि ये दरख्त सिर्फ जीनत नहीं बल्कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का जरिया भी है। ये गर्दो गुबारे को जज़ब करते हैं और ऑक्सीजन फराहम करते हैं और शदीद गर्मी के मौसम में ठंडी छाँव बांटते हैं। जब सूरज तप रहा हो और हवा भी थम जाए, ऐसे में अमलतास के जर्द फूल कसूर वालों के दिलों पर ठंडक का फाहा रखते हैं। ट्रस्ट है लोगों का। मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है? किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफी ज्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आ गए हैं। हाँ, एक टाइम आया था जब काफी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं।
It's me, Jia. This is my street vibes. But I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a Repicharge facial then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London Lash patch test on her. She was absolutely fine with London Lash. So I used the London Lash. Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, "Oh, great idea. Oh, vadya." The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal or where it's contract, take your time. इस वक्त फूलनगर शहर की सब्ज़ मंडी में खड़ा हूँ और इस वक्त गर्मी के फलों में बहुत ज़्यादा फल हैं, लेकिन तरबूज एक ऐसा फल है कि जो अपने जायके और
खुशबूदार और मिठास की वजह से सबसे ज़्यादा मशहूर है। वैसे तो इस वक्त सेब, आड़ू, अमरूद, खुरमानी, लुगाट भी हैं, लेकिन वो महंगे फल हैं जो कि गरीब आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बहुत ज़्यादा हैं। गरीब आवाम उन फलों को नहीं ख़रीद सकी, लेकिन तरबूज एक ऐसा फल है कि जो कम कीमत में 40 रुपये किलो के हिसाब से आवाम इसे ख़रीद रहे हैं और बड़े ज़ौक़ व शौक़ से इसे खाते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तरबूज फल बहुत अच्छा है, मौसम के लिहाज से जायका भी अच्छा होता है, मीठा भी अच्छा है और ये बाकी फलों की निस्बत जायके में अच्छा है और ये हमेशा जो है ना मौसम के लिहाज से इसको खाना चाहिए, बेहतरीन फल है। और हम ये गाड़ियों के हिसाब से आते हैं, हर रोज़ 1 गाड़ी 2 गाड़ी सेल करते हैं जिसमें 80 मन 50 मन ऐसे वज़न होता है। तो ये तरबूज आपसे लोग शौक़ से ख़रीदते हैं? माशाल्लाह शौक़ से ख़रीदते हैं। ये देखिए आपने कि इस गर्मी के मौसम में लोग सेहत अफ़ज़ा और खुश जायका तरबूज बड़े शौक़ से ख़रीद रहे हैं और खा रहे हैं। मेरा भी आवाम को ये मशवरा है कि इस गर्मी के मौसम में सबसे सस्ता फल तरबूज है, ये इस्तेमाल करें और सेहतमंद रखें। कैमरा टीम गफ़ार अहमद के हमरा डॉक्टर लियाकत अली, साउथ एशिया ग्लोबल न्यूज़, फूलनगर। My name is Terence South. I formerly served in the British Army. We had to go down as the muscle squad and go on, you come with us. She said, no, let us go, we're fighting. No. I could communicate, I had all the skills for the wirelesses, the radios. I could do that, that was no problem. I could do that blindfolded. Second World War, understood where you were and what you were doing, where your head was. Rescue 112 to Lahore. इंसान चांद पर पहुंच चुका, बहुत सी चीज़ें बना चुका है, लेकिन कुदरती आफात के आगे आज भी बेबस है। ज़लज़ला एक ऐसी ही खौफनाक आफत है जिसके आफ्टर शॉक्स हादसे से ज़्यादा संगीन होते हैं। 7 फरवरी 2023 को तुर्किया को एक ऐसे ही स्याह दिन का सामना करना पड़ा जिस दिन तुर्किया में हर तरफ तबाही ही तबाही थी। बेशुमार लोगों को अपनी जानों से हाथ धोना पड़ा। अमारात महज मलबा का ढेर बनकर रह गई। इस गम व अलम के लम्हे में पाकिस्तान रेस्क्यू 1122 ने अपने ब्रादर इस्लामी मुल्क के साथ खड़ा होने की ना सिर्फ हामी भरी बल्कि 51 अरकान पर मुश्तमल इमदादी दस्ते को अक़वाम मुत्तहिदा की INSRG रेस्क्यू यूनिट का हिस्सा बनाया। ये वाकई एक अलमनाक वाक़या था जो 6 फरवरी को हुआ और साल होने को है अभी। और हमें कॉल आई और हमें फ़ौरन हमारी टीम जो यूनाइटेड नेशंस का ज़ेली इदारा है इंसराग जो कि सर्टिफाई करता है सर्च एंड रेस्क्यू की टीमों को, वो सर्टिफाइड टीम थी जिसकी वजह से हमें मिशन करने का, जाने का, वहाँ पे रेस्क्यू करने का मौका मिला। हुकूमत ने बर वक्त डिसीजन लिया और वेरी नेक्स्ट डे वी वर देयर। वहाँ रिहाइश की मुश्किल थी क्योंकि पूरा तुर्की जहाँ पे हम डिप्लॉय हुए थे तो वहाँ हालात बहुत ख़राब थे।
रिहाइश की कोई जगह नहीं थी, खाने पीने के हालात बहुत बुरे थे, इवन कि यहाँ तक कि पानी भी अवेलेबल नहीं था। तो सबसे बड़ी मुश्किलात तो ये थी। दूसरा मुश्किलात वहाँ पे थी कि लोगों को जितनी बिल्डिंग कोलैप्स हुई पड़ी थी, जितनी बिल्डिंग गिरी हुई थी, उससे लोगों को निकालना कैसे, तो ये बहुत बड़ी मुश्किलात थी वहाँ के लिए। और साथ ही साथ मौसम की शिद्दत भी थी, बेसरोसमानी थी वहाँ लोगों की भी। तो हम जब हमारी टीम वहाँ पे पहुँची है तो ये सारे बुरे हालात में वहाँ पे हम पहुँचे हुए थे। हम बेस ऑफ ऑपरेशन पे बैठे हुए थे तो 3 लोग आए कि इसी जहाँ पे हमारा बेस कैंप था वहीं पे एक कॉर्नर पे एक बिल्डिंग थी जिसमें कोई फ़ीमेल की आवाज़ें आ रही हैं। तो उस वक़्त हमें फिर अपनी टीम को थोड़ा श्रिंक करना पड़ा बेस ऑफ ऑपरेशन पे, और उस टीम को मैंने उस ऑपरेशन को लीड किया था। वो 5 स्टोरी बिल्डिंग थी जहाँ पे खातून फंसी हुई थी अंदर, और ये ज़लज़ले का कोई 57 घंटे के बाद एक रिग्रेस ऑपरेशन था। अंदर चूँकि बड़ा मुश्किल था, वहाँ पे क्रॉल करके अंदर जाना था। हारून ने और लाशारी ने दोनों ने और उसके साथ हमारे सीनियर्स हमारी बैक पे मौजूद थे, हमें प्रोफेशनली गाइड भी कर रहे थे। हमारी ट्रेनिंग इस चीज़ पे हुई हुई थी, लेकिन जो अंदर जाके ऑपरेशन कंडक्ट करने का एक रियल सिचुएशन में एक फ़ील थी वो ये थी कि पाकिस्तान में भी ज़लज़ला आया था। मैंने उस वक्त भी एज़ वॉलंटियर काम किया था। मैंने बहुत से लोगों को बिछड़ के मिलते हुए ज़रूर देखा है, लेकिन मैंने लोगों को देखा हुआ है कि लोग किस तरह से सारी उम्र के लिए मफलूज रहते हैं। वो जो लोग ऐसे बड़े सानहात में बच जाते हैं, अगर वो मफलूज होते हैं तो कैसे अपने घर वालों के लिए एक मैं क्या कहती हूँ, वो अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तहान होता है। तो जिस वक्त उस खातून को हम रेस्क्यू कर रहे थे तो यही सोच आ रही थी कि अल्लाह ताला इससे खैर आफियत से हमारे हाथों से अगर ये रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है तो ये ज़िंदा बच रही हैं, तो ये ऐसी किसी सिचुएशन में ना हो कि इनका कोई टांग काटनी पड़े। और ऐसा वक्त आया कि हमें डिसाइड करना था कि एक टांग को तो हमने रिलीव कराया, लेकिन मलबे से दूसरी टांग रिलीव नहीं हो रही थी। तो हमें ये था कि अरेंजमेंट्स भी करवा लिए थे कि शायद ये टांग काट के निकालनी पड़े। टांगें दोनों ट्रैप हुई हुई थी तो वो निकल नहीं पा रही थी। वहाँ कटर चलाना मुश्किल हो रहा था हमसे, तो बाहर से हेल्प ली अपने इंसिडेंट कमांडर से, मैंने और उन साहब ने कि हमें फलां इक्विपमेंट चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने जो सोर्स थे हमें अंदर पहुँच रहे थे। जब अंदर वो सारे सोर्स मिल गए तब हमें डर था। नीचे स्लैब थी उसकी टांगों के ऊपर, नीचे हमारा हाथ या कुछ चीज़ें नहीं मिल रही थी कि उसको कैसे चेक किया जाए। तो वो बड़ी अजीब सी मूवमेंट थी कि अगर हम कटर चलाते हैं तो उसकी टांग काट जाएगी या इसका कोई उज़ा काट ना जाए, नीचे कौन सी टांग है। तो वो बड़ा क्रिटिकल फेज़ में थे उस वक्त। बड़ी देर कोशिश करने के बाद एक और जगह से एक रास्ता बनाया, एक और जगह से चीज़ें हटाई, काफ़ी टाइम लगा। वहाँ से मेरा सिर्फ एक हाथ टच हो सका उनको, और मैंने फील किया कि अगर यहाँ कटर चलेगा तो इसको नुकसान है। तो फिर एक आइडेंटिफाई किया एरिया, वहाँ से कटिंग शुरू की, उसको बचाया, फिर एक रो बार मंगवाई, उसको फिर खींचा, उसके हाथ लगाया और बड़े आराम से उस जो तो लाइव विक्टिम था उसको निकाला, एवैक्यूएट किया। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन इट। और जब उसको निकाल के उस पे रख के बाहर हमने पहुंचाया, और उसकी खातून की कोई रिश्तेदार यंग बच्ची थी, जैसे वो उसको चूम रही थी, और एक अनसर्टिनिटी होती है ना कि 57 आवर्स ऑफ द अर्थक्वेक, 57 घंटे के बाद आपका कोई ज़िंदा निकल आए और वो मतलब ज़िंदा हो। तो ये फीलिंग्स जो होती है ना, मैं आपको जैसे मर्ज़ी बता दूँ, जो उस टाइम पे आप बंदा फील करता है ना, वो आप दोबारा रिक्रिएट नहीं कर सकते, उसको आप नहीं ला सकते उन चीज़ों के अंदर। और जो उस फैमिली की फीलिंग्स होंगी, देखें जहाँ पे कई लोगों की डेथ्स हुई हैं, कई लोगों के घर ख़त्म हो गए,
उनके लिए तो ये मौजज़ा होता है कि कोई बच जाए, बट वी आर हैप्पी एंड वी आर थैंकफुल कि जो हमने रेस्क्यू ऑपरेशन मैक्सिमम किए हैं, सेकेंड डे हम शाम पहुंचे और हमने स्टार्ट किए। हमारे एक नहीं यक्के बाद दीगरे जो ऑपरेशंस हो रहे थे और हमें वायरलेस पे अपने बेस ऑफ ऑपरेशन पे ख़बर मिल रही थी, वो था कि इसको इतने घंटों बाद ज़िंदा निकाल लिया है, इसके पास पहुंच रहे हैं, और इस तरह करते करते जो हमने 15 लोग निकाले, हमारी पूरी टीम ने एज अ होल जिस तरह काम किया, आई थिंक ये अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग थी। और हमें पहली दफ़ा मिशन करने का, ये इंटरनेशनल मिशन का मौका मिला और आई एम रियली ग्रेटफुल, अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ। और अपनी टीम के ऊपर मुझे हमेशा फ़ख्र है कि वो कैसे भी हालात हों, वो अपनी परवाह उस तरह से मैक्सिमम रिस्क जो ले रही थी वो पाकिस्तान की टीम ले रही थी, और पाकिस्तान रेस्क्यू टीम ने अपना बेस्ट वहाँ पर परफॉर्म किया। अगर आप कमाते हैं तो अपनी ज़ात पे अगर खर्च ना करें तो फिर कहाँ किया? इस मामले में मैं अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में बड़ा फजूल खर्च मशहूर हूँ। देखिए 91 में हमने ये मैगजीन स्टार्ट किया था और ये दुनिया का टॉप, पाकिस्तान के टॉप जर्नल्स में था, जो रिसर्च ओरिएंटेड इलस्ट्रेटेड जर्नल था। हम कम से कम अब जो है 77 साल बाद हम एक कौम इकट्ठे हो जाए। हमारे दौर के अंदर 34 अरब डॉलर रेमिटेंस जो था ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे थे। कादिर रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए हैं कि काम का टाइम बढ़ाएं, काम करें। आप यकीन करें कि नॉर्दर्न एरिया के पैकेजेस इतने ज़्यादा है, अभी पाकिस्तानियों ने नॉर्दर्न एरिया को भी नहीं अभी इतना एक्सप्लोर किया। आप लोगों ने पहले भी आवाज़ उठाई, इस्लामाबाद में गए बिजली के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, तो आप लोगों की आवाज़ सुनी नहीं गई। देखिए, जमात इस्लामी ने महंगाई के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर बिजली के बिलों में होश रुबा इजाफे के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ बुलंद की थी। 300 यूनिट तक का उन्होंने कहा था कि हम सोलर सिस्टम देंगे। हाँ जी। कराची में, सिंध में देना शुरू किया, वहाँ वो हमारी हुकूमत है, पूरे पाकिस्तान में हमारी हुकूमत नहीं है। टैक्स देना हर शख्स की जिम्मेदारी है, हर ताजिर की जिम्मेदारी है। ट्रस्ट है लोगों का। मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है?
किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफी ज्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आ गए हैं। हाँ, एक टाइम आया था जब काफी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं। Hello, I'm Alan Curry. I'm bringing you a show badge of honour on my successful life in the police service to the rank of Chief Superintendent. Talking about me, and hopefully I'm saying some nice things about myself. There's a couple of bad ones, I'm sure, as well. And I don't like criminal activity. As opposed to the other way around, when you arrest somebody and have to find the evidence. And the feeling of doing something for somebody else, I don't know how you can get that from anybody else. तुर्की के एडियामिन में पाकिस्तान रेस्क्यू टीम के स्क्वाड्स ने खसूसी सर्च आलात के ज़रिए जिंदा फंसे हुए मुतासरीन की शनाख्त की और कई कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशंस किए। एडियामिन में हफ्ता भर रिसर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के बाद रेस्क्यू स्क्वाड को हताए में तैनात किया गया। हम जब गए थे तो अधियमन गए थे, सेकंड डे ही हमने वहाँ जाके लैंड किया था और वहाँ पे इंटरनेशनल टीम के तौर पे वी वर द फर्स्ट। जब आप वहाँ पहुँचते हैं और आपको जाते ही काम स्टार्ट हो जाता है तो नाइट के टाइम पे एक्सट्रीम वेदर था, एक्सट्रीम वेदर, और पाकिस्तान के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी जैसे नॉर्दर्न एरियाज़ में होती है, और हमने बहुत कुछ पहना हुआ था और उस बहुत कुछ पहने हुए के साथ आपको काम करना बड़ा ही मुश्किल होता है। आपने मनूवरिंग करनी है ना, बहुत ज़्यादा रबल है, डेब्रीज हैं, बिल्डिंग गिरी हुई उनके अंदर जाना है, क्रॉल करना है, तो आपको बहुत मुश्किल पेश आती है। इतने ज़्यादा ऊपर आप गर्म कपड़े, जैकेट्स और चीज़ें पहन के जाएँ, लेकिन उसके बगैर चारा नहीं था। जो जिस्म का हिस्सा बाहर होता ठंडी हवा के वैसे यख हो जाता था। हम एक बिल्डिंग की सर्च कर रहे थे
क्योंकि काफ़ी काम हो चुका था तो लोग सर्च के लिए भी लेके आते, तो हम बिल्डिंग जो है उनकी सर्च करते थे। अगर कहीं कोई सस्पेक्टेड है विक्टिम, कहीं से कोई एविडेंस मिले हैं कि कॉल आई है, आवाज़ आई है, मोबाइल पे मैसेज आया है, बंदा अंदर है। वो बिल्कुल कोई मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स थे और सारे के सारा कोलैप्स हो गया था। अब जो उसका ग्राउंड फ्लोर था वो ज़मीन से कोई हार्डली 1 फुट 1.5 फुट ऊंचा होगा, और वहाँ पहले से अंदर ना टीम काम कर रही थी, लोकल सी टीम, लेकिन उनकी लिमिटेशन थी, वो जो छोटा मोटा इक्विपमेंट था उसकी वजह से काम कर रहे थे। जब हम वहाँ पहुँचे उन्होंने कहा जी हम वहाँ तक पहुँच गए हैं, टनल में बंदा एक ही अंदर एक वक्त में जा सकता है और मैक्सिमम 2 जाएंगे, तो आप अगर ये अपना इक्विपमेंट अंदर लेके चले जाएं और हमें फाइनल कर दें कि जहां हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इस दीवार के या बीम के दूसरी तरफ विक्टिम है, अगर कंफर्म हो जाए तो हम आगे काम जारी रखें। क्योंकि हमें मैसेज और मोबाइल पे आया, लोकेशन आई थी, लेकिन उसके बाद वो खामोश हो गया, नहीं पता चल रहा। तो बीम के नीचे से बिल्कुल क्रॉल करते हुए घिसट के अंदर गए। अब अंदर जा रहे हैं और आप उठ भी नहीं सकते, नीलिंग पोजीशन में भी आप नहीं चल सकते, इतना उसमें गैप था टनल में। ऐसे घूमते हुए जो कुदरती बनी हुई है, मलबे के दौरान में जहाँ जहाँ से आपने मलबा हटाया, ऊपर कोई बीम है, कोई सरिया है, तो एक सरिये से अंदर एंटर हुए, वहाँ सामने उस तक पहुँच गए हम। अब उसके परली तरफ वो बिल्डिंग थी, उस पर हमें कोई तकरीबन कितना टाइम लगा था, हमने एक दिन पहले ऑपरेशन शुरू किया था, हार्डली कोई सुबह 10 बजे, पूरी रात भी वहाँ ऑपरेशन करते रहे। अगले दिन जाके कोई 2 बजे हमने 3 लाइव निकाले थे, वो एक ही जगह से, तीनों बच्चे जिनकी मदर की अंदर ही डेथ हो चुकी थी। और वो साथ पड़ी थी, पिछले 24 घंटे से या 48 घंटे हो चुके थे, उससे ज़्यादा बल्कि टाइम गुजर चुका था, और माँ की डेथ हो गई हुई थी। और किस तरह वो इतनी सी जगह में फंसे हुए थे, जब हमने उनको वहाँ से ज़िंदा निकाला तो जो उनके जज्बात थे, एहसासात थे, जब हमने उनको निकाला, जो हमारे सो ये चीज़ें ऑब्वियसली एक्सप्लेन करना जो है वो मुश्किल है। कैसा होगा अगर ये मंजर हो जाए, मेरे लिए अपने लिए आ गया कि अगर ऐसा हो और मैं हूँ, मेरे बच्चे हूँ, हम सारे इस मलबे के नीचे दबे हुए हैं और बाहर से कोई आवाज़ भी ना आए, या ऐसा हो कि बाहर से लोग गुजरते हुए जा रहे हैं और हम उन्हें पुकार रहे हैं, वो सुन नहीं रहे, तो कैसा होगा। मौत का उस वक़्त क्या खौफनाक होगा अंदाज़ा। और वो बच्चे जब बाहर आए तो उनकी हालत देखने वाली थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी कि हम इस पर खुश हों, हम तशक्कुर करें, या हम उस पर अफसोस करें कि हमारी वालदा अंदर है, डेड बॉडी है। तो बस यही है कि हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की, हमारा रेस्क्यू का तो ये है ना कि जिसने एक जान बचाई उसने गोया सारी इंसानियत की जान बचाई। इस पर्पज़ से काम करते हैं कि अपनी जान की परवाह उस वक्त नहीं होती। मैं सोचता हूँ कि जब हम काम कर रहे होते हैं, काम करने के बाद जब हम उस एरिए से बाहर निकलते हैं, उस सारे चीज़ों को रिव्यू करते हैं आपस में, तो सोचते हैं कि कितने ख़तरे से हम इसको लेके निकले थे, उस वक्त नहीं लग रहा होता। लेकिन जब उसको दोबारा से पूरा स्टडी करते हैं उस केस को या उसको देखते हैं, तो पता चलता है कि बड़े क्रिटिकल फेज से, बड़े मुश्किल वक्त से निकल के आए और इसकी जान बचाई। एक तरह से खुशी भी होती है और एक तरह से तसल्ली भी होती है कि जो हमारी ड्यूटी, असाइन ड्यूटी थी, जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमें चुना है, जिसके लिए हमें चुना गया है, उस पर पूरे उतरे हैं। यह हमारी आप सुरखरू है। आज हमारी कैपेसिटी है कि हम बाहर की जाके लोगों को मदद कर रहे हैं। सो पाकिस्तान के पास ये सारे वसाइल हैं। पाकिस्तान इज़ द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड नाउ। सो हमारे पास अल्लाह का शुक्र है कि आज ये कैपेसिटी है कि हम दूसरे ममालिक की भी अब मदद कर सकते हैं। It's me, Jia. This is my street vibes. But I got you, baby.
मुल्क के दूसरे शहरों की तरह ननकाना साहब में भी जो गर्मी का ज़ोर जारी है, पारा जो है 40 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है और महकमा मौसमियात की जानब से आइंदा जो चंद रोज़ है उसमें भी गर्मी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान है। गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ साथ जो हीट वेव है इसमें भी काफ़ी इजाफा हो गया है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इस गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए लोग घरों से कम निकलें, अगर निकलना मजबूरी हो तो सर ढाँप कर निकलें। 12 बजे से लेकर 4 बजे के दरमियान बच्चे और बुजुर्ग भी घरों से कम निकलें। दूसरी जानब महकमा तलीम की जानब से 28 मई से सरकारी स्कूलों में तातीलात का ऐलान भी कर दिया गया है, जबकि रेस्क्यू 11, 22 और महकमा सेहत के अमले को भी हाई अलर्ट रहने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. When you talk on Facebook with someone with your family far away, genuine communication takes place. Just look after yourself and grow in power and grow in finance and grow in status. If you stay in your comfort zone, you'll never find out who you are. Hello, I'm Robin Ashby. I'm a city councillor, I'm an advisor. I have done a lot of things in my life. Mix some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, Trinidadians and Bajans with some Ethiopians, Chinese, Vietnamese and Sudanese. There were 282,000 people who came here to study. We can absolutely understand that first generation come here and they're in a strange land where they have to learn new customs and it's cold as well. हम यहाँ उसका इमेजिन नहीं कर सकते जितनी बड़ी तबाही थी। ये इस